Experts are online with us. Sharad Kohli, who's an expert on tax and market, will answer your questions, and we'll have other experts as we go forward. So you can WhatsApp your queries, and we'll take them online live with us. इनफैक्ट शरद कोहली जी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं रवि, जैसा आपने बताया टैक्स और मार्केट एक्सपर्ट हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल बजट कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू, धन्यवाद रवि और सभी श्रोताओं को आज बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शरद जी, और जो पहला हमारा प्रश्न होता है जब बजट आता है, एक स्टैंडर्ड प्रश्न, कैसे देखते हैं आप इस बजट को, और इसका आपको मेन थ्रस्ट क्या लगता है, और इसको आप कैसे आंकेंगे, कितने एक्सपेक्टेशन पर कितना खरा उतरा है? देखिए, कभी भी कोई भी बजट सबको, सारे सेक्टर्स को प्रसन्न तो नहीं कर सकता। पहले हमको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप कहें कि एक बजट अक्रॉस द बोर्ड सारे ही जनता को, हर सेक्टर को, हर तबके को प्रसन्न करे, ये तो नहीं हो सकता। पर बजट लॉन्ग टर्म है, बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। आजकल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अब कुछ हिट्स एंड मिसेस होते हैं। बजट आप देखिए, सबसे बड़ा जो टेक अवे है और जो मुझे लग रहा है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, वो खरी उतरी उम्मीद पे कि 7.5 लाख करोड़ का जो केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि पिछले साल से 35% ज्यादा है। और आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे हम कई दफे एफएम गोल्ड पे बात करते हैं कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। 1 रुपया अगर आप सड़क पे खर्च करते हैं, उसका 8 गुना आपको फायदा होता है। तो वो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा टेक अवे 7.5 लाख करोड़ का जो स्पेंड है वो है। और ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार के पास एल्बो रूम नहीं था, फिस्कल डेफिसिट को भी मेंटेन करना था टारगेट को, और आपको इस पैंडेमिक की कठिन परिस्थितियों में ग्रोथ के ट्रैक पे भी रखना था, और इस कठिन परिस्थितियों में आपको किसानों का भी ध्यान रखना था, आपको इस कठिन परिस्थितियों में गरीबों का भी ध्यान रखना था। तो मुझे लग रहा है उसको देखते हुए सबसे बड़ा टेक अवे तो मेरा ये रहेगा। तो कुल मिला के बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म विजन है। हाँ, कुछ मिडिल क्लास के लोग होंगे जो लोग जैसे टैक्स की उम्मीद कर रहे थे कि उनको टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, स्लैब बढ़ाया जाएगा या कुछ एटीसी में या हाउसिंग लोन से संबंधित, उनको मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत निराशा हुई होगी। पर मुझे लग रहा है वहां पर जो वित्त मंत्रालय का स्टैंड है कि टैक्स के भी जो लॉज है उनको थोड़ा स्टेबल रखा जाए, उनको एक लॉन्ग टर्म बार बार उनमें छेड़ाखानी ना की जाए, क्योंकि इन्वेस्टर को भी मैसेज अच्छा जाता है और लोगों को भी एक दिमाग में आपके प्रोविजन याद हो जाते हैं, आपको क्या करना है, आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। अगर बार बार वो बदले जाते हैं तो मुझे लग रहा है उससे लोग अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर जाते। कुल मिला के मैं बजट को लॉन्ग टर्म बोलूंगा, कुल मिला के बजट को मैं ग्रोथ ओरिएंटेड बोलूंगा, और कुल मिला के बजट को मैं ये भी बोलूंगा कि लोग इसको एक लंबे नजरिए से देखें। जैसे पहले कहा जा रहा था कि बजट शायद इलेक्शन को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, तो मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि हम दोनों चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। डेवलपमेंट अपनी जगह है, खाली हम वोट लेने के लिए हम बजट बनाएं, ऐसा हम नहीं करेंगे। और हम जो भी वोटर है वो बहुत मैच्योर है, वो लॉन्ग टर्म विजन लेके देखें। तो कुल मिला के मेरा आकलन ये है। Sharad, you mentioned that stability in tax regime is very important, especially for foreign investors. One big change that we noticed, however, was on virtual assets. That's a new category that's been talked about. And there is a 30% tax that is being proposed on virtual assets, which includes anything which includes cryptography on info or code or token. So that also includes what is known as NFT. So would you like to talk to us about this, and also the fact that although this new category of assets seems to have been created, but any deductions out of losses arising is not deductible as per the proposed budget? Yes, because you know the regulation with regard to crypto assets and virtual assets was being expected, which is seemingly delayed because there are some deliberations and thought process going on in bringing regulation to the crypto world or virtual currency world. But I think I'm glad that a clarity has come with regard to taxability, because what was happening so far that people who were making money or who had made profits out of crypto, they were either not declaring or they were declaring at will. Some were treating it as capital gain, some were treating it as business income, some were treating it as income from other sources. So there was no clarity on how this is to be taxed, whether this is a capital asset or whether this is a currency. So I think this today's budget has cleared that cloud, I would say, where now on any profits made, you will have to pay 30% tax. There will be a TDS, in fact, of 1% for the person making the payment. He will have to pay 1% TDS. And also, as you said, you cannot offset this loss, because a lot of people had suffered this loss. You cannot offset this loss against any other profit. So I think an altogether different category has been created in the income tax, where these virtual assets will be taxed. And a case in point here, which I would like to highlight, which is another takeaway as far as I am concerned from this budget,
is CBDC, where the finance minister has announced that we will be launching in the financial year 23, which is 22-23, which starts from 1st April, the central bank digital currency. I think this will be a landmark, a watershed in terms of how we do our money transactions, because you will see a digital currency, digital money, digital rupee, which will be launched, and you will probably carrying your money on your, instead of your wallet, the notes and coins, you might see digital rupee being carried. And mind you, people are trying to mix up CBDC with cryptocurrency. They are not the same at all. Cryptocurrency is something else. CBDC will be also based on blockchain technology, and I think it will bring in a lot of good to the country. A lot of countries around the world are experimenting with it. And this shows that RBI's experiment with CBDC has been successful, which is why this announcement has been made today that it will be launched in the financial year 23. Sharad, just one clarification on the virtual assets. I believe it will start from any financial year. इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे लें, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं बजट पर, अपना उनका संबोधन लाइव सुनते हैं। अनेक नए अवसर बनाएगा ये बजट। मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है, और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है,
उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। अभी जो संबोधन दिया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट है। जॉब्स पर बहुत जोर दिया गया है, ग्रीन जॉब्स पर, खासकर यूथ के फ्यूचर पर। कैसे देखते हैं आप स्टार्टअप्स के लिए जो प्रावधान आए हैं, सर्कुलर इकोनॉमी पर जो जोर दिया गया है? इनफैक्ट बहुत ही कई ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जो शायद जो ओल्ड वर्ल्ड के लोग हैं उनके लिए समझनी भी थोड़ी सी उनको समय लगेगा। गेमिंग पर, एनिमेशन पर, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई गई है। किसान ड्रोन्स की बात की गई। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? फ्यूचरिस्टिक कितना है? बहुत ही बैलेंस है सोनू। जहाँ एक तरफ बिल्कुल गांव के अंदर जाके गांव के क्षेत्र में विकास की बात की गई है, वहीं दूसरी तरफ आपको टेक्नोलॉजी के भी हाईएस्ट लेवल की बात की गई है, जहां पर आपने ठीक कहा, ग्राफिक्स की, ऑनलाइन गेमिंग की, और ये सब बातें। तो मुझे लग रहा है यही समय की मांग है कि आप जितने ज्यादा सेक्टर्स को एड्रेस कर सके। पर जैसा मैंने शुरू में कहा, देखिए फिर भी कितना भी करे, भारत जैसे विस्तृत देश में 137 करोड़ की आबादी में कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र रह जाता है अब एक बजट में। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि बजट का जब स्पीच पढ़ी जाती है तो स्पीच 1.5 घंटे की है। मेरे ख्याल पिछले 4 साल में सोनू सबसे छोटी स्पीच थी जहां तक मुझे याद है। आज तो आप 1.5 घंटे की स्पीच में आप ये संभव नहीं कि जितनी भी अनाउंसमेंट सरकार करना चाहती है वो कर दे। कुछ ना कुछ तो आपको फाइन प्रिंट में भी ढूंढना पड़ता है। तो हम जैसे जैसे फाइन प्रिंट को खंगाल रहे हैं उसमें नई नई चीजें निकल के आ रही है। पर ये सच है कि बजट में जहां गांव का ध्यान रखा गया और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखें कितनी बात की गई है। गांव को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात करी गई है, कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात करी गई है। कोर बैंकिंग, हम पोस्ट ऑफिस को आप देखिए, पोस्ट ऑफिस जो आज तक होता था कि आप एक पोस्ट ऑफिस जाए, दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट है, आप बैंकिंग की तरह नहीं देखा जाता था, बहुत पिछड़ी हुई बैंकिंग देखी जाती थी। तो 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग से लिंक कर देना, मैं समझता हूं पोस्ट ऑफिस को एकदम अलग स्ट्रैटा में ले जाएगा।
अलग स्फेयर में बिल्कुल बैंकिंग के साथ कंधे से कंधा मिला के पोस्ट ऑफिस चल पाएंगे। और डिजिटल पेमेंट्स की हम बात करें, जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेट करने की बात करेगी 75 डिस्ट्रिक्ट में, मुझे लग रहा है सरकार का डिजिटल पेमेंट्स पर, सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली पर जितना जोर है, आपको आने वाले 3-4 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आता दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है जो मैंने सीबीडीसी की बात करी थी अभी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से पहले जो बात करी थी, वो सीबीडीसी और ये डिजिटल बैंकिंग मिलके एक अलग बिल्कुल स्फेयर में भारत की पूरी फाइनेंशियल सेक्टर को ले जाएंगे, जहां पर आपको रुपया कोई निकालता हुआ, जेब से कॉइन निकालता हुआ अब चंद सालों में कोई भी नहीं दिखाई देगा। सब कुछ एक अदृश्य माध्यम से, डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। Sharat, for the purpose of simplicity, many of our listeners are used to the concept of a digital wallet and probably have been using it for almost a decade now. How does this CBDC, this digital currency, differ from a digital wallet? If you can clarify on that. That's a very pertinent question, Ravi, because what is CBDC? CBDC is central bank digital currency, which means the coins and notes, currency notes that we carry in our wallet. What if they are replaced by digital money, digital rupee, which lies in your mobile phone or in your laptop or in your tablet or in your whatever digital device you are carrying? It gets stored. Suppose I've got 2,000 rupees in my pocket. What is either I carry it in my payment, but payment wallets, Ravi, to answer your question very specifically, payment wallets are dependent on a payment platform. Take for name any wallet, they are dependent on them for routing the payment through them. But digital money would be directly having money which is in your pocket, in your mobile. It is neither in a bank account, nor it is in a payment wallet, nor it is on any other platform. Straight away there is money lying. So two people want to transact without bank, without payment wallet. I can pay 100 rupees to you from my phone to your phone. No bank involved, no payment wallet involved, no UPI involved. So I think it will take altogether the payment system to the next stratosphere. And having said that, we must clarify to our listeners here that a lot of people can come back and question that what will happen to the people who do not have a mobile phone, who do not have a laptop, who do not have a tablet. Well, the currency notes, till such time there is 100% penetration, the currency notes will continue. This will be an alternate. Suppose you have to carry 1 lakh rupees from one city to the other. How unsafe do you feel? I mean, your pocket can be picked. You can probably drop the money somewhere. Here is a system where you can, with a free mind, carry, and this will be based on blockchain technology. Now, this is very important. Ravi, I give you an example. I give you a 2,000 rupee note. You give it to somebody else. That somebody else gives it to somebody else. That somebody else gives it to somebody else. Now, 4 transactions have happened. Will that 2,000 rupee note speak that how many hands have I changed? The answer is no. The money that you are carrying in your pocket, take out the note and tell me, can you tell me how many hands it had changed before it came to you? The answer is no. Whereas CBDC, the central bank digital currency, will leave a trail because it is based on blockchain technology, which we call it as open ledger. You will know that how many places or how many people, how many hands has this currency note changed. I mean, I can literally track it down right from the beginning to the end. So transparency बढ़ेगी paradigm. जी. ट्रांसपेरेंसी से और ज्यादा आएगी, मनी लॉन्ड्रिंग चेक होगा, ब्लैक मनी जनरेशन चेक होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग पेडलिंग, जिस भी चीज के लिए, जिस भी समाज की बुराई के लिए कैश का प्रयोग किया जाता है, मुझे लग रहा है उस बुराई को रोकने में ये सीबीडीसी मदद करेगी। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एसपी शर्मा, जो है चीफ इकोनॉमिस्ट पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, बहुप्रतीक्षित बजट, दूसरा बजट कोविड काल का, आज उसकी टेबलिंग हुई, उसका पूरी जो ब्यौरा है माननीय वित्त मंत्री ने दिया संसद में। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं इस बजट को बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड प्रैग्मेटिक देखता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, दिशा निर्देश है कि आने वाले टाइम में हम कैसे अपनी जो ग्रोथ है उसको आगे स्ट्रेंथन कर पाएंगे और कैसे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनका कैसे बिहेवियर रहेगा। ये बहुत ही सरल बजट लगा मेरे को। जो सरकार ने खैर हर एक साल बहुत अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन इस साल का बजट मेरे को सबसे ज्यादा सरल लगा, जिसमें बहुत चीजों को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है। हर एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को टच किया गया है और हर एक जो सेगमेंट है उसके बारे में सरकार ने कुछ ना कुछ बोला है। और मेरे को जो ज्यादा प्रभावित, जिनमें से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, खासकर जो पीएलआई स्कीम के बारे में सरकार ने बात की है कि 25 साल जो
नेक्स्ट 25 साल में जो 6 मिलियन न्यू जॉब्स जो है उनके लिए PLI एक बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो ये एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है सरकार का। और जो सरकार ने ECLG स्कीम को आगे एनहेंस कर दिया है और 50,000 करोड़ का और इजाफा किया है स्कीम में और 1 साल के लिए और एनहेंस कर दी है, तो एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे लोगों का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छे से एड्रेस हुआ है। जो पैंडेमिक पीरियड में वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हुई थी, इन्वेंट्रीज पाइल्ड अप थी और लोगों के पास खासकर जो बिजनेसेस हैं, जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की बहुत प्रॉब्लम थी। तो इस स्कीम से उनको काफी लाभ हुआ। तो अब सरकार ने उसी के मद्देनजर उसका कंसिडरेशन देखते हुए कि लोगों को इससे अच्छा फायदा हो रहा है, बिजनेसेस को बहुत फायदा हो रहा है, तो सरकार ने उसमें पैसे का भी इजाफा किया और उसकी जो अवधि है वो भी बढ़ा दी है। और इसके अलावा जो मेरे को एक सरकार का जो गति शक्ति के ऊपर जो सरकार ने अपने प्लान अनाउंस किए हैं, जिससे कि अपना 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन इन द नेक्स्ट 3 इयर्स सरकार ने अनाउंस किया। फिर एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर से 2022-23 में, और 100 कार्गो टर्मिनल इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। ये सारी चीजें जो है ये बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत गति लेके आएंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आगे बढ़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और जो सरकार जो देश में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी और ज्यादा मजबूत होगा। Dr. Sharma, welcome to All India Radio. This is Ravi here. I just wanted to draw your attention to one thing, which is the upcoming MPC of RBI in February. I think between 7th to 9th, this MPC will be there. Hitherto, for a good period now, the RBI has been pretty growth-oriented. It has not focused on inflation so much, but now we are looking at, in November we saw WPI of 14.23%, and the revised fiscal deficit for this year will be 6.9 instead of 6.8, and the next year also will be 6.4, although the finance minister has mentioned that she's looking at below 4.5 fiscal deficit by 25-26 FY. What are your inflationary concerns regarding this budget? Yes, I totally agree on your connotation that inflation is a major challenge at this juncture. We have to address the inflation because particularly if WPI inflation is in a very high trajectory. So we have to address the WPI inflation because high WPI inflation will not support the manufacturing competitiveness, which is our mission to become competitive and to become manufacturing hub and to become more and more competitive in the international market. So now I believe the government is doing a lot to control the inflation, and government has announced so many reforms actually for the transportation and logistics sector, so that all these costs are not impacting the manufacturing sector, because these costs are major ingredient of the manufacturers, which escalate the prices and the cost of doing business. So government is undertaking the steps, but I believe with the next 2-3 months, with the Rabi crops hitting the market and more and more improvement in the supply chains will be beneficial for the inflationary scenario to control in the coming times. And as you said, the fiscal deficit, because now the whole world is impacted by the coronavirus and the economies are supporting their respective citizens like anything. And we have also undertaken a lot of things which were not under control of the government, because pandemic was not under control of any government throughout the world. But the government supported with so many reforms, started from the micro units to the financial markets. That's why the fiscal scenario expanded, and last year's fiscal deficit was 6.9%. And we are thanks to our government that this still remained under the control, because there are economies where the fiscal deficit went beyond 10% also. But thanks to the various policies of the government that they controlled, and they anticipated 6.8%, and the actual is 6.9%. There is no significant difference in the fiscal scenario. So moving forward, if the growth is becoming strong and we are able to push the trajectory to the 8%, 9%, 10% as anticipated by in the next year,
8 to 8.5%, so the inflation remains somewhere between 4 to 5%, then our nominal GDP will be somewhere between 13 to 14%. So the ratio of fiscal deficit will also be under control in the coming times, and I am definitely agreeing to the connotation that we will be able to control inflation in the next 3-4 years, and the inflation will be very much in the target of the government. Let us take this to the other expert, Sharad. Sharad, are you on line with us? Yes. Sharad, the same question that I was putting to Dr. Sharma is that there will be a dilemma that RBI will face on 9th of February very shortly. What do you think they will do? Will they increase rates? Well, I think the rate increase would primarily depend upon how the American economy, especially, do they jump the gun and, they not hold on to rates. I think they will have to. So I think inflation would be a major driving factor as far as the rates are concerned. And we will have to wait for inflation numbers. But seeing the situation, a little bit of maybe 10 basis points, 20 basis points here and there, I will not be too surprised if that happens. But then it will be kept quite neutral in terms of its effect, because the primarily government's aim is to boost private investment. And if you have to boost private investment, you cannot tinker with the rates too much. That remains as a truth. So therefore, I really don't see a very, very hawkish stance of RBI in stepping the rate up, because you would essentially want the private investment, one of the engines of the economy, to pick up. So therefore, I really do not see any major shift in the policy of RBI. So शरद जी, ये सेकेंड ईयर रनिंग है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर में अराउंड 35% का इजाफा किया गया है सरकार द्वारा, जो सरकार का गवर्नमेंट केपेक्स है. आपको लगता है कि अब हम ज़्यादा प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी इससे उत्साहित होते हुए देखेंगे, क्योंकि सरकार का जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि जॉब्स, डिमांड और इन्वेस्टमेंट की वर्चुअस साइकिल जो क्रिएट वो करना चाहते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर द्वारा, उसमें इन्वेस्टमेंट में वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी आशा कर रहे हैं. सो आपको लगता है कि इस वर्ष हम ज्यादा देखेंगे प्राइवेट केपेक्स आता हुआ? जी देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू जब ही होता है, अगर एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम बढ़ाएं, ये मेथड होता है, बल्कि 2 कदम हम बढ़ाएं एक कदम आप बढ़ाओ. तो सरकार निरंतर कमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर, केपेक्स पर. तो उसको देख के ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे आती है. अगर सरकार ही खर्च नहीं करेगी तो निजी निवेश का आना बहुत कठिन हो जाता है. वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता निजी निवेशकों में कि हम आके इन्वेस्ट करें, कोई नई फैक्ट्री लगाएं, कोई अपने कैपेसिटी का एक्सपेंशन करें, एंड सो फोर्थ. तो मुझे लगा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मेरा जो बजट का सबसे बड़ा टेक है, सोनू आप पूछे जी, तो वो जो 7.5 लाख करोड़ का स्पेंडिंग है, मैंने जैसे शुरू में कहा, ये सबसे बड़ा टेक है, क्योंकि वहां सरकार ने कठिन परिस्थितियों में 7.5 लाख रुपए का कमिटमेंट किया है, जिसका की एक तीर से, सोनू अगर मेरे से पूछे तो कई निशाने लगे हैं. एक तरफ आप नौकरियां बनाते हैं, एक तरफ आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, एक तरफ आप 1 किलोमीटर रोड बना, 1 रुपया खर्च किया, वो 8 गुना उसका इफेक्ट होता है. आप जन जन तक उन सुविधाओं को पहुंचाते हैं, भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या विकसित देश की तरफ बढ़ाते हैं. तो मुझे लग रहा है कि आप जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसके पीछे पीछे चलता है. सोनू, अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जब सरकार ने बड़ा निवेश किया है तो निजी निवेश को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनमें आत्मविश्वास आ जाता है कि अब हमें भी आगे बढ़ के करना चाहिए. जी शरद जी, और अब हम शामिल करना चाहेंगे डिस्कशन में डॉक्टर एसपी शर्मा को. शरद जी, आपसे थोड़ी देर में फिर कनेक्ट होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे, जो ओवरऑल आपने काफ़ी सारे पहलुओं पर हमें बताया, पीएलआई के बारे में बताया, ईसीएलजीएस के बारे में बताया, जो एमएसएमईज़ के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है, 4.5 लाख से उसको बढ़ाकर 5.5 लाख का कॉर्पस कर दिया गया है. ओवरऑल अगर हम कहें, जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन थी, आप एक इंडस्ट्री बॉडी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इंडस्ट्री की ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसमें आपको लगता है कहाँ तक वो पूरी हुई हैं, और कहाँ आपको लगता है कि अभी शायद और कुछ स्टेप्स आने वाले समय में उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, मैं सप्लाई साइड से सोचता हूँ, तो बहुत बढ़िया है. बजट में कोई कमी नहीं है. बजट ने एकदम से प्रैग्मेटिक अप्रोच ली है, प्रॉमिसिंग बजट है. लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ साथ में कि जो डिमांड साइड कुछ और रिफॉर्म्स चाहिए, जिससे कि डिमांड एनहेंस हो. जैसे कि कल के इकोनॉमिक सर्वे से सीधा इंडिकेशन है कि जो कंजम्पशन है हमारा, जो नॉमिनल टर्म्स में
कंजम्पशन एज परसेंट ऑफ जीडीपी, डिमांड साइड जो कंजम्पशन है, तो उसमें जो लास्ट ईयर के मुकाबले में भी थोड़ी कमी है। तो इसलिए हमें कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काफी भरपूर प्रयत्न करने चाहिए, और उसके लिए एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्सेस में और टिंकरिंग करते और थोड़ा सा लोगों को राहत मिलती, खासकर जो हाउसिंग सेक्टर में अगर कुछ एक्सपेंशन हो जाती, जो अभी 2 लाख रुपए तक का जो लोगों को रिबेट मिलता है जिसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन है, तो वो थोड़ा बढ़ जाता, तो एक मिडिल क्लास के लिए एक आगे बढ़ने का थोड़ा उनका इनकम लेवल, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज होता और वो ज्यादा स्पेंड करते। और दूसरा जो टैक्सेस का 10 लाख रुपए तक का है, तो हमने सोचा था कि जो 10% टैक्स है वो 15 लाख रुपए तक हो जाना चाहिए, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरर्स अपना जो उनके जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज है, उनकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सपेंड करेंगे, देन दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर पीपल इन देयर फैक्ट्रीज, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से डिमांड साइड पे अभी सरकार को और बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, जैसे इस साल तो हमने देखा कि दिस ईयर वाज अ ईयर ऑफ बेस इफेक्ट। पिछले साल के जो बहुत ही अपना जो डिसलिडेटेड इंडिकेटर्स थे, जो बहुत ही एक्सट्रीम लोज थे, उनके ऊपर हमने काफी हाई ग्रोथ इस साल में हासिल की है। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है, कंसोलिडेशन का एक ईयर होगा, जिसमें हमारी ग्रोथ कंसोलिडेट करेगी। और जिस तरीके से अभी अपने पास आंकड़े हैं कि 8 से 8.5% के बीच में हम ग्रो करेंगे, उसके ऊपर भी कई कंडीशंस है कि अगर पैंडेमिक वापस नहीं फैला और उसके ऊपर जो ग्लोबल सिचुएशन है वो फेवरेबल रहती है, ग्लोबल डिमांड शुड ऑल्सो रिमेन इंटैक्ट, तो इन सभी धारणाओं के साथ हम आगे ग्रोथ प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी ग्रोथ को और अच्छे तरीके से, अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे अपना कंजम्पशन इंक्रीज करके उसको सपोर्ट करें, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ और स्ट्रांग हो सकती है। और आने वाले टाइम में जो ये ट्रैजेक्टरी है 8 से 8.5% तक का, इसको हम आगे 9-10% तक लेके जा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को और बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा क्रिएट होगा। और दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, सबसे ज्यादा जो कोरोना का मार है वो स्मॉल बिजनेसेस को पड़ा। अगर हम एमएसएमईज में देखते हैं तो उसी में जो माइक्रो यूनिट्स हैं, 6 करोड़ से ज्यादा माइक्रो यूनिट्स हैं, जिनके लिए जिनके जो जैसा एक नेचर रहा लास्ट 2 इयर्स में कि स्टॉप स्टार्ट, कभी हमें स्टॉप करना पड़ता था, कभी स्टार्ट, फिर ये इस अप्रोच में ज्यादातर जो बिजनेस थे बहुत इम्पैक्ट हुए हैं, जिनके जो रेंटल जो उनके शॉप थे वो कभी बंद करके या उनका अपना रेंट पड़ता रहा, वो अपना जो माल था डाला हुआ, जो उनकी इन्वेंट्रीज थी वो पाइल्ड अप हुई, वो अपना नहीं बेच पाए, कईयों को वाइंड अप करना पड़ा। तो उनके लिए अगर कोई डायरेक्ट बेनिफिट कुछ ऐसे आ जाते कि जिनसे वो वापस जो रिजुविनेट होते और अच्छे से अपना ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जो आगे बढ़ते, तो वो भी एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। शायद सरकार आने वाले टाइम में, क्योंकि बजट इज नॉट एंड ऑफ द रिफॉर्म्स विल कंटिन्यू, और हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार आने वाले टाइम में अपनी रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखेगी, और ये रिफॉर्म्स जो जैसे सरकार ने पिछले 20 महीने में रिफॉर्म्स की हैं, ये आने वाले 20 वर्षों तक रिफॉर्म्स जारी रहेंगी। Our studio experts would be happy to take your questions. You can send in your questions on our WhatsApp number, only on WhatsApp. Don't call, don't send a message, only on WhatsApp. 8700014411 is the number. 8700014411. You can send in your queries on WhatsApp and our studio experts would take your questions live. Dr. Sharma, coming back to the point that the principal economic advisor Sanjeev Sanyal was making yesterday was about the recovery of the economy, and he said wherever we were 2020, most of the recovery has happened. In most of the sectors, we are almost back to where we were pre-pandemic. But one sector which you also mentioned is the hospitality, the airlines. These sectors, they're still almost 10-11% below the pre-pandemic levels. And I could see that the one of the announcements is regarding the hospitality services. The ECGL service is to be extended for this by March 2023 with an increased cover of 50,000. But do you think more can be done for this sector because it is still lagging? Yes, I definitely agree for your connotation, because all the sectors, starting from the industry, mining, agriculture and allied services, and the manufacturing, electricity, and the construction, all these sectors have recovered from the lows, and they are recovered more than 100%. Like the
electricity, gas, water supply, this sector recovered 110%. And the agriculture sector recovered 107%, industry 104%, mining 104%. But the services sector is not able to recover to the level of 100% because of the various issues, because of the stop-start nature of the economy. So I believe that vulnerable sector within the services sector should be supported, and hospitality sector is one of them, and there must be more reforms or supports from the government side to provide them adequate field to move forward and to recover fully from the daunting impact of the COVID-19. As I mentioned earlier, that from the demand side, the consumption segment is also one segment which has not recovered fully from the daunting impact of coronavirus. If we scale them to the level of 100, I believe government consumption in the nominal GDP is contributing 12.2%. This was 12.5% last year in 2021. And the private consumption is 57.5, but last year it was 58.6. So this is the segment which is impacted, and we have to support this segment with more and more reforms, and with more and more support, such as direct benefit transfers and the support to the vulnerable sections of the society. आपसे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, एक हमारी कॉलर है, लिसनर है प्रज्ञा, वो पूछना चाहती हैं कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं, अगर आप संक्षेप में बता सकें, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा एक सरकार ने, खैर ये मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एंड वी आर वेरी हैप्पी that government considered our suggestion. This was the suggestion given by PSD Chamber of Commerce and Industry. दो अदर इंडस्ट्री बॉडीज ने भी कुछ सजेस्ट किया होगा, पर PSD चैम्बर का भी ये सजेशन था. तो ग्रीन बॉन्ड्स में क्या है कि जो हमारा पर्यावरण और जो हम इसकी बात करते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को फंडिंग की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने हैं, तो उसके लिए सरकार के पास जो खूब ऐसे रिसोर्स मोबिलाइज हो, तो ऐसे बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और सरकार के पास पैसा भी एकत्रित होगा. डॉक्टर शर्मा, और तीसरे नंबर पे जो विन विन सिचुएशन रहेगी, जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जी डॉक्टर शर्मा, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप बने रहिए. इस बीच हम जुड़ गए हैं डॉक्टर बिबेक देब्रॉय जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के. डॉक्टर देब्रॉय, वेलकम टू द शो. थैंक यू सर. हमने आपसे कल भी डिस्कस किया था जब इकोनॉमिक सर्वे आई थी. आज बजट आ गया है. सो बजट को आप कैसे देखते हैं? आपने कल मेंशन किया था कि कुछ इम्प्लिसिट इंडिकेशंस हैं इकोनॉमिक सर्वे में बजट को लेकर. आप कैसे देखते हैं आफ्टर द बजट डिक्लेरेशन? आई थिंक द बजट शुड बी सीन मोर इन टर्म्स ऑफ द विजन इट सेट्स आउट. जस्ट एज लास्ट ईयर्स बजट set out a vision, this year's budget also sets out a vision for India to accomplish when India celebrates its 100th Independence Day. It's a template for the next 25 years. One should not look at the budget from the point of view of what it does for me in terms of reducing my slabs or reducing my tax rates, because there must be stability and certainty in tax policy. And I think what this budget does is it talks about inclusive welfare, which is empowering people, and it sets out an environment for growth, which means automatically when that growth happens, there will be jobs, there will be employment. Dr. Debroy, you've been advocating simplification of tax codes and tax rules in your recent pronouncements. Has this budget gone further in that direction? No, look, there are the rates and there is the processes. Now, so far as indirect taxes is concerned, that's under the purview of the GST Council. So you're talking about direct taxes. Substantive reform of direct taxes. Also, in passing, I should mention that the taxation of agricultural income in any case under the Constitution is under the province of the states. So far as the rest of it is concerned, the big
question here in terms of simplifying is removal of exemptions. And I need to quickly point out that quite often the discussion is only in terms of corporate tax rates. But the entire unincorporated segment of enterprise actually pays personal income taxes. So whether it is on personal income taxes or corporate taxes, what is needed is elimination of exemptions. Should we have it? Yes, we should have it. Was this budget the time to do it? Probably not. And the reason I'm saying this is if you removed all exemptions, some segments would probably, not across the board, but some segments would probably see an increase in effective tax rates. Given that the growth recovery is still not very robust, I think expecting it in this budget was unrealistic. But yes, as a goal, it should happen. I'm certain it will happen. So you're sure directionally we will move towards removal of exemption even in the individual sectors? What has happened is for some categories there is already an option. Correct. But the option for opting for that route of removal of exemptions has not been very attractive. So I'm sure that once the growth recovery is a bit more certain, by the time we come to the next budget, we will be in a position to talk about the proper direct tax code. आपने बात करी कि अगले 25 वर्ष का विजन ले रहा है बजट एंड वी सी कि देयर इज अ थ्रेड ऑफ डिजिटलाइजेशन रनिंग थ्रू द एंटायर बजट इवन एग्रीकल्चर में ड्रोन्स की बात हुई है हर एक एरिया में टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात हुई है डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई है डिजिटल बैंकिंग को एक्सपैंड करने की बात हुई है सो आपको लगता है कि ये एक जो स्टेप है डिजिटलाइजेशन का दिस विल नेचुरली लीड टू virtuous growth cycle? Yes, well, if I look at this budget in the terms of that broad vision, it is of course about capital investments, is about infrastructure, but it is essentially about connectivity. Connectivity of the physical kind as well as connectivity of the digital kind. And we have seen the gains, one only has to look at the dashboards. We have seen the kind of gains that digital connectivity has brought even to the poorer of sections of society. And I should mention, because this is sometimes not always known, that even when he was the Chief Minister of Gujarat, the present Prime Minister advocated the use of digitization and information technology. And yes, you're absolutely right that this budget does have an emphasis on use of the digital, because the digital is a great enabler. It removes the asymmetry of information, however you define it, between the relatively disadvantaged and the more advantaged. And there are any number of sectors where the use of this technology can be a great enabler to ensure empowerment for citizens, to ensure ease of living and ease of doing business also. Dr. Debroy, our earlier expert, Dr. Sharma, was the chief economist with PhD CCI. We asked him how satisfied the industry was, and he mentioned that from a supply side, he was reasonably satisfied. From a demand side, he felt more things could be done. What, in your opinion, are the further things that could be done on the demand side? Well, you would have to ask him. I would say that when people say demand, they have not changed their expectations. Their expectations are still based on the past. And what do I mean by that? They felt that, the budget should reduce the excise rate. And indirect taxes, by the way, are part of GST. The budget should increase the standard deduction, should reduce my rate. This is what people mean by demand. There are two problems with that. One is, if I have a concession for one sector, that is ad hoc, discretionary, and I'm distorting decisions. The more important point is the multiplier benefits are far more from increasing public expenditure than from reducing taxes. So I think the best answer in terms of increasing demand is to ensure that the growth recovers. In fact, Dr. Sharma हमारे साथ हैं. Dr. Sharma, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी. क्या आप डॉक्टर विवेक देब्रॉय से बजट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहेंगे? And he is rightly saying that extension of the
capital and infrastructure development should create demand also. I totally agree. But my connotation was to immediate support to the middle class, and they were expecting also that there will be some relief in the taxes. But the government has undertaken a lot of other reforms like the green bonds, and all these reforms are going to benefit the people in terms of their investments and support to the economy to address the carbon intensity of the economy. Like green bonds are very, very appreciable. जी सो मिस्टर देब्रॉय एक जो आपने बहुत स्ट्रेस दिया है गति शक्ति पे बजट में सड़कों को लेकर एक्सप्रेसवेज को लेकर रोपवेज को लेकर कार्गो टर्मिनल्स को लेकर सो यू फील कि दैट इज आल्सो अनदर वे ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट Absolutely. And the point is, I do not know what the expression middle class means. But if they expect tax concessions, there are people who are paying taxes. Anything that I give to the so-called middle class is money that I cannot spend on Gati Shakti projects. Right. So, if there is a trade-off, and I don't think there should be trade-off because the so-called middle class will also gain from the growth. But if there is a trade-off, my trade-off would be to ensure the Gati Shakti projects, the transport connectivity for every citizen, not just people who pay taxes. There was one more question that had come from one of our listeners that was regarding sovereign green bonds. I don't know if you could probably give us more details about that. How does that work? Is it like the sovereign gold bonds? It is best I do not answer that question because that question should be answered really by someone from Finance Ministry or Reserve Bank. And digital currency has been, that has now become a reality, digital rupee. How do you see this development? ये कितना बड़ा एक हमारे जो financial sector के लिए या हमारे financial system के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे? I think this is very important in terms of enabling transactions. But I think the broader debate is, although the budget has not used that word, rightly so, the broader debate is about this so-called cryptocurrency. Cryptocurrency is not a currency at all. It is a financial asset. The trouble is, it cannot happen unregulated, because what one means by a crypto asset is also unclear. So I think what has been suggested in the form of a digital currency, spliced with the taxing of digital assets, is a very desirable move, moving towards some kind of regulation, not ban. Some countries have actually banned crypto, but not a ban, but some kind of regulation of this segment, which is a thriving segment. And I think eventually we will see that regulation manifesting itself, not necessarily, of course, through the budget. Dr. Debroy, one more thought about the disinvestment. The number that was initially planned, the number we have come up with is much lower than that. How do you see that privatization stroke disinvestment moving forward? I will not quibble about the difference between privatization and disinvestment. Privatization technically means when I'm handing over the entire entity, all of the equity, not just dilution of equity. Air India is an example of that. Correct. There is, of course, the national pipeline. If I look at the figure of 65,000 crores, which is the target, I don't think that is excessively high. In fact, all the budget numbers are fairly cautious. Even that nominal rate of growth of 11.1%, I personally think will get more than that. But the budget has been conservative, and the 65,000 crores disinvestment figure, I think, is eminently achievable. Dr. Debroy, the economic survey talked about the importance of safety net of welfare measures for the poor and the marginalized. Where does the budget stand on that? No, the budget also mentions it. The finance minister mentioned it. And this is primarily in the form of ensuring physical infrastructure, financial inclusion, social infrastructure. I would quickly mention something else that the budget mentions, and it's extremely important, which is the land records part of it. Because many of the problems, and land is fundamentally a state subject,
many of the problems are associated with the unsatisfactory state of land records. So this is how I would implement this welfareism, which is empowering citizens so that they do not any longer need doles. And another issue of involving states. Is of involving states in the process of development. 1 lakh crore rupees have been kept for FY23 for Gati Shakti program, and 10,000 crore the grant which was given to states for investment assistance in the form of investment assistance, that has been increased to 15,000 crore. So you feel that states coming on board is a very important aspect of Gati Shakti's implementation? Yes, of course, because you see, look, all growth essentially has to be driven by states. Land is completely a state subject. Labor is on the concurrent list, but much of the implementation of labor laws is a state subject. So in terms of what economists call the factor markets, most of it is in the province of the states. We already have a phenomenal decision-making process that involves the union government and the state governments, which the finance minister also already mentioned in the context of the GST Council. I think by the same token, we need stronger coordination between the union government and the states. And another aspect which we would like your opinion on is the capital investment, the multiplier effect. How do you see this virtuous cycle of jobs, demand and investment? How do you see it solving this problem of job creation, which a lot of, you can say, critics have been citing? Well, the problem of job creation is not a new problem. It has been accentuated by the pandemic. And there are all kinds of problems associated with the labor market. There are problems of lack of correlation between skills and education. There is the problem of the inefficient way that labor markets function, the geographical mismatch between where the demand for jobs is and where the supply of jobs is. So all of that. There is also the issue that particularly so far as urban unorganized sector labor is concerned, we don't know who they are. The Interstate Migrant Workers Act of 79 was never implemented. It is only now that through Labour Ministry's portal, we are getting some kind of registration, which is not mandatory. It is people registering themselves. So before one does anything for the labor market, one has to resolve all of these issues. Part of it, of course, is that employment always reacts with a time lag. And when there is growth, the employment is bound to happen. The employment may not be as much as we want it to, but as soon as there is growth, some amount of job creation is certain to happen. Dr. Debroy, there's this upcoming MPC between 7th to 9th February, just a week away from now. RBI will have a dilemma with regarding the rate hike. How do you see and the bond markets have also moved already in that direction. How do you see the yields and the rates moving? You see, if I look at the inflation rate today, depends of course on how I'm defining the inflation rate. Mm-hmm. But if I look at the inflation rate, it is within the MPC bounds. Okay. I should also mention that many of the elements that have contributed to the present inflation, they are not amenable to monetary policy instruments. The imported inflation is a big Imported inflation, food inflation, and economic survey documented some of this. It's not really amenable to monetary policy instruments. I would only stick my neck out and say that so far I do not see inflation as a great concern. I think it will be transitory. I am much more concerned about ensuring that we return to a high growth trajectory. And Dr. Debroy, normally there is a lot of stress on rural development in the budgets, but here we see a pleasant surprise that there's a lot of stress which has been made on urbanization, on urban planning. How do you see this? No, but not at the expense of the rural. Right. Because you see, a lot of the things that this government has done is actually for the rural sector.
For example, I mentioned the SECC. No, I didn't mention the SECC, but the SECC rural has been used in a large number of government schemes. This budget also talks about the various welfare measures for the rural sectors, including the tap connections, etc. The fact of the matter is that in the process, sometimes not enough has been done on the urban side. So I think it's a welcome recognition in the budget that we need to have a better form of urban planning. Dr. Debroy, this is a great budget that seeks to build an open, digital and inclusive India with a Amrit Kaal, a 25-year vision. And thank you so much for joining us live on All India. Thank you. And now we'll go over to the press conference where Nirmala Sitharaman ji and her team will answer questions. Of actual receipts being different from even the RE figures, so we should not read too much into it. Okay, 122. Hi, ma'am. Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Has that been put on hold, or what is the plan on that? Just repeat your question. I think your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So has that plan been put on hold, or what is the update on that? You're referring to the bond indices, yes, right? Yes. The issue is that the NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains tax right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand. And those discussions are still on, and we are the one who's propounding that thing, and that's how it is moving, those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Ma'am, firstly, congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee, and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes awe. A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to the cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a
transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That'll get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. We have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits, can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact. But of course, if you're talking of numbers, money, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. 11. मैम, मैं आमिर हूँ न्यूज नेशन से। बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को बढ़ाने का टैक्स तो टैक्स को कम नहीं किया गया, कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने। लेकिन ऐसा मैम क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली? आम जनता जो पब्लिक खासतौर पे सैलरीड क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। 1 to 4. Hello. Good evening, ma'am. Shishir. Yes, Shishir. Ma'am, there is a one particular announcement which you made about the blended and non-blended petrol and diesel, that additional or the differential 2 rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel sold by petrol pump except those who are not blended from October 1, 2022 will be costlier? We certainly want to encourage blended fuel. That's a simple message in that. Anything else you want to add, Tarun? We have discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended. And this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal. But the desire is that the blending happens, and to that extent it benefits the country. 106. मंत्री जी, हमारा आपसे इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा। ये किस तरीके से? ये किस तरीके से? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उसे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए,
ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है। वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 60,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया। सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। ये तरीका। Okay, 175. मैम, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम, आपने बजट में 2 अनाउंसमेंट्स करी हैं, एक IBC अमेंडमेंट्स को लेकर। मैम, किस तरीके के अमेंडमेंट्स आप देख रही हैं IBC के अंदर जिससे रेजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो पाए? और दूसरा मैम, आपने कहा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए। मैम, किस तरीके के कंसर्न्स उन्होंने आपके सामने रेज किए हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि रेगुलेटर आर्बिट्राज या फ्रिक्शन जो है उसको दूर किया जाए, तो क्या कंसर्न्स प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट के? नहीं, they could be any number of concerns, but once when they met me and once when they met the Honorable Prime Minister, they went into a lot of details which are important from the point of view of ease of doing business and also better understanding that sector. If all of us can see the point that private equity in India venture capital funds have been one of the prime reasons why many of the startups could rise to become unicorns within first 6 months of this year itself. Last year, 21 itself, you saw how many of them benefited by funds being made available in India through private equity. Now, if that sector needs further facilitation, obviously the sector will have to sit and talk with a group of people who can understand their needs and then suggest solution for policy making. That is why I have referred to the consultation which we've had with them and then said that we will appoint a committee which will go through it and come back to the government with suggestions. 255. Ma'am, Gyaneshwar Dayal from Jan Express. I have a question, actually 2 questions. When can we expect the farmers' income to double? Number 1. And When can we expect the pharmaceutical? Farmers' income to double. It was supposed to double in 2022. And how far is the goal of 5 trillion economy? So if you look at the amount of minimum support prices that was given out this year and also the record procurement, so we are well on our way to helping the farmers. Is your mic all right? Or do you want to, the voice is not coming out. So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. Those statistics are given in Madam's speech document as well. As far as the
the $5 trillion economy size is concerned, if you look at the fact that in the year ending 2021-22 as well as in the next financial year, we are the fastest growing economy among large economies, and our GDP in dollar terms has already crossed $3 trillion. So depending on how the exchange rate moves, and there is enough hope to believe that the Indian rupee will in fact remain stable to strong given what is going on in the developed world. And if we continue to retain the path of 8% to 8% real GDP growth, it will translate into even 8% dollar GDP growth. So therefore, if you extrapolate it in the financial year 25-26 or by 26-27, with some luck even by 25-26 itself, we should be at the $5 trillion size in terms of nominal GDP. Thank you. मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ. Sorry, I didn't get your name. ज्ञानेश्वर जी, एक आध विषय मैं जोड़ना चाहती हूँ उसमें. I'll just list out the things, you'll understand where I'm coming from. MSP, यूरिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैं एक सिर्फ यूरिया सब्सिडी का नंबर बोलती हूँ. बजट 21-22, मतलब 1 फरवरी 21 में जो बजट दिया गया उसमें 58,768 was the allocation for urea subsidy. This time it is 63,222 आने वाले साल के लिए. ठीक है. और एक्चुअली 58,768 जो बीई में बोला गया यूरिया सब्सिडी, वो आरई में 75,930. इसका मतलब है कि इंटरनेशनल यूरिया प्राइसेस जितने भी इंक्रीज नहीं हुए, इट्स ऑल राइट, इट गॉट इंक्रीज्ड, मगर वो बोझ किसान के ऊपर पड़ने नहीं दिया. प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत इंटरवीन करके that burden we took, we didn't put it on the farmer. So MSP, urea, nutrient in terms of micronutrients which we are giving for farmers, 6,000 rupees Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, additional income कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टीवेशन, हनी, बी कीपिंग का प्रावधान, उसको समर्थन और उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट लिंकेजेस थ्रू ई कॉमर्स. फिर सोलार पंप्स, उनके वाटर पंपिंग के लिए किसान के लिए सोलार पैनल वगैरह दिया गया है जिससे उनका ऊर्जा का एक्सपेंस कम होगा. फिर मैंने शायद जुलाई 19 के बजट में या 20 के बजट में ये बात बोली, अन्नदाता क्यों ऊर्जा दाता नहीं बन पाएंगे? जरूर बन पाएंगे. वी मेड श्योर दैट एवरी किसान विल प्रोड्यूस बिजली यूजिंग सोलर पैनल्स इन हिज फील्ड, and he can also uplink that and earn money from the government for supplying urja. Finally, in this budget, I've also made an announcement for food processing, which is at the farm gate, so that investments can happen there. Post-harvest grains को तुरंत processing में वो किसान देने के कारण उनका income better rates मिलता है उनको. So there are several steps that we are taking for improving farmers' income. I want you to please take cognizance of it. इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट वो भी इम्पोर्टेंट है. इस साल टारगेट 16.5 लाख करोड़ का था जो अभी तक 75% हो गया है. अगर आप देखेंगे आज से 16-17 में वो 10,65,000 करोड़ था, तो ये बढ़कर अब 16,50,000 करोड़ इस साल होगा. अगले साल हमारा लक्ष्य है इसको 18 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी काफी बढ़ोतरी हुई. Okay, 125. Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. Your tax revenue collection targets are conservative, but your borrowing numbers are all-time high. How do you explain that? And secondly, when it comes to public sector expenditure, the capex expenditure for RE 2022, they have been revised downwards. How do you explain growth along with these downward revisions?
First, on the, you're saying that the capital expenditure targets for the RE have been moved downwards. From how much to how much, according to you? There's a correction there that you've made in the Okay. public sector expenditure, but No, not in the public. The capital expenditure budget estimate was 5,54,000 crores. The revised estimate, after removing the actual revised estimate is 6,03,000 crores. But even if you exclude 52,000 crores, which is an Air India sundry dues repayment, it is 551. So the RE is 551 against a budget estimate of 554. That is statistically insignificant. So basically the capital expenditure targets are expected to be achieved. I think this question was also asked by your colleague Sapna here, that the revenues are conservative. So if we look at revenues and compare it with the GDP figures, I would also like you to concentrate on the fact that the excise duty is not linked to that. Excise duty is a specific duty, so that doesn't go up as the prices would go up. One, and secondly, if you recall, we have reduced the excise duty on diesel and petrol by 10 rupees and 5 rupees per litre. So if we take away the excise duty numbers both from the RE of the current year and the B of the next year, then the growth in the revenues is more than 14%, which I think is not conservative, but is a very pragmatic number, and we would make all attempts to achieve that. Number 70, number 70, number 70. No, the borrowing number is nothing but the fiscal deficit minus the expected small savings collections and the other sources. So they tally. I mean, it is 16,61,000 is the total fiscal deficit. 11,80,000 or something is the net borrowing requirement. The difference is small savings and certain other sundry receipts. I don't see any, there is no artificial, that's a very realistic number. It's based on our best estimate of what will be collected in small savings, and net of that is the borrowing requirement. Ujjwal Narayan from Newsrise. Ma'am, in last year budget, you have announced about privatization of two state-run banks. But this year, there is nothing that sort has been confirmed in the budget. Just wanted to know what is the situation. Does government is going with the stated policy which it stated in last year budget, that for the privatization of two state-run banks, and what is the holistic policy on the privatization of bank and insurance company as a whole? You've answered the question yourself. What is the holistic policy? Holistic policy is a continuation of last year's budget. I've said that. This budget in every aspect is a continuation of last budget, inclusive of the privatization matter that you're talking about. That's what I'm telling you. We are continuing that agenda. All right? Number 68. Status budget. Bring the bill in the budget session of last year itself. Sorry? Privatization of these two banks and insurance companies. Yeah, I said Air India also, and I've done the Air India, haven't I? Huh? That's right. When we have something, you will get to know, no? I'm not doubting it. Huh? You made a very aggressive pitch on disinvestment of these two banks, and you said you will get the bills also in the same session, but nothing has moved in the last 1 year. That's right. Thanks for reminding me. Number 68. Can I just supplement on the borrowing? I think I am. Hold on. Hold on. मेरा सवाल ये है कि डिजिटल एसेट क्या है, क्या इसमें क्रिप्टो शामिल है? इसके लिए घोषणा की गई है बजट में, क्या इसमें क्रिप्टो शामिल है? क्या चीज? डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में? घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है।
वो प्रश्न और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? 1 to 1. मैडम श्रीकांत, मेरे दो आम जनता के सवाल हैं। एक तो लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, आपने जवाब दिया गोलमोल, लोगों को समझ में नहीं आया। सॉरी, जो महंगाई पे सवाल पूछा गया था, शायद प्रभु जी ने पूछा था, हाँ जी, कि देश में इतनी महंगाई है, उसका आपने बहुत ही डिफिकल्ट आंसर दिया। शायद आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कि समझ में नहीं आया मैडम ने महंगाई पे क्या बोला। दूसरा मेरा प्रश्न मैडम बेरोजगारी के ऊपर है। आपने कहा लाखों रोजगार सृजित होंगे, सरकार का वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ और घट गए बजाय रोजगार देने के, और बेरोजगारी ज्यादा हो गई। और जो एक छोटा सा मैडम आपका एक इशू था, शुरू से चला आ रहा है पार्टी का, कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे। कोई ऐसा डेटा है कितना ब्लैक मनी वापस आया आज तक? इन्फ्लेशन के बारे में जो मैंने जवाब दिया, वो जवाब मैं दोहराऊंगी, मगर वो अगर आपको गोलमोल लग रही है, मैं किसी और से जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका शायद आपको हिंदी में और इंग्लिश में दिक्कत है। I'll ask somebody else to answer it. There is no गोलमोल सर। बजट जब प्लान करते हैं और एसेंशियल सर्विसेज का एक कमिटी जो है मंत्रीगण का, ये बार बार हम बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ, जब इंक्रीज होता है प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज का, मैं मानती हूं आम आदमी के ऊपर उसका दिक्कत जरूर पड़ेगा, उसको मैं नकार नहीं रही हूं। मगर ऑयल सीड्स, ऑयल, एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम जब हुआ, तुरंत हमने ड्यूटी कम करते हुए पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एक बार नहीं 2 बार कोशिश की, और पाम ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट और रिफाइंड भी ज्यादा आ रही है, जिसका असर आजकल एडिबल ऑयल में जरूर पड़ रही है और मार्केट में खबर भी है। इन्फ्लेशन दूसरा एक और विषय, एडिबल पेरिशेबल कमोडिटीज के ऊपर जब होता है, उसको भी इंपोर्ट के द्वारा तुरंत हेल्प करने के लिए हम स्टेप्स उठाते हैं। फिर ऑयल सीड्स भारत देश में भी कल्टीवेट हो, उसका उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम आत्मनिर्भर हो एडिबल ऑयल में, उसका भी इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं। एक और विषय, सिंपल टेक्निकल बात में जिक्र करना चाहती हूं। हाँ, जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है, उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर एक महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं, इस सरकार 2014 से लेकर आज तक वी हैव नॉट अलाउड इट टू गो टू डबल डिजिट्स। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले it was always in the range of 10, 11, 12, 13, even food products. इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अगर ये भी आपको गोलमोल लगता है, मैं किसी और से भी जवाब देने के लिए बोलूंगी। ठीक है, बोलिए, चूज करिए किसी के। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग
that there has been impact on jobs. मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है. कल का इकोनॉमिक सर्वे में अनंत नागेश्वरन जी और हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर आई थिंक इज हियर संजीव सन्याल इतना विस्तृत रूप में जॉब्स के लिए क्या क्या पिछले साल में हुआ वो डिटेल दिए हैं. मैं संजीव से बोलूंगी आपको जरा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. हाँ, so it will help you to know. Thank you. Number 260. Somanathan wants to. Okay. Yes. No, just specifically on job. He's telling, oh yeah, I'll answer that also. Yeah, but specifically on jobs and specifically what is in the budget. So one is there is an additional 2 lakh crores of lending to MSMEs which is outside the ECLGS. So ECLGS is for those affected. It's an automatic program for existing borrowers. This is for new lending to MSMEs unconnected with ECLGS. 2 lakh crore of additional provision has been made in this budget. ECLGS has, as already mentioned, been expanded for the hospitality and related sectors. The outlay on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is up by 27%. And in addition to that, a provision is being made that in the capital expenditure support to state governments, if state governments have certain priority projects in PM Gram Sadak Yojana have been identified, we will even take the 40% state share on those components so that the states have no burden in carrying out these works. These are extremely labor intensive projects. And in addition, of course, there is a huge increase in capital expenditure. It has a very high employment effect. We have a new scheme for the Northeast, which is abbreviated as PM Divine, which is the PM's development initiative for the Northeast. This is a gap-filling scheme where if something doesn't fit in any existing scheme, Northeastern states can pose those projects to this fund, and this fund will give 100% funding for those projects. And they're livelihood-driven projects. In addition, we have the production-linked incentive schemes, where we expect 60 lakh jobs to be created. Most of them are getting rolled out now one by one. So there are a number of initiatives in this budget, quite apart from what has been done earlier. हम बार-बार देते आ रहे हैं. Actually, sharing of information विदेश से, स्विट्जरलैंड से 2018 के बाद में से शेयरिंग हो रही है. विदेश में जो अकाउंट्स है उनमें कितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस ले आने के लिए. सो वो शेयरिंग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसके ऊपर वी आर वर्किंग एवरी अकाउंट बाय अकाउंट फॉर ब्लैक मनी टू बी ब्रॉट. एंड अनदर थिंग, टुडे द NPAs in the banks are coming down. Banks are getting the money back of those who have fled the country. Having taken the money of the banks and having gone out, वो पैसा जब वापस आ रही है वो भी in a way partly black money ही होता है जी, जिसका टैक्स नहीं भरा, बैंक को पैसा चीट करके चले गए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे के पूरे वो ब्लैक है, उसमें भी ब्लैक मनी है. 260. मैम आनंद हूँ इंडिया टीवी से. हाँ मैम, आपके लिए भी उधर से बहुत वैसे सवाल आ रहे थे. अपोजिशन ने ये कहा है कि जो आपका जो आज बजट है वो डायरेक्शनलेस है और इसमें सिर्फ भविष्य की बात की गई है, तात्कालिक राहत के लिए कुछ नहीं है. और राहुल गांधी ने तो इसे कह दिया जीरो सम बजट कहा है. उन्होंने कहा है कि इसमें सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास, गरीब, युवा, किसान, MSME के लिए कुछ भी नहीं है. तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को और खासतौर से राहुल गांधी को आपका ये बजट समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने राजनीति के चलते ऐसा कह रहे हैं वो लोग? आप दीजिए, मैं भी दूंगी. अरे आनंद प्रश्न पूछे और मैं जवाब नहीं देते, ऐसे थोड़ी ना होती. आई विल गिव आंसर, डोंट वरी. जो बाद में आपने कहा कि राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है. अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं. हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये. निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा. I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. Yeah, no, that's not right. I wish as a leader of the
oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना. I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए. क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है. उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी. इसीलिए हर विषय बोलने से पहले वो महाराष्ट्र और पंजाब में कर दिखाएं फिर बात करें, छत्तीसगढ़ में कर दिखाएं फिर बात करें. Almost irresponsible comments are coming as criticism. I'll take criticism, but not from somebody who has not done his homework. Thank you. 266. मैम अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से. इनकम टैक्स रेजिम को लेकर के सवाल था. आपने बजट में घोषणा की थी न्यू टैक्स रेजिम की, और जो आंकड़े अभी तक आए हैं, कोई बहुत ज्यादा लोगों ने उत्साह उस नए रेजिम के लिए नहीं दिखाया. और दूसरा प्रश्न यह है, जो आपने खुद जिक्र किया कि पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई है, कई जगह पर रोजगार की कमी हुई, भारत में भी उसका असर पड़ा है. तो जो मिडिल क्लास है वो एक राहत की उम्मीद कर रही थी, कुछ राहत मिले इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर. हालांकि आपने कहा कि देखिए पिछले 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया गया, तो क्या इसी को राहत माना जाए कि टैक्स नहीं बढ़ा है? नहीं, मैं सिनिकली जवाब नहीं दूंगी उसको. सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ टैक्स बड़ा नहीं है इसीलिए राहत है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन गिव. There are times when it will have to wait a bit longer. So I'm sorry it didn't happen. But बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना. मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड. मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूँ. इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट. किसान में मिडिल क्लास नहीं है, एमएसएमई में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है. उन सब को राहत दिलाया नहीं है. हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं. सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है. आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है. सो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें प्रश्न पूछने से पहले. Number 9. हाँ, yes, we have been actually Tarun can say something more. There are 2 regimes, one in the corporate sector and one for the one that came last year. So on the corporate also, when the tax rate was reduced from 30 to 22%, a choice was given to the corporates to move to the 22% regime while taking no exemptions. So we have figures for 1920 financial year, which is the assessment year of 2021. 65% of the income has actually shifted to the lower tax regime. So basically, a large number of people are shifting, people who are finding that they don't need exemptions or their exemptions are over, they are moving into that. Let me also mention to you that we have analyzed data for corporates
the average tax rate being given by corporates is about 22% in that year, as against 27, 28, which they were giving when the regime was of 30%. So they got a lot of relief there. And for corporates which are showing profits of more than 500 crores, this taxation rate is close to 20%. So the taxation rate relief which you are talking about in the corporate sector is already there. As far as individuals and HUFs and the others are concerned, where a second option was given in the last year, since the date was extended for filing the returns, we'll be able to analyze the returns this year and know how many people have shifted. But my own anticipation or own analysis says that people with a little higher income, say 15 lakhs, 20 lakhs and above, should have shifted to the new regime, provided they were not taking benefits like housing loan benefits or they were not taking benefits like LTC. But we'll get to know exactly what has happened after we analyze this, and based on what analysis actually comes, will give us a pathway of what action or what steps we need to take in the future. Good afternoon, ma'am. Here downstairs. Sanjay Agarwal from PN News. Ma'am, today you just mentioned about the stock markets. So I was watching that when you announced about digital virtual currency. So that time the cryptocurrency, the stocks went up, and SBI, the largest, banker in India, the stocks went down. And you'd get on a very innovative budget, despite you've given on postal services are going to go to the rural and they're going to get a lot of savings money. So what's the reason? Why is this reaction? Still down, or it went up at the end of the day? I think you have to ask the investors who are doing it, because I don't see any, I don't think we can answer for them as to why they think the digital currencies are not good for banks is a matter of speculation. What is the question on? It went up. Okay. So I think we should have taxed it even more. It would have gone up even more. Number 5. Good evening, ma'am. This is Chetan from Business Today TV, India Today Group. Ma'am, fiscal deficit is pegged at 6.40%. Ma'am, what are the calculations and assumptions based for that number, considering the fact that the geopolitical tensions are rapidly changing and the global macros are also changing rapidly, especially for the crude and other related commodities. So, what is the bet on that number, ma'am? I'll ask Somanathan to give you details, but what do you think it should have been if it's not 6.4? Because you sounded very sure it's 6.4, but it's a question, ma'am. Do you think what are the calculations behind and the assumptions behind that number, ma'am? All right. First of all, the assumption. It is 0.1% increase in fiscal deficit this time, because why couldn't you get that? No, see, first let me answer him first. The calculations which underlie it are given in the budget at a glance document. So it is 6.4 based on our prediction of what the GDP will be and our estimates of revenue and expenditure. Now, somebody said your estimates of revenue are conservative. I think the Revenue Secretary has clarified that they're actually quite realistic. We think they're realistic, but when in doubt, we have chosen to do what we think is definitely likely to happen, rather than repeat the practice of having estimates which are not perhaps considered credible. So we've been tried to keep our estimates realistic based on the factors that you mentioned, that yes, there could be an upside. I mean, maybe revenues can grow more than 14%, but there are all the headwinds that you refer to. There's a federal taper, there's a possible oil price risk, which could all affect the economy. So we think the numbers we have here are likely to be achieved. It's the best estimate of what could be achieved. So I would say there's a very realistic projection of 6.4 as the percentage, given what is likely to happen to GDP, what is likely to happen on the revenue side, and what we have provided on the expenditure side. So they are estimates that they are the best estimates we can produce with a high degree of credibility of being achieved. And I said you had projected 6.8, not 6.9. Yeah. We are being transparent. It is likely to be 6.9. So we have not massaged it to 6.8.
107. मैम मैं नितिन हूँ लोकमत से। हाँ, आपने अभी बोला कि महाराष्ट्र में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार ऐसा क्या काम कर रही है जिससे वो आत्महत्या रुक सके? दूसरा, आपने 80 लाख गरीबों के लिए मकान इस बजट में प्रावधान किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर घर के हर सर पे पक्की छत का वादा किया था, तो ये कब तक पूरा होने वाला है? So the targets for all of these programs have indeed been affected by the pandemic, like all targets in all countries. So barring the setback which occurred during the pandemic, the programs are on course. And if you exclude the delays and disruptions caused in the last 2 years by repeated waves of a pandemic which is not in government's control, broadly, they are on course to achieve the housing targets. किसानों के मामले में स्टेट्स का भी रोल है जी। जब मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ, महाराष्ट्र में सरकार जो कांग्रेस के विषय में बात हुआ, उस संदर्भ में मैं ये कही, एग्रीकल्चर इज स्टेट आल्सो डस इट्स बिजनेस। सो वो मालूम है जी, वो मालूम है, मगर जब हमारे ऊपर ही निशाना साधा करते हैं, जब हम लिस्ट करती हूं कि किसान के लिए हमने क्या 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 कदम उठाए, राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस विषय में, उस संदर्भ में मैं पूछना चाहती थी। मैम मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। जो किसान की बात चली, तो एक छोटा सवाल ये है कि जो अन्य योजना जो शुरू की गई थी उसकी मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है। क्या सरकार बजट में, चूंकि इस पर कुछ कहा नहीं गया, तो क्या माना जाए 31 मार्च को खत्म हो जाएगी कि आगे बढ़ाने पर विचार होगा? और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सिर्फ सोलर पावर के लिए, सोलर पैनल के लिए हम लोगों ने इंक्रीज किया उसका आवंटन, जो कि काफी एम्प्लॉयमेंट देता, आपने कहा भी, तो क्या आने वाले दिनों में और किसी सेक्टर पर विचार होने की संभावना माने? अभी ही शुरू हुआ है PLI और अच्छा रिस्पांस मिल रही है उसका। 14 सेक्टर्स का PLI है। अभी बढ़ाने के विषय में कुछ सोच नहीं है, मगर जो अनाउंस हुआ है वो तो फुली इंप्लीमेंट हो, उसके ऊपर ध्यान हम देंगे। अभी अनाउंस करने के लिए बजट में मैंने जो घोषणा की उतना ही है, उससे ज्यादा मैं अभी बोलने का कुछ विषय नहीं है। 61. Ma'am, good evening. This is Santosh Thakur. Ma'am, how much you expect from 5G spectrum auctioning? Even if I can speculate on it, this will be the day to do it. I won't be able to do it. Number 42. Madam FM, this is Shrimi Chaudhary from Economic Times. I needed two clarity. One, on the virtual currency tax provision, whether it is prospective or going to be applicable from the next financial year. And second clarity I needed on the part of, the capping of the surcharge on the long-term capital gains payable on the capital asset at 15%. If you could elaborate a bit on that. The answer to your first question is 1st April. And the second part was... surcharge. Surcharge. Yeah. The surcharge, we have brought in two provisions. One, the surcharge on companies is today 15%. But in some cases, in some contracts, there is a need for more than one company to come together to bid for that particular project as a consortium. So when they form a consortium, it is called association of persons. So the surcharge on them, depending on their income, goes up to 37%. So now that will also be capped at 15% as much as a company surcharge maximum is there. The second part today, the second part of your the surcharge is that the surcharge on listed shares on which STT is paid is today limited to 15%
On other capital gains also, we are now bringing it at par with this 15%, so it will be 15% for them. So this will be a big relief for the startup community. 53. Yeah, good evening, ma'am. Siddharth from Bloomberg. I just wanted to ask you a steep hike in capital expenditure and borrowing of 15 lakh crores. So are we safely assuming that private investment will not happen in the next financial year also? Safely assuming? Will not happen. Private investment will not happen in the next financial year because it is the government which is pushing the trigger. No, I've actually mentioned it in my speech that private investment will have to pick up and it will come. I used some words, I didn't use exactly what I'm saying now, but I did recognize that private investment, for them to come forward, it is very clear that the public investment will have to be increased, and we've increased with an expectation that they will also come forward. I'm being reminded by the CA that for private investment to be crowded in. Number 70. Ma'am, I'm Mukesh. I work for Newsrise. Just wanted to know about the size of the green bond, the currency it will be issued in, and who will be the users and how they'll use it. See, first of all, the green bonds are part of the overall borrowings of the central government. These are not additional; these are within that limit. Number two, they will be in the coming days specific sectors or the projects wherein this money will be used. Third, the expectation is that there are a set of investors who would like to put in money for projects which are green, which leads to less carbon consumption. So for that class of investor, this is the future. So we have to build that market. In that attempt, the first step will be taken in the year 22-23. So you don't have the size of it will be issued locally before the global bond. At this point of time, it is in the domestic market, and we are in a conversation with Reserve Bank of India and with the market participants, and the size, etc., will be determined in the coming weeks. I just wanted to add, because I was watching some commentary, I just wanted to make it very clear. There is no connection between the size of our capital expenditure and the issuance or non-issuance of any green bond. So whatever the size of the green bond issue may be, this is the budget and this is the total amount of borrowing. It is part of this borrowing that may come as a green bond. It is not that the green bond is a requirement or a conditionality for this budget to be executed and for the capital expenditure to happen. I just wanted to clarify that. Yes, but it will be part of the total market borrowings which have been projected in this budget of 11,58,700. So it is not over and above that. And this 1158 is not dependent on the issuance of a green. They are two separate transactions which will happen, but they are within this limit. And there is no conditionality about if this green bond doesn't get issued, then the capital expenditure may not happen. No, there is no such linkage. Just 1 minute, madam. On the Shrimi's question on the taxation, I want to clarify, it is still taxable as of today. It is not that it will become taxable from 1st of April. So I just wanted to clarify that the message should not go that it is not taxable today and becomes taxable from 1st of April. It is taxable today, but a specific regime has been brought in by the FM, which will be applicable from 1st of April. So that is another question, so that we can answer when you come to my office. I'll explain to you in detail. Number 26. Just one clarification. There is a mention of effective capital expenditure of 10.68 crore, and what I found out that it includes the expenditure, some of the expenditure towards NREGA also. So just want to understand the reason, and does that include the long-term loan given to states, like 1 lakh crore? Yes, it includes the 1 lakh capital expenditure loan given to states, because that is exclusively for capital expenditure. The assistance given to states is for capital expenditure alone in the form of a 50-year interest-free loan. And again, let me clarify, it was mentioned in the speech, but it perhaps has not been noticed in some quarters. The
it is in addition to the 4% of GDP normal borrowing ceiling which states will be allowed. So that 4% remains, 3.5 unconditional, 0.5 tied to power reforms. This 1 lakh crore is over and above that 4%. So it is additional capital expenditure money to the states. It is part of the 7.5 lakh crore which has been provided for capital expenditure. You had another point, I'm sorry. NREGA. So NREGA is classified in the government accounting system as grant in aid for capital expenditure because it is expected that some assets are created, but it is because you seem to have some discomfort with that, and that is why we have footnoted it very transparently as to what amount of it is NREGA. So if you feel that NREGA is not a very productive expenditure, if that is your opinion, then we have allowed you to make your own calculations by giving those figures separately. So we have said provisions for also includes allocations under demand-related scheme, which would vary based on demand. So that has been indicated transparently. It is for you to draw your own conclusions. 110. मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ CNBC आवाज से। जो देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सबसे ज़्यादा जॉब देता है। उम्मीद की जा रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से कि बहुत सारे रॉ मटेरियल जो खासतौर से इंपोर्ट होते हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी में कट होगी। एक दो चीज़ों में जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी कट हुआ है और कुछ स्टील के स्क्रैप का आपने 1 साल और ड्यूटी कट को बढ़ाया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम जैसी चीज़ें थी जो कि इंपोर्ट होती हैं और सस्ती पड़ती हैं। उन पर इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं हुआ, तो क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो उम्मीदें थी कि एक्सपोर्ट्स को लेकर जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो उनकी खत्म होती जा रही है, उसको लेकर सरकार ने इस बजट में क्या विचार किया था? मैं आइटम वाइज आपको जवाब नहीं दे रही हूं, मगर ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग हैज टू बी सपोर्टेड एंड फॉर दैट पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जो आइटम हमारी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स है हमारे देश में उसका जरूरत है, उसके ऊपर हमने कुछ भी टैक्स बढ़ाया नहीं, इंपोर्ट को अलग करते हुए। एक तरफा हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं क्योंकि भारत में जिन जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रही है वो इंपोर्ट के नाते अलग करना सही नहीं है, मगर जिसका उत्पादन इधर नहीं है मगर वो रॉ मटेरियल है क्योंकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का वो आवश्यक है, फिर उसका इंपोर्ट अलग कर रहे हैं। वो ब्रॉड प्रिंसिपल है। उसी ब्रॉड प्रिंसिपल को हम आइटम वाइज देखने के बाद ही बजट में प्रावधान कर रहे हैं। इसीलिए आप इस बार जो मैं स्पीच में आइटम लिस्ट किया सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए ये नहीं समझना कि सिर्फ उन आइटम्स को दे रहे हैं बाकी सबको नहीं दे रहे हैं। पिछले बार जो दिया गया वो कंटिन्यू होती है इस बार। 120. Ma'am, I'm Nikunj Ori from Business Standard. Ma'am, there's been an allocation of 52,000 crore for Air India. Is this over and above what was sought in the supplementary demand for grants, which was 62,000 crore? And ma'am, there's been nominal GDP estimate has been 11.1. So could you please help us with what the inflation estimate is, because economic survey projects 8 to 8.5 as the real growth. And lastly, ma'am, pardon me for asking you a previous question. Last year, in the last year's budget, there was about 1 lakh crore which was expected from government's divestment in public shares in public sector banks and financial institutions. So that estimate has not been shared for this year as well as next year. So if you could please clarify. We've just had the discussion before coming here. Somnathan on the 11 nominal GDP and other things. I'll come back to this. Okay. First, on your question of 52,000 crores, that was very much part of the supplementary estimates. In the supplementary estimates, there were two kinds of payments made to Air India. One kind related to the takeover of certain residual actual assets of Air India which have not been transferred. For example, their buildings, their land, they have some very valuable real estate and other assets. So those are part of the 62 something, they are not part of the 52. Those are actual capital assets which we retain. The remainder, which is actually capital in our accounting books, because it is an infusion of funds into Air India, but actually produces no value, is this element which has been separately quantified and transparently indicated to you. So
The apparent capital expenditure in our numbers is 6.03, but we are telling you that 51 something of it is actually this. So it doesn't represent actual, multiplier creating capital expenditure in the economy. So that's the clarification on that. Your second point was on 11%. See, we had a very difficult job of trying to estimate the nominal GDP. Remember, what the economic survey has given you is the real GDP growth, which they have estimated at 8 to 8.5%. The first difficulty we have is that the current year's GDP, which we have taken here from the Central Statistical Organization, which came on January the 7th, is essentially an estimate which is pre-Omicron in its construction. I mean, the inputs that went, because they are a statistical organization, they don't make guesses. They went with the trends they had on the date they made the estimation, and they did not have the Omicron trends with them. So it's possible that the base that we work on an incremental basis. We take this year's nominal, add a percentage for next year's nominal. So in adding to next year's nominal, first, there is a slight discount we have made for this year's base. And then we have assumed that real growth would be somewhere in the range that the economists have given us. Could be a little lower also because of this base effect. And then we are taking the deflator. Remember, here it is not the CPI which we use for the construction of our GDP number. And even in the current year, we have a 17.6% nominal growth with a real growth in the range of 9%. Since there's a very high deflator this year, there is a possibility that next year's deflator will have a base effect which will make it lower. So taking all these factors into account, we have come to a number which is effectively, which comes to 258 lakh crores as the nominal GDP estimate. Your third point? I think that has, we do not have, I don't think we have ever said that out of 175, 1 lakh is for banks. No, it was, no, that was it was an entry last time because a split was done. I think the split has been done away with because it really doesn't matter, where you bring this money from. I mean, money is fungible, so it comes from this or that. Also, coming back to the question that came earlier from your neighbor on the, I think I have now understood better why she's saying what she said. So let me try to give you the answer. So if I'm understanding you correctly, but let me give you the last year's budget estimate for the fiscal deficit in absolute numbers was 15,06,000 crores. The projected budget estimate is now 16,61,000 crores. That is an increase of about 1.5 lakh crores in the amount of the fiscal deficit. If you look at the market borrowing estimates, they were 9,67,000 crores in last year's budget estimates. They have gone up by about 1.9 lakh crores in this year's budget estimates. So there is actually not much of an incongruity between the increase in the deficit and the increase in the market borrowing. What may be giving you this impression is that in this year's revised estimates, the market borrowings are lower than in the budget estimate because of an unexpected increase in small savings. So this year's small savings have been unexpectedly buoyant, perhaps because interest rates on deposits went down and these rates remained constant, but that could very easily reverse with the interest rate cycle reversing now. So we have remained, our small savings projections are based on last year's budget estimates, which were 391, they are now 425. So we have projected realistically what we expect as small savings in a normal growth without the unexpected increase that happened in the current year. So it's 1.9 growth in market borrowing against 1.5 lakh growth in the deficit. Very reasonable in my opinion. Number 10. Good evening, ma'am. Ma'am, Janani from Bloomberg Quint here. Ma'am, you had mentioned in the budget speech that the Special Economic Zone Act would be replaced by a new legislation. If I could ask, what would be the difference from the current SEZ Act, and what is the intention behind the same, ma'am? What is the? The replacement for the SEZ Act, the legislation that will replace the SEZ Act, was mentioned in the budget speech today. That's right. If I could ask, ma'am, what would be different from the SEZ Act, that is, and what is the intention behind the same? Well, you will have to wait for the department to work out on the SEZ Acts, and I've already mentioned broadly that it will help also for the states to be able to participate better in the SEZs. One of the broad objectives, but then the department is working on it and it will come through sooner. With your permission, ma'am, can we close now because you have to go for another appointment?
Thank you very much, friends. Thank you very much, ma'am. बजट बुलेटिन में बजट पर चर्चा में आपका फिर स्वागत है और हम आपको बता दें कि कुछ न्यूज़ है स्टॉक मार्केट से. The domestic stock markets, the Sensex at Bombay Stock Exchange and the Nifty at the National Stock Exchange climbed more than 1%. Both indices gained amid positive cues from global share markets. The Sensex regained the 58,500 mark. The Nifty reclaimed the 17,500 level. The Sensex jumped 848 points or 1.46% to settle at 58,863. Nifty also surged 237 points or 1.37% to finish at 17,577. In the broader market at the BSE, the mid-cap surged 1.08% and the small-cap index climbed 0.92%. So the market's clearly giving a thumbs up to the budget. Absolutely. We'll have more experts to discuss the market in greater depth. इनफैक्ट रवि कल भी मार्केट बढ़ी थी तो शायद कल से एक कहें कि पॉजिटिव एंटिसिपेशन थी बाज़ार में और वही हमने देखा है कि आज भी उसका एंडोर्समेंट हुआ है. बाज़ार ने थम्स अप दिया है मार्केट को. मार्केट ने थम्स अप दिया है बजट को. बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनको. और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर We are waiting for the next expert to join, but the press conference that was just on clarified on a lot of points that the press had about the various aspects about borrowing and fiscal deficit, and the entire team of the finance ministry was answering that. And the sovereign green bond was a question that we had prior to the press conference. One of the listeners had asked that, and the Secretary clarified there that the sovereign green bond is basically part of the total borrowing of the government. And उन्होंने ये कहा कि उसका कोई कनेक्शन बजट से नहीं है. जो बजट में खर्चा होना है, जो भी प्रावधान है वो वहीं के वहीं रहेंगे. And green bond is a additional, So it will be part of the overall borrowing of the government, and the money will be used that will not affect the expenditure of the government. We are now live with TV Narendran, CII President. Mr. Narendran, welcome to All India Radio. Thank you. The one thing that you've been talking about before the budget also, that the budget needs to spend big on infrastructure and do more to boost consumption. Are you happy with what has happened in this budget? Definitely. I think on infrastructure, the government has reiterated its focus, has increased the allocation, and that's, I think, a great force multiplier to get the economy back on track. I think the economy is already heading back on track, but we need to sustain this growth for the next few years at least. And I think the focus on infrastructure builds that situation for us. It creates long-term demand and helps the cost competitiveness of the industry. On the consumption side, the government's support to the MSME sector, to the high-contact sectors which have suffered by the extension, by extending the credit guarantee scheme. I think these are initiatives which helps, but fundamentally, more spend on infrastructure by the government, hopefully followed by more spend on investment by the private sector, will help create more jobs and bring consumption back to the economy. So, Mr. Narendran, ये दूसरा साल है जब बजट कहा जा रहा है कि इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट ईयर्स बजट. इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले वर्ष भी बहुत जोर दिया गया था और 35% के करीब ही उछाल आया था. आपको लगता है कि अब ये जो सेकेंड ईयर रनिंग हम ये देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, उसके कारण आपको लगता है कि जो जॉब क्रिएशन का और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वापस एक कहें कि स्पीड पकड़ने का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है? जरूर होगा, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, आप देखिए तो बाकी जो देशों है दे हैव हैड इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ. इफ यू लुक एट चाइना, इफ यू लुक एट सम ऑफ द अदर इकोनॉमीज, उन लोग का पहले इन्वेस्टमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, उसके बाद private sector investment came and consumption followed. Whereas India has traditionally been consumption-led economy. So this change is a welcome change. And ये तो 1-2 साल से नहीं होता है. I think it has to go on for a long time because हम लोग का infrastructure deficit है. India में जो logistics cost है, आप देखिए तो we are about 13 to 15% of GDP, whereas other economies are at 6 to 8% of GDP. So for these reasons, infrastructure focus जो है, we have to continue for many years, not just for 1 or 2 budgets. दूसरा बात यह है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले ये पैंडेमिक के बाद कुछ सेक्टर का जरूर डिफिकल्टीज है. दे आर स्ट्रगलिंग टू रिकवर, बट मेनी सेक्टर्स लाइक मेटल्स एक्सेट्रा आर सीइंग दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज हाई, डिमांड इज स्ट्रांग, प्रॉफिटेबिलिटी इज बेटर.
और जो बैलेंस शीट था उनका वो भी डीलेवरेज हुआ है. तो इसी कारण इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी कमिंग बैक. इफ यू लुक एट द मेटल्स सेक्टर, ऑलरेडी ऑल द मेजर प्लेयर्स हैव अनाउंस्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड कैपेसिटी. केमिकल्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज इन्वेस्टमेंट हैपनिंग. If you look at electronics manufacturing, thanks to PLI and many other schemes, इन्वेस्टमेंट आ रहा है. और वेयरहाउसिंग सोल्यूशन, सप्लाई चेन्स, ये सब में भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है. तो देख रहे हैं कि बहुत कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है. उम्मीद है कि और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हम लोग देखे जाएगा इन द नेक्स्ट ईयर और सो. Mr. Narendran, you're hopeful for the private sector investment to come in. Private sector investment is generally predicated on consumer demand that seems to be there. And do you see that consumer demand also picking up? And there's another thing that you had been mentioning in your pre-budget interactions was about the expenditure on MG Narega. I don't see MG Narega mentioned in this budget. Is that some expectation that you had? So what we had asked for is, while the focus on investment is there, we should also focus on consumption so that the fragility which we saw in consumption should be addressed. And Manrega schemes, etc., address incomes at the lowest levels of society and helps build the sentiment on consumption. Because the job situation has not been so great for the last couple of years thanks to the pandemic for many sectors. Many people's incomes have shrunk. And on top of that, the health expenditure has gone up. So that's why we felt that there has to be support in consumption. We are seeing some support. Of course, this has to be further supported by more job creation by both private sector and government. So I think the actions are in the right direction. Of course, we have to see that the expenditure that is planned is executed on the ground and translates to money flowing into households, and I think that is what will trigger the consumption. In terms of investment, जो आप बोल रहे हैं, see demand, there are two types of demand. One is the B2B demand and one is the B2C demand. So if you look at the sectors, private sector में जहाँ investment ज़्यादा होता है, it is, if you see even 10 years back का data, a lot of 70-80% of the investment came from three sectors. One is power, two is metals, and three is chemicals. तो इसमें अब देखिए तो power has changed totally in the last 10 years. Those days it was more thermal power plants. Now it's more on green energy. But metals and chemicals have already come back to the investment cycle. So that's why we are confident that the investments will follow. The only sector where investments is yet to pick up, will take maybe another year, is automobile. Because other consumer demand has struggled in some areas, but in some areas it's because of the semiconductor issues. But we are hoping that during this year, auto demand will also come back. Semiconductor issues will ease out. And the auto value chain is long, so a lot of MSMEs will benefit from that. So we are hoping to see that happen during this year. नरेंद्रन जी, आप क्या सोचते हैं जो नई कंपनीज हैं उनके लिए जो प्रावधान आए हैं स्टार्टअप्स के लिए, वो कितना प्रोत्साहन देंगे? वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के लिए जो अवधि है उसको 2 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है. एग्जिट पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना भी कितना इम्पोर्टेंट है एनकरेज करने के लिए नई कंपनीज को? So I think startup जो ecosystem है, they are in a very dynamic environment. उसमें lot of companies get created, some don't survive. So we have to create conditions where the innovation, the disruption, all that happens very fast. And I think some of the moves are in that direction. Startup जो CI का startup members है, उन लोग का ये भी एक point था कि we have to create conditions so that more and more startups list in India. They had also requested for some relief on ESOPs, etc., so that they can reward their employees well. But I think the government is taking steps, and most important step government has taken and continues to take is that ये जो digital infrastructure है, not just physical infrastructure, digital infrastructure पर भी government का ध्यान है. और ये budget में भी the finance minister talked about optical fiber connectivity to all the villages, creating many platforms for citizen and government interface, B2B interface. तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से मोर एंड मोर स्टार्टअप्स विल बी क्रिएटेड इन इंडिया. एंड आप देखिए तो पिछले 2-3 साल में ही वी आर नाउ हैविंग ऑलमोस्ट, इनफैक्ट लास्ट ईयर वी हैड मोर देन 40 यूनिकॉर्न्स क्रिएटेड. So I think it's a good time. We need more and more job creators in India, and startups are creating jobs. Mr. Narendran, if you look at the deficit numbers, 6.9% this year, 6.4% next year, there's one thing that industry does worry about, although the last few years have been benign as far as interest rates have been concerned. Are you worried about increase in the interest rates? Well, that is inevitable because I think a lot of the low interest rates were there to help the world economy recover.
and in India also we had the benefit of global low interest rates. But as inflation picks up, interest rates will go up. The Fed has announced that in the US. I think corporates have been planning for that. If you look at many capital-intensive sectors, the corporates have been deleveraging, so that if there is a sudden rise in interest rates, they are less impacted. I think impact which we need to look out for is how much of money flows, particularly for the startup ecosystem and other entrepreneurial initiatives in India, are affected by money going back to the US from emerging markets as interest rates in US goes up. But we are also seeing many companies who are very cash rich. If you look at Google or a Facebook or Microsoft and Amazon and all of them, they're all looking at investing in India because of the opportunities in India. Ye nahi ki they are portfolio investors. They are looking at the long-term demand in India. So we are positive that that kind of investment will continue to flow into India. So thank you so much, Mr. Narendran, इस bulletin में शामिल होने के लिए. Thank you. Thank you very much. That was the president of CII, Mr. TV Narendran, who seemed to be satisfied with the efforts of the budget in terms of spending big on infrastructure and also in terms of boosting the consumption. Absolutely. और उन्होंने कहा कि इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, डिमांड क्रिएट होगी और उनको पूरी आशा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी बड़े पैमाने पर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के बल पर. और कंटिन्यूएशन बजट कहा है सभी ने, और जो कि एक बहुत ही एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ कहें कि सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि कंटिन्यूएशन बजट आएगा. इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बल था 35% के करीब उछाल का, रवि, वो भी उन्होंने कंटिन्यू करा है गवर्नमेंट ने. द बैलेंस हैज़ बिन डन वेरी वेल बिकॉज द फिस्कल डेफिसिट उसको भी थोड़ा कम किया गया है, 6.4% पे आ गया है. पिछले साल 6.8% बजटेड था, अब रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो है 6.9% का. सो ग्रेजुअल ग्लाइड पाथ, ये देखते हुए कि कोविड की सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, वेलफेयर पर भी आपको खर्च करना है, हर तरह का आपको प्रोत्साहन भी देना है. जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पहले 1 साल के लिए शुरू हुई और उसके बाद उसको एक्सटेंड करते करते अब हम देख रहे हैं कि अभी भी वो ज़रूरत है उसकी, और उसको ज़रूरत अनुसार सरकार ने उसका दायरा भी बढ़ाया है. 50,000 crores has been added to that. In fact, the concept of Amrit Kal, which goes from the 75th year of the Amrit Mahotsav as we are celebrating right now till the 100th year of our independence, is something, the goals that the budget document seems to be talking about is focusing on growth and all-inclusive welfare, on promoting technology-enabled development. We saw that setting up of digital banking units in 75 districts in India. We also spoke about the digital currency that the RBI would be introducing next year, and energy transition. So we need to be net zero by 2070, and there are a lot of things. The sovereign green bonds are part of that initiative. There are a lot of other things also that the budget is doing in this, and the virtuous cycle starting from private investment. We just spoke to the president of CII, who spoke about the private investment clearly starting in some areas like metals and chemicals and soon in powers, and automobile, he says, would probably take a year or so. This is to be crowded in by public capital investment. And you started off by saying that capital spending is big time back in the budget. It was there in the last budget as well. This budget also, that capital spending is clearly visible. और उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की भी बात की, जो एक बहुत ही कहें कि प्रोत्साहन देने वाली स्कीम है सरकार की, टारगेटेड स्कीम है स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए. 14 सेक्टर्स में ये ऑलरेडी लागू की जा चुकी है और आज 16 पार के उसमें दिशा में भी PLI का एक्सपेंशन हुआ है. और अब हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं हरवीर सिंह जी, जो हैं कृषि विशेषज्ञ. आपका बहुत बहुत स्वागत हरवीर जी. हरवीर जी, आज बजट 2022 आया है. कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इस बजट को, और खासकर कृषि क्षेत्र की दृष्टि से क्या कहेंगे आप? क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आया है बजट? ये मेरे ख्याल से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने की दिशा में, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने के लिए उसमें कई तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको एक तरीके से सस्टेन करने के लिए जो भी ज़रूरी हो सकता था वो सारे उपाय किए गए हैं. सो जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी का किस तरह से स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने की बात कही गई है, और ऑलरेडी हो भी रहा है इस्तेमाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे इकोनॉमी के हर पहलू पे एक अपना प्रभाव डाल रही है. सो कृषि पर कैसे प्रभाव डाल रही है, अगर आप स्पेसिफिकली बताएं. देख लीजिए, इसमें IT का यूज़ बढ़ाने की बातें हैं, जो एग्रीटेक
जो है जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें ड्रोन हो या सेंसर्स हो या एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन हो, लैंड रिकॉर्ड्स का, और मैकेनाइजेशन हो, प्लस जो असेसमेंट है, क्रॉप असेसमेंट है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ये सब के लिए उस तरीके का कदम है। प्लस जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं या जो एग्रीटेक कंपनीज़ हैं, उनको कैसे फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जा सकता है या उनके लिए रिसोर्सेज मुहैया कैसे कराए जाएं जिससे कि इनका उपयोग बढ़े, और जो उसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें उसमें निहित हैं। Harveer Singh ji, in terms of allocation, last year the allocation for the Agriculture and Farmer Welfare Ministry was 1.31 trillion, that is 1.31 lakh crores, and this year it is 1.32 trillion, marginal increase. Is that enough? You think there should be more have been allocated for agriculture? Or a lot of things have been done that Sonu also mentioned, like Kisan drones, high-tech services, and something very interesting, 2023, they're going to look at calling it the International Year of Millets and the focus on millets. So talk to us about both the allocation and the millets that the government is looking for. Actually, as I already said, that it is basically to keep the things move as already moving. And you mentioned the amount. It is almost the same, basically. And major part of this expenditure is going Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. So it is almost same amount last year it was. Then next is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The allocation is nearby. And even on second number it comes the Kisan Credit Card intervention amount, which goes to the farmer in terms of just they get the loan at a lower rate of 4%, sometimes 3%. And the states are, some states are supporting even at without interest also. So these four major heads are there. And one thing is that agricultural research and education. But allocation for the agriculture research and education department is almost same as it was last year. So basically there must have been some capital expenditure, but that is very minuscule, very small amount, less than 100 crore is there as capital expenditure in the budget. So all these other intervention are through the private sector, public-private partnership, or to incentivize them, to provide them credit, or to facilitate ease of doing business. As you said, that International Year of Millet, because millet is very good food. We'll interrupt you, Harveer ji. We've been getting calls, rather questions from our listeners who have been sending it on WhatsApp on the number 8700014411. So you can send in any questions that you have on agriculture or related topics, or even the budget in general. Our experts will answer it live. We have a question that is coming in from Amit Ponikar from Nagpur, who is asking Harveer ji, is there anything for fisheries in this budget? Specifically for yes, fisheries. There is a separate department of fisheries. Now we have Ministry of Fisheries, Dairy, and definitely there is an allocation for fisheries. And there is already a Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, which is the scheme is for just to encourage the farmers to produce fisheries more and to provide them incentives on that front. हरवीर जी, बजट में कहा गया है कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू की जाएगी। नदी संपर्क परियोजनाओं से क्या फ़ायदा होता है खेती के लिए भी, और उस क्षेत्र में हमें बता सकते हैं? देखिए, जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो एक तो हमारा अभी भी जो कृषि योग्य भूमि है देश में, उसमें आधे से ज़्यादा अभी भी बारिश के ऊपर निर्भर है। हमारा जो नेट इरिगेटेड जिसे हम बोलते हैं, उससे भी नीचे है, आधे से भी नीचे है। तो उसमें हमें डैम्स और उस तरीके का जो नदियों का पानी है उसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। तो केन बेतवा ये नदियाँ बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा और उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पर आती हैं। तो उसमें इनका यह है कि इनको जोड़ करके वहाँ पर हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, पावर जनरेशन कर सकते हैं, और एक बड़े हिस्से को जो हम पीने के पानी की ज़रूरत है, बड़ी आबादी को पानी भी मुहैया करा सकते हैं। ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना, और इसमें जो 44,000 करोड़ का ये एलोकेशन है, इस बार के लिए एनुअल एलोकेशन अलग से किया गया है। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। एक इसके साथ ही क्योंकि इसके ज़्यादातर क्लियरेंसेज हो चुके हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस एंड ऑल, सो
इसके साथ कुछ और दूसरी नदियों को जोड़ने के लिए ड्राफ्ट जो रिपोर्ट्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने का भी अनाउंसमेंट किया गया, खासतौर से दक्षिण की नदियां हैं उसमें और पश्चिम की नदियां हैं। तो ये लगता है कि ये केन बेतवा प्रोजेक्ट जो हमें नतीजे मिलेंगे उसको फिर रेप्लिकेट किया जा सकता है, और जो पानी एक जगह नदी में बह करके आगे चला जाता है तो वो उसको हम कैसे दूसरे इलाके में ले जा करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं इन तीनों कामों के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और बिजली उत्पादन के लिए। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजीव जी, आज बजट की डिक्लेरेशन हुई और उसके बाद हमने देखा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है शेयर बाजार ने। निफ्टी में 848 अंकों का उछाल आया है। कैसे देखते हैं बजट को मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट्स आपको लगता है जिन्होंने उत्साहित किया होगा निवेशकों को? देखिए, बजट में अगर आप देखेंगे मार्केट स्पेसिफिक कोई ऐसा कैपिटल मार्केट रिलेटेड कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था, पर कि कोई जो कंटिन्यूशन पिछले साल बजट की थी वैसा ही कोई चेंज नहीं है, और मार्केट को सर्टेनिटी ज्यादा पसंद होती है। तो एक कारण जो मार्केट के उत्साहित होने का था कि एक तो कोई ऐसा कोई टैक्स के साथ टिंकरिंग नहीं हुई यहाँ तक। दूसरा, जो केपेक्स की जो नंबर्स हैं सरकार ने दिए हैं, वो लगता है कि जो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे कि लार्जली गवर्नमेंट लेड एक्सपेंडिचर ने ही इकोनॉमी को संभाल के रखा हुआ है, तो वो एक जो नंबर है वो और बढ़ के आया। तो वो एक दूसरी चीज रही है जिसने बाजार को, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं और काफी लंबे जो सप्लाई चेन में जो कंपनीज आती हैं उनके स्टॉक्स को वो करा। तीसरा जो एक जो बहुत डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि लॉट ऑफ मनी हैड स्टार्टेड गोइंग टू क्रिप्टो करेंसी, ये इधर जाना उधर जाना, और वो थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट उधर से जो पैसा जो है वो डाइवर्ट जो जा रहा था वो शायद उतना नहीं जाएगा, एंड दैट्स मे बी नॉट वेरी डायरेक्ट रिलेटेड थिंग, बट वो भी एक कारण रहा कि जिससे बाजार को लगा कि शायद थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एक हमारे श्रोता ने व्हाट्सएप द्वारा हमें एक प्रश्न भेजा था, तो वो ये जानना चाहते थे कि बाज़ारों पर आने वाले दिनों में भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बजट का, और क्या लगता है आपको कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे स्टॉक मार्केट के चलते, स्टॉक मार्केट में बेनिफिट करेंगे इस बजट के चलते, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ कोई टैक्सेशन वगैरह में या इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा कुछ कस्टम्स वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बाजार नॉर्मली देखा जाता है कि बजट के एक दिन या 2 दिन बाद बजट को दरकिनार साइड में कर देता है कि क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन पे चीजें चली जाती हैं, फिर वही ग्लोबल फ्लोज, यूएस फेड क्या करेगा, अर्निंग्स कैसी रहेंगी, उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करता है। तो अब यूएस फेड की टेपरिंग होनी है और हेडविंड्स इन टर्म्स ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं, अब उन चीजों पे थोड़ा सा बाजार का जो है ध्यान जाना शुरू होगा अब, और उस वहां कैसा न्यूज फ्लो इमर्ज करता है उस पर बाजार का रुख डिपेंड करेगा। बट लार्जली अगर आप देखेंगे कि इतने टाइम से एफआई की सेलिंग भी हो रही है तो बहुत ज्यादा बाजार घट नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज अ काउंटरवेलिंग फोर्स जो इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ गई है। वो अगर आप देखें तो उसके चलते लगता है कि बाजार इंडेक्स लेवल पे एक रेंज बाउंड मोड में रह सकता है आने वाले समय में। जहां तक सेक्टर्स की बात करी तो Rajiv, we'll have to interrupt you because the Finance Minister Nirmala Sitharaman is currently going live with an interview to Doordarshan, to Sunset TV rather. So let's cut across to the interview of the Finance Minister after the budget presentation. कर रहे थे इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की इस बजट को, प्रधानमंत्री ने पीपल फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। आपकी और आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स। लेकिन हमने देखा जब आप 2019 में जब आप आए तो आपने बही खाता बजट की शुरुआत की। फिर 2020 में आपने इतिहास का सबसे बड़ा लंबा बजट भाषण दिया, उसके लिए भी आपका नाम आया। 2021 में फिर आपने देश को दिया पहला पेपरलेस बजट। तो जब 2022 का बजट आप बना रही थी, आपके जहन में क्या था? इस बजट की आत्मा आपके लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो।
देखिए, इस साल के बजट वो पैंडेमिक के वजह से इकोनॉमी में जितनी भी घाटा हुआ उसको ठीक करने के लिए पिछले साल के बजट हमने प्लान की, जिसके दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ाया और इकोनॉमिक रिवाइवल के पक्का रास्ता पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब संपत्ति रोड हो, इनलैंड वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या सड़क हो, ये सब बनाने में आर्थिक सुधार का अच्छा रास्ता है। ये हमारा मान्यता था पिछले बजट में, मगर पिछले बजट प्रेजेंट करने के तुरंत बाद आया सेकेंड वेव, जो भयानक वेव था, किसी का असेसमेंट में नहीं था। सो उस परिस्थिति में हमने अप्रैल के बाद भी एक और अनाउंसमेंट किया। कुल मिलाकर के 21 का बजट और अप्रैल के बाद में वाला अनाउंसमेंट दोनों इकट्ठा जब आप देखेंगे, इकोनॉमी का आज तक का रिवाइवल का वो था नींव। और उस बजट में हमने पॉलिसी बहुत अनाउंस भी किए, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन पहले बार इस देश में खुलेआम ऑनेस्ट एडमिशन था कि बहुत सारे विषय में सरकार का बिजनेस करना उचित नहीं है, वो बिजनेस चलाना है, बंद नहीं होना। इसीलिए उसमें इक्विटी कैपिटल ले आने के लिए रास्ता ये था कि प्राइवेटाइज करो। उस पॉलिसी भी उस बजट में अनाउंस किया गया और उसके बाद बजट मतलब जो बोला गया है उतना ही है, उससे नीचे या उससे आगे कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी और बजट का स्टेटमेंट में ऑथेंटिसिटी ले आए, वो सब इस बजट में कंटिन्यूड है। मैं जोकलरली एक बात बोली कि क्रिकेट में शुरुआत में जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन करता है रन, फिर अंत में भी क्लोजिंग में जितने चक्का मार सकते हो मारो, मगर बीच में वो स्वेट ओवर्स बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। स्टेडीली खेलते रहो, कोई बदलाव उतल पुतल और ऊपर नीचे ना करो, स्टेडी पॉलिसी रहना चाहिए। वो है इस बजट में स्टेडीनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी। टैक्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं की और ऊपर से अगले आने वाले 25 इयर्स के लिए फ्यूचरिस्टिक एक आधारशिला रखा गया। Just taking up from where Ajay asked you, so last year in the run-up to the budget, you had introduced a very interesting moniker. You said this is a once in 100-year budget. So this year, given your T20 analogy, how would you characterize this year's budget? Actually, I'll go back to say that that time when I made that statement, I said that this budget is being prepared at a time that once in 100 years pandemic has hit us and we are preparing this budget. But it so turned out that everybody started saying you're preparing a once in a year budget. No, budget was being prepared in a once in 100-year situation. But never mind. That stuck to me in a way. But this budget is a budget for continuity. It's certainly a budget for sustaining the stimulus which has been given. We want to honestly undertake the public investment in asset creation, public infrastructure expenditure, and only through this we feel that there will be a crowding in of private investments. So the virtuous cycle can happen only by the government leading the way as a 50-year interest-free grant, and that's not going to be cutting down on their borrowing. It's over and above the borrowing limit that has been given to them, and therefore it's not a reduction in what they have. On the contrary, it's definitely much, much more than what has been given to them through the Finance Commission.
Can I do a quick follow-up? You talked about how this should catalyze, the public investment should catalyze private investment. But we do know for the last more than 10 years, this has not been happening. So do you think this is the turning point where India Inc. will rediscover its mojo? I think so, and I can already see signals in that direction, because I think there are many other compulsion points, if I can use that expression. This has not been happening. So do you think this is the turning point where India Inc. will rediscover its mojo? From the front, we are spending, no doubt. We want to have private investment crowding in, but it's also a time where world over there's a lot of churning happening in the way manufacturing sector or service sector has formulated its business. Business models are changing. There's a lot of artificial intelligence coming in. Robotics is taking up. Of course, in a country like India where demographic dividend exists, and also because you have a reasonable number of good graduates, trained manpower, which can be upskilled also, there has to be a good blend of robotics, artificial intelligence, and also looking at employing people. So this is the time when industry, be it in manufacturing or services, there should be a reset, and I think industry seized of it. तो मैम, अभी तक आपने ये कहा कि ये जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है. आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले दोनों बजट में 34% फिर मोर देन 35% बढ़ाया, जिसका असर निजी क्षेत्र के निवेश पर भी पड़ेगा और उसको ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में ट्रांसलेट होना चाहिए. अब मैं आता हूं खेती बाड़ी पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि 3 कृषि कानून संसद में पास होने के बाद उसको वापस लेने की स्थिति आई, उसके बाद ये बजट आया. ऑब्वियसली अगर वो वापस न लिया जाता तो बजट में थोड़े बहुत हमें अलग बजट देखने को मिलता. अब जो आप सिग्नल देना चाहते हैं, अब क्या लगता है आप, क्योंकि आप पूरे खेती बाड़ी की दशा को बदलने के लिए ये बजट पेश किया गया, एक नींव रखता है जिसमें आप उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ रहे हैं, उनको स्टार्टअप्स के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं आप इस्तेमाल करने की. तो क्या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में खेती की दशा और दिशा क्या बदलने जा रही है, उसकी एक नींव रखता है यह बजट? नहीं, खेती का दशा और दिशा तय करने वाला किसान है. सरकार उनके साथ मदद करने के लिए जितने भी करना है वो करने के लिए तैयार है. जैसे आपने सही बताया कि सिर्फ उनके खेती के द्वारा जो इनकम उनको मिलता है सिर्फ उतना नहीं, उससे हट करके सोलर पावर जनरेशन, बी कीपिंग और खेती में भी एक हिस्से में एग्रोफॉरेस्ट्री, फिर प्रोसेसिंग के द्वारा, फिर उनको भी हाई यील्डिंग सीड्स देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस बजट में हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी बहुत सारे कदम के लिए हमने रास्ता इसमें दिखाया और पैसा भी उसके लिए अलोकेट किए. इसीलिए मैं मानती हूँ, और एक्सपोर्ट के लिए किसान रेल और एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, मतलब एरोप्लेन के द्वारा उनके पेरिशेबल गुड्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विदेश में बहुत ही डिमांड है, उनके लिए प्रोडक्ट्स को एयरलिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो उनके लॉजिस्टिक्स बीइंग व्हाट इट इज, एग्रीगेट करना भी असंभव की बात होता है. ऐसे बहुत सारे रास्ता हम खोज रहे हैं जिसके द्वारा किसान की आमदनी दोगुनी होगी. लेकिन आपने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पीएम किसान योजना रहेगी, उसके लिए प्रोविजन आपने किया. एमएसपी रहेगा. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एमएसपी लॉ बनाना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे एमएसपी हटा देगी सरकार, लेकिन आप कह रही हैं कि एमएसपी के लिए आप रहेगा नहीं, सिर्फ एमएसपी रहेगा नहीं, मगर अब तक के कभी नहीं पहले हुआ उतना प्रोक्योरमेंट अभी हो रही है. पिछले 4-5 साल से लगातार एमएसपी हाईएस्ट दिया जा रहा है, रेट भी हाईएस्ट, क्वांटम प्रोक्योरमेंट भी हाईएस्ट, और तुरंत डीबीटी के द्वारा उनके हाथ में पैसा भी जारी है. Minister, if I may take you back to the growth strategy underlying this budget, which is basically looking at massive capital investments. So earlier India used to have a problem that they never had the resources. But now a back of the envelope calculation suggests that at least 20 trillion rupees
of resources are available, which means you need about 60 trillion worth of projects in mind. So we do not have at this stage these shovel-ready projects. Do you think that will pose a constraint on this growth? No, I don't think. Since after the introduction of National Infrastructure Pipeline, which was end 19 and early 20, we have been adding a lot of projects as well to that list. And many states have come with very well-designed projects with which we are able to move forward. Over and above what is in that, there's also a keenness now among states to compete for renewable energy-related projects. We find a lot of states coming up with very doable projects. And also when sovereign funds from abroad come to India, they're looking for projects which are scalable. They want projects of that size. They don't want to invest in 10 projects, rather invest in 2, the amount with which they are ready to come in. We've also given them a lot of fiscal benefits. And the emphasis that PLI has brought in, it has understood, the business has understood that it is for incentivizing production at a scale. So every unit that is getting added to a particular level. Many states have shown keenness even on that. And therefore I see the approach to large projects, which has an impact, multiplier effect, impact on immediate job creation, and a very next 15, 20 years keeping alive that sector. There's a lot of interest in states. And in the last 2 years, the success of PLI in the last 1 year itself will tell you that doable projects are very quickly coming in all sectors. मैम, अगर मैं दूसरा सवाल अपना रोजगार पर केंद्रित कर पाऊं तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बजट रोजगार को बढ़ावा देने वाला होगा नहीं। क्या वो आप स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें दे सकती हैं, चाहे वो एमएसएमई के जरिए हो या पीएलआई जिसका जिक्र आपने अभी किया। रोजगार को कैसे बढ़ावा मिलेगा इस बजट से जिसकी सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ पीएलआई के द्वारा हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट बोल रहे हैं 60 लाख का जॉब्स क्रिएट होगा। ECGLS का जब लॉन्च हुआ लोग उससे थोड़ा डाउट करते थे, उससे क्या जॉब्स प्रिजर्व होंगे। एक आउटसाइडर्स का स्टडी, गवर्नमेंट का नहीं, बाहर के स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी के द्वारा वो साबित हुआ कि एमएसएमई जो इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट हुए उनका एम्प्लॉयर्स को हटाया नहीं गए, एम्प्लॉयज को हटाया नहीं गए। और अभी पीएलआई एक्सपैंड भी हो रही है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और स्टार्टअप और ऑल्सो मेनी ऑफ द स्मॉल एमएसएमई यूनिट्स नया जो आ रहे हैं उन सब को भी हम प्रावधान कर चुके हैं इस बजट में। मैं मानती हूँ इन सभी रास्ताओं से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जी Minister, if I can go back to the states part, you mentioned that states are going to be a partner, but all states are not uniform in this country. So there is a capacity issue, even if we keep the politics out of it. There's a capacity issue. So do you think in these kind of scale of projects, their lack of capacity could be a bind on the ability to ramp up these capital-intensive projects and such? But they are not the only projects we are doing. Scaled up projects are certainly there because they have, the economy needs them, at least in those core sectors where they're coming, the new sectors where they're coming, the sunrise industries where they're coming. We need that scale. But that doesn't negate the possibility of other projects which states can continue doing depending on size of the state and the capacity of the state. And nothing is less or small in it. Every state needs what they need. So we recognize that. मैम, अगर हम देखें बजट में कुछ नई बातें भी आपने की हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगी, ई पासपोर्ट की शुरुआत करेंगी, डिजिटल बैंकिंग 75 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करेंगी, पोस्टल जितने भी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस उनको पूरा बैंक के साथ लिंक कर देंगी, पीएम डिवाइन आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा, नेशनल टेली मेडिसिन हेल्थ मिशन वो भी आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम आप बनाने की बात करें, पहली बार जिसको लॉन्च किया जाएगा, 1 क्लास 1 टीवी चैनल कोरोना के दौरान वो भी डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करता है। ये सब मैम
मेरे ख्याल से जो नींव आप रखने जा रही हैं 5G टेलीकॉम के जरिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दे कि क्या होने जा रहा है अगले 1-2 साल डिजिटल इकोनॉमी के लिए, कैसे होने जा रहा है? आपको मालूम है पिछले कोरोना के समय में आम जनता के माइंड में डिजिटल के द्वारा उन्होंने बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये जनता ने कर दिखाए। Adapting to digital payment system is one classic example. ये विदेश में डेवलप्ड इकोनॉमी जो मानते हैं हम, उनमें से भी इतना पेमेंट अडेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं हुआ। जनता में वो इंटरेस्ट है, क्षमता भी है, उसको पूरे उपयोग करने से हम सबका फायदा भी है। और जब ट्रांसैक्शंस डिजिटली होते हैं वो ट्रैक करना भी आसान है, जिससे वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो नेगेटिविटीज थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो थे वो सब मतलब उन इकोनॉमीज में सभी विषय नेगेटिव ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, उसमें स्ट्रेंथ भी है, कुछ बेनिफिट्स भी है, मगर उसमें जो नेगेटिविटी था कि ट्रैक करना मुश्किल है, उसमें अच्छा सही काम हो रही है या कुछ गलती भी हो रही है, ये सब हमें पता नहीं चल रहा। डिजिटल के द्वारा वो सब ट्रैक करना अभी आसान हो गया है। इसीलिए मैं मानती हूँ ये फॉर्मलाइजेशन के रास्ते में ये इससे बहुत ही बेनिफिट हमें मिलेगा और जनता भी इसका सुविधा एस्पेक्ट्स समझ करके उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। सेकंड, थर्ड, हमारे ये हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने से पहले बहुत ही इलाका में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रही है, उसका फायदा समझ रहे हैं लोग। और डिजिटल कनेक्टिविटी जब उनको मिलता है, मार्केट का एक्सेस मिलता है, ये भी लोग समझ रहे हैं। और जिनका मार्केटिंग का ताकत नहीं है वो डिजिटल के द्वारा मार्केट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट, जिससे हमारे छोटे मोटे ये हैंडीक्राफ्ट्स का, स्मॉल वीवर्स का सबको बेनिफिट हो रही है। इस देश में इनफॉर्मल सेक्टर ही बहुत ही ताकतवर है, मगर उसको फॉर्मल करना इन रास्ते में से सबको उपयोगी। और 5G जो टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप करें कि PLI इंसेंटिव्स भी देने की आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उसमें अगर आप डिटेलिंग कर पाए। मतलब 5G जैसे 4G से आगे है वो तो सब समझते हैं, मगर उसका टेक्नोलॉजी बहुत ही कुछ लोगों के पास ही है। उस टेक्नोलॉजी के साथ उस पूरे इकोसिस्टम में जो जो आइटम्स चाहिए और उसको सर्विस करना, उसके चालू रखना, इन सब में बहुत ही एक्सपर्टीज का आवश्यकता है। हमारे यहाँ युवा बहुत ही ट्रेंड, मतलब पढ़े लिखे हैं उस अंशों में, मगर उनको उनके द्वारा बिजनेस चलाना, उसको सर्विस करना, इसका एक नेटवर्क जैसे बनाने के लिए सिस्टम्स चाहिए। उस सिस्टम को प्रोत्साहन देने वाले PLI हम ले आएंगे, प्रपोज कर रहे हैं। Minister, on this digital economy, can I get a clarification on this whole crypto tax, as the markets are calling it, that you've introduced? So you have not, you're basically recognizing crypto as an asset class and denying it as a currency. I'm not yet doing any of that. Okay. I want you to, thank God you asked me that question. I want you to give me the opportunity to explain it. There is a process of consultation which is going on about crypto. That's first thing. Before the consultation is completed, I won't be able to do anything on regulating them or formalizing a framework for regulation for them. This is one side of the story. Second is, everything that is crypto cannot be a currency. What is a currency? A currency is something which is issued by, as a fiat, it is issued by the authorities concerned, the government or the central bank. If they issue something, even if it's digital, only then can it be currency. What happens in the world of crypto otherwise is they are creating very many different types of assets using the digital technology and also using the distributed ledger technology. All of them are not necessarily currency. Currency is that which comes from a central bank which has the authority to issue currency. So what we have now made a provision for is for the Reserve Bank of India to issue a digital currency.
And that obviously will be riveted in or based on certain value of gold or money or government's, assets or something of that kind. So it will be asset backed. It will be sovereign backed in a way. So that is what is currency. The rest of them, we don't know yet how we are going to regulate them because consultation is going on. However, because there's a lot of buying and selling and transacting, resulting in some kind of a profit, and it is the sovereign right to tax such transactions and profit making, I've come up with a proposal for a taxation on them. And that is to the extent of 30% for profits earned out of such taxation, and also a TDS, so that I know who's buying and selling, in the sense what is the transaction about, money trail, whether it's A money or B money, whatever. So the taxation is on those activities which are not currency. Currency is with the Reserve Bank, but these are some kind of assets being bought and sold. Various types of it. I'm taxing them. Okay, so is there a timeline for the consultation? I mean, do we have a final? Well, at the earliest, as soon as it comes, I will start looking at what we can do in terms of regulation. So next fiscal we can... We don't know yet. We'll let the consultation get over. मैम थोड़ा सा इसी पे क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी तो क्या वो एग्जिस्टिंग कैश इकोनॉमी या फिर एग्जिस्टिंग जो करेंसी इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा रिप्लेस करेगी, या फिर इन रेगुलेशंस के जरिए जो अभी आप टैक्सेशन के लिए लेकर के आए हैं या टीडीएस के जरिए लेकर के आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, करेंसी का मतलब उसका सॉवरेन बैकिंग है। करेंसी का मतलब उसको इश्यू करने वाला देश में एक है और वो संवैधानिक है और उसका सरकार की अप्रूवल है। आज करेंसी देश में इश्यू करने वाले सिर्फ एक ही अथॉरिटी है जो सरकार के साथ काम करते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमने इस बजट के द्वारा ये घोषणा कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेंगे। डिजिटल करेंसी का फायदा बहुत सारा है। आज हर देश में एक देश से दूसरा पेमेंट करने का और रेमिटेंसेस करने का, कॉस्ट इफेक्टिव भी और स्पीडी ट्रांजैक्शन का भी उसमें पॉसिबिलिटी है। हमने ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल करेंसी, ये सब एक्टिविटीज के लिए हम करेंसी ले आ रहे हैं। जो बाहर का एक्टिविटी है, प्राइवेट लोगों के आपस में जो एक्टिविटी है, डिजिटल एक्टिविटी है, उसको क्रिप्टो एक्टिविटी जो हम बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे एसेट क्रिएट करते हैं लोग। वो जो एसेट का हम लूजली करेंसी क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो करेंसी नहीं है। एनएफटी जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी है उसमें। उसका ट्रांसैक्शन में जो मुनाफा कमाते हैं लोग, उसके ऊपर हमने 30% तक टैक्स लगाए और उसमें टीडीएस भी ले है। वो करेंसी का नाम पर हम कैसे उपयोग करेंगे, करना ठीक नहीं है, क्योंकि करेंसी बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, रिजर्व बैंक के पास है। जैसे बिटकॉइन वगैरह जैसे करेंसीज हैं बाहर, हमारे देश में उस तरह के लॉन्चेस अलाउ करेगी सरकार है? नहीं, बहुत सिंपल है। अभी तो कंसल्टेशन हो रही है, कंसल्टेशन के बाद ही हम तय करेंगे। और उस पर आप एक अलग से नया कानून लेकर के आएंगी जिसका जिक्र आपने संसद में किया था? कानून है कि रेगुलेशन है, सिर्फ रेगुलेशन है, कानून एंड रेगुलेशन है, ये सब देखना है। Minister, if I may go back to the underlying assumptions of your budget on growth. So you have assumed 11.1% growth in the next fiscal. So a little on the conservative side from what analysts had expected. So what is the logic of, is it because you anticipate some headwinds, or is it that you have last year you have perfected this of under promise and over deliver like you did with all your revenues? So no. Is it part of that, or is it just being pragmatic? It's not under promising, it's being realistic. One. And secondly, when last year's BE was brought in,
we hadn't seen Omicron. We hadn't seen the second wave. At that time, before the second wave, I had given the budget. Now second wave has come. Hopefully it's gone. Now Omicron is on. But even more, you have the US Fed. You also have the international crude oil prices going up. Metals have become very expensive. So we will have to keep all this in mind. We are not getting into details of which is considered a challenge, which is a headwind, which is not. But at the same time, I think Prime Minister has been very clear that we will have to work out to make the budget a lot more a speaking document. It should say what it has. There's no point in saying things beyond a certain, and that's what we've followed. So quick follow-up. So the contact economy, because our vaccination program is now more or less heading towards conclusion. So in this, the expectation is that it will create the right ecosystem to revive the contact economy once more. So are you anticipating an upside, a pleasant upside in the next fiscal from the contact economy coming back, because services is almost 50% of India's GDP at this point? Yes, but equally I've made a provision for helping the hospitality and contact intensive sectors. I've just mentioned it as hospitality and related sectors because I've not described them, but broadly I've mentioned hospitality and contact intensive. We've made a provision of 50,000 crores of sovereign guaranteed loans to be given, which is what we did in the ECG-LS, which was a successful way of helping the MSMEs. Similar, we want to have a treatment given for hospitality. For that, additionally 50,000 has been given. वित्त मंत्री जी, अब मैं बात करना चाहता हूं आत्मनिर्भर भारत योजना की, और मैं आप ही से बोरो कर रहा हूं क्योंकि आपने कई सारे चरणों में वो पैकेज का ऐलान किया जब कोरोना की महामारी देश पे आई, और उसी के साये तले हमने ये दूसरा बजट देखा, आप लगातार लेकर के आई हैं। आपने डिफेंस की स्पेसिफिकली बात की कि 68% हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो मेक इन इंडिया होगा, और कस्टम्स के जो कुछ कस्टम ड्यूटी के जो प्रोविजंस हैं वो भी मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। अगर हम आज के 5 साल डाउन द लाइन हम देखें, आत्मनिर्भर भारत का जो एक तरह से शुरुआत आपने इस देश को दी, वो कहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन आपके जरिए समझ चल रही है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, और आगे भी उसका स्ट्रेंथन हम करते रहेंगे। 68% आपने सही कहा, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट में 68% तक भारत में जो उत्पादन होते हैं उन सभी सामानों को, सामग्री को आर्म फोर्सेस खरीदेगी। उसके अलावा ये भी हमने किया कि 65% ऑफ R&D बजट जो डिफेंस का होता है वो भी भारत देश में रिसर्च करें, DRDO के साथ करें, और इनोवेशन भी इधर ही हो। और इससे पहले हमने 200 आइटम्स को आइडेंटिफाई करके डिफेंस को ये भी कहा कि वो खरीदें, अगले 10 साल तक उसका गारंटी SMEs को दें, जिससे उनको मालूम होगा कि आज खरीद लिया मगर कल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो डाउट रहना चाहिए। अगला 10 साल के लिए उनको ऑर्डर पक्का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हम कदम उठा रहे हैं, जिससे मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश जनता भी समझ रहे हैं, और उस रास्ते पर जल्दी बहुत सारे उस गाड़ी पर चढ़ रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो जो सोलर में आपने प्रोविजन किया, या फिर PLIs के जरिए जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम जल्दी ही, जैसे सेमीकंडक्टर चिप की बड़ी समस्या आई है इसी दौरान हमने देखी, मगर तो हम सेमीकंडक्टर्स को भी PLI के द्वारा हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। Minister, staying on the expenditure theme, one criticism that has been leveled is that in your estimates on fertilizer spending, food subsidy, on rural development, compared to RE, they are almost the same or lesser in this. Is it because they are all comparing the current B with the last RE? How right is that? B is compared with the B. You don't compare B with RE. Okay, no, my question was that is it your budgeting low because it's a demand linked? That's right. Okay. When programs are demand driven, we give it as and when we get the data. So if at the moment you see that this amount will take care of the immediate couple of months, we give it. And there's always a supplementary demand in the monsoon session or in the winter session through which we can always
bring in additional resources, which is required. Many of these programs, because they are demand-driven, you really cannot estimate what will happen after 3 months or after 4 months, and there's no point in putting it up front and waiting for people to drive the program. As and when demand arises, we'll keep filling it. So quick follow-up, that your economic survey yesterday talked about agile fiscal planning. So given that, and given the uncertainties which you have mentioned, so can we expect that a similar kind of agile, I mean, if the circumstances require, you would go back to coming with these mini budgets? Absolutely, absolutely. We'll keep ourselves very close to the ground and understand what's happening and keep responding accordingly. वित्त मंत्री जी, अब थोड़ा सा ग्रोथ पे वापस आते हैं। बहुत सारे एजेंसीज का प्रोजेक्शन यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था इस वक्त है, अगले 3 सालों तक बने रहने की उसमें क्षमता है। जो आपने ये कहा कि ये जो आधारशिला हमने 25 सालों की रखी है, उसमें पीएम गति शक्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने बताया कि जो 7 उसके पिलर्स हैं जिसको साथ लेकर के जाएंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को आपने उसमें सबमर्ज कर दिया है। ये जो पोटेंशियल है सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बने, कौन से सनराइज सेक्टर्स और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको फ्यूल करने जा रहे हैं, जिस पर सरकार का ध्यान अगले 2 से 3 सालों में रहने वाला है? ये सातों के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर उसके लिए हम काम करना है और उसमें सेंस है, नहीं तो एक रोड आपने अच्छा बना दिया मगर अगल बगल में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, कोई रेसिडेंशियल यूनिट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आप सोच रही हो। इसके बदले अगर उस रास्ता को हम ऐसे प्लान करें जिससे इंडस्ट्रियल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स, पूरा बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज दोनों ही हो जी, वो सड़क से हमें दोनों बेनिफिट मिलना चाहिए। और एक पोर्ट से उसका लिंक अगर है तो लैंड लॉक्ड रीजन्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये मान लीजिए किसी का इच्छा है कि इधर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एयरपोर्ट बना दो, खर्च उठा करके एयरपोर्ट बनाते हैं, मगर उससे फायदा किसी को नहीं है और उसका आसपास में इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री, एयरपोर्ट आ गया इसीलिए इंडस्ट्री को हम ले नहीं सकते, क्योंकि इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल से कनेक्शन है और सेल का पोर्ट से कनेक्शन है। इसीलिए एयरपोर्ट भी ऐसे जगह पर बनाना जिससे तुरंत मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, उन सबको बेनिफिट मिले। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक सभी दृष्टिकोण से सोच करके डेवलपमेंट बनाना ही पीएम गति शक्ति का एसेंशियल मैसेज। मैडम अगर आप अलाउ करें तो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग। I actually wanted to ask you on a issue which is a very important cohort in India which you alluded to in your speech, the middle class. So they have also been hurting for the last 2 years. So the anticipation among the middle class is always linked to some tax break. So I heard you said I did not raise taxes for the last 2 years. So what is your message for the middle class, which has also suffered in this horrible pandemic? I fully recognize every section of the society has suffered. Middle class has definitely suffered. But when we talk about middle class, I understand, you understand, all of us understand, and each of us also perceive that there is an element of middle class in us also, and therefore we understand the element of suffering. But yet, we also belong to some other group. For instance, if you or your brother or your son would start a startup and he gets benefits, isn't that middle class? If his children are going abroad and if I give them all the facility to transfer money for their education abroad and give them also a passport which is going to be futuristic and ensure that when can have a skilling program, and I also make sure that high class universities are set up in India, isn't that not addressing the middle class? And similarly, would we want to think that the farmers are not middle class? Would they not get benefits? Will we think that an MSME running person is not middle class? So middle class is a large spectrum which has that middle income. ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए।
देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें सरकार की ओर से 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसमें पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत एट 75 से भारत एट 100 का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हासिल करने का बजट में हर संभव प्रयास किया गया है। बजट में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़क जोड़ी जाएगी। 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ करने के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। 5G मोबाइल नेटवर्क के लिए इसी वर्ष निविदा आमंत्रित की जाएगी। अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विनिर्माण किया जाएगा। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जो पर्यावरण अनुकूल हो। समावेशी विकास के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2023 में अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। 2021-22 के लिए रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 37,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे भेजे जाएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना लागू की जाएगी। 5 अन्य नदी जोड़ परियोजनाओं की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए इस बार आम बजट में पूंजीगत व्यय का दायरा बढ़ाया गया है। बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय या सार्वजनिक निवेश के लिए बढ़े हुए परिव्यय का रोजगार सृजन पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से 14 क्षेत्रों में कई विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं जो रोजगार भी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने दुनिया भर में कई नौकरियां छीन ली हैं। इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने देश में बहुत से लोगों की नौकरियां बचाई। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नौकरी गंवाने वालों की मदद करने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, सौर पंप और कृषि ऋण का प्रावधान। उन्होंने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी ने एमएसएमई के लिए अच्छा काम किया है। सरकार ने आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के लाभ के लिए ECLGS में 50,000 करोड़ रुपए जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया में विनिवेश सरकार की मंशा को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO इस वर्ष आने की पूरी संभावना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। अभी के लिए डिजिटल संपत्तियों के लेन देन पर 30% का कर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में ग्रीन जॉब के क्षेत्र के लिए भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा देश में पहली बार पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को विकासोन्मुखी बताया है। उन्होंने धान और गेहूं में सरकारी खरीद में वृद्धि किए जाने के प्रावधान का स्वागत किया और कहा कि ये बजट किसानों के हित में है। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट में देश के बुनियादी ढांचे के वृहद विकास का प्रावधान किया गया है, जो सराहनीय है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि ये वर्तमान के बजाय भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। श्री चिदम्बरम ने कहा कि देश के 99.99% लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी फायदेमंद नहीं है। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने डिजिटल मुद्रा पर सरकार के प्रस्ताव को उचित प्रस्ताव बताया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के मनोनीत अध्यक्ष संजीव बजाज ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। निर्बाध चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत की। निर्वाचन आयोग ने कहा कि विशेष पर्यवेक्षक राज्य में काम आ रही चुनावी मशीनरी के कार्यों की निरीक्षण और निगरानी करेंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मणिपुर में पहले चरण में 27 फरवरी को 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है, जिन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। मस्कट में FIH प्रो लीग महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 2-1 से हरा दिया है। भारत की ओर से गुरजीत कौर ने 2 गोल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Gaurang Dhawan Lal. As the number of COVID-19 cases is rising fast in several parts of the country, we appeal to our listeners to be vigilant and to get fully vaccinated and help others, including children between 15 and 18 years, also get vaccinated. With the new Omicron variant of coronavirus causing concern, please continue to follow these 3 simple steps to stay safe.
wear a face mask, maintain 2 gaz ki duri for social distancing, and focus on hand and face hygiene. For any COVID-related information and guidance, contact the national helpline numbers 011-239 78046 and 1075. And now, the news. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, the highest among all large economies. Presenting the Union Budget 2022-23 in Parliament today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the overall sharp rebound and recovery of the economy from the adverse effects of the pandemic is reflective of the country's strong resilience. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. The Finance Minister said the nation is marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and has entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. She said the government aims to attain the vision of the Prime Minister outlined in his Independence Day address. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus. Promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. Ms. Sitharaman expressed her empathy for those who had to bear adverse health and the economic effects of the pandemic. She said, with the accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, the country is in a strong position to withstand challenges. The Finance Minister said Budget 2022-23 reflects the firm commitment of the government to boost economic growth by investing in infrastructure development. This is substantiated by an increase in capital expenditure by 35.4%, that is over 1,96,000 crore rupees, over the budgetary estimate of 2021-22. Under the budget, the total resources being transferred to the states is 16,11,781 crore rupees. Ms. Sitharaman said the latest GDP estimates and movement in key economic activity indicators confirm strengthened momentum of India's economic recovery. India's nominal GDP is expected to grow by 11.1% in the financial year 2022-23 over 2021-22, the Finance Minister said. In the railway sector, the minister said the one station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Railways will develop new products and efficient logistics services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. The minister said capacity in planning, design, financing, including innovative ways and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects will be ramped up. National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency.
1,500 crore rupees have been allotted under the PM Development Initiative for North East region. The minister said multimodal logistics parks at 4 locations through public-private partnership PPP mode will be implemented in 2022-23. The National Digital Health Ecosystem will be rolled out and the National Tele-Mental Health Programme will be launched for quality counselling, the minister said. To give a boost to digital banking by post offices, 100% of post offices are to be brought under the core banking system. One Nation, One Registration software will be promoted under NGDRS. It will be a uniform process for registration and anywhere registration of deeds and documents. The auction of required spectrum for the rollout of 5G mobile services will start in 2022. The contract for laying optical fibre cables in all villages, including remote areas, under the BharatNet project will be awarded through PPP in 2022-23. The digital rupee will be introduced using blockchain and other technologies. It will be issued by the Reserve Bank starting 2022-2023. As against a total expenditure of 34.83 lakh crore rupees projected in the budget estimates 2021-22, the revised estimate is 37.70 lakh crore rupees. The revised estimate of capital expenditure is 6.03 lakh crore rupees. In the budget estimates, total expenditure in 2022-23 is estimated at 39.45 lakh crore rupees, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crore rupees. The revised fiscal deficit in the current year is estimated at 6.9% of GDP. The fiscal deficit in 2022-23 is estimated at 6.4% of GDP, which is consistent with the broad path of fiscal consolidation announced by the government last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 2025-26. While dwelling upon the direct tax proposals contained in the Union Budget for the year 2022-23, the Finance Minister announced a new provision to permit taxpayers to file an updated return on the payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on Twitter @AIR News Alerts. Prime Minister Narendra Modi has said that this budget will strengthen the economy and create new opportunities for the common man. Speaking on Budget 2022-23, which was presented in Parliament today, Mr. Modi said this will give a financial boost and benefit the common man with more investment, infrastructure, employment and development opportunities. He said this budget is full of new possibilities for infrastructure, investment and growth and jobs. ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। Congress leader and former Finance Minister P. Chidambaram criticised the union budget, saying that it focuses more on future rather than the present. Briefing the media in New Delhi, Mr. Chidambaram said cryptocurrency is not beneficial to 99.99% of people of the country. On the contrary, another senior Congress leader and former Union Minister Shashi Tharoor termed the government's proposal on digital currency as a reasonable proposition. Talking to the media outside Parliament, Mr. Tharoor said it was very clear that as far as digital currency is concerned, the government was heading in that direction. And that is the end of this news bulletin. Union Budget with All India Radio News. What makes the headlines? What matters the most? For the people, markets, sectors, industry and the nation. Join All India Radio News for a special live day-long program on the Union Budget. For an in-depth analysis by experts, special budget bulletins, people's reaction on the budget and exclusive interviews.
Stay tuned to the FM Gold channel 100.1 MHz of All India Radio and other frequencies. Also available on our app News on AIR and our YouTube channel News on AIR Official. Good evening, listeners, and welcome to this special program on the General Budget 2022. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार. आम बजट के इस विशेष विश्लेषण कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है, जिसका कि आज सुबह से हम प्रसारण कर रहे हैं, जिसमें बजट की बारीकियों और बजट के जो मोटे जो कोशिशें हैं वो हम आपके सामने उसको विस्तृत रूप से लेकर आ रहे हैं. और आज हम चर्चा करेंगे बजट में वित्त मंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं उसके बारे में. लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्षेत्र को आपके समक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत करें. हमारे पास कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, हमारे पास विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी होंगे, जिनसे हम बात करेंगे आम जनता के लिए को क्या मिला इस बजट से, और साथ ही साथ एक उद्योग जगत की जो अपेक्षाएं थी वो कितनी पूरी हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट से बहुत सारी जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं. Exactly. तो रंगा, कोशिशें बहुत बजट से जितनी उम्मीदें की गई थी, कितनी उसको पारदर्शिता के साथ वित्त मंत्री महोदया पूरा करने में सक्षम हो पाई. आम जनता की जितनी उम्मीदें थी, अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो शायद उन्होंने सीधे हाथ से देने की बजाय उन्होंने लोगों के हाथों को और ज़्यादा मजबूत, या उनके हाथ में जो पैसा किस तरीके से और बचे, जिससे कि उनकी जो परचेजिंग पावर है या जो उनकी क्रय शक्ति है वो बढ़े, शायद इस पे विशेष ध्यान दिया है. Exactly, Amit. Actually, since morning today, since actually 11 o'clock in the morning, we have been talking about the budget and analyzing the nitty-gritties, the fine print for all our listeners, and seeing that in what aspect each of the sectors have been targeted and focused. Attention has been given, and as has been saying that this probably is a continuity budget, and these are special times. Last year and this particular year we are working in the shadows of the ongoing pandemic, so special efforts are being made to maintain that continuity, to maintain the growth in the economy. So we will be talking threadbare, we'll be analyzing each of the aspects for you. We will also have an interaction with the policymakers. We will have the Finance Secretary TV Somanathan, we will have the Economics Affairs Secretary Shri Ajay Seth, Shri Tarun Bajaj, who is the Revenue Secretary, and also we'll have Shri Tuhin Kant Pandey, the Secretary in Department of Investment and Public Asset Management in our program from now till 8 PM. लेकिन उसके पहले मैं एक काम करता हूं कि बहुत जल्दी से जो मोटी-मोटी बातें हैं उस पे एक बार वापस से उसको दोहरा देता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है, जो आज वित्त मंत्री ने संसद में बजट को पेश किया. ये सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. जीडीपी के ताज़ा अनुमान और प्रमुख आर्थिक गतिविधियों से संकेत मिलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है. बजट 2022 अमृतकाल का ब्लूप्रिंट है, जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आशाजनक और समावेशी है. केंद्रीय बजट में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है. आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम यानी ECGLS की को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाने का प्रस्ताव किया गया है, और इसकी गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए भी कर दिया गया है. क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी. आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से संबंध प्रोत्साहन कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है. Right, we will continue with each of the aspects of today's budget. Meanwhile, let's go across to our economic analyst Jayanta Das. Jayanta, a warm welcome to this special budget analysis program. Thank you very much. Yeah. First of all, we will obviously, discuss each of the aspects threadbare with you. But at the first instance, what is your first reaction to today's budget? Well, two counts. First is I'm extremely happy that people were expecting it to be a politically driven budget given the elections in post-state. It's absolutely not, and it's quite a forward-looking budget with a huge expense commitment on the infrastructure side. So I'm quite happy from how it's going to pan out from here, specifically as we
rollout from the third phase of COVID. Right, and what would you say? The emphasis has been on continuing the efforts which were started last year, not only with the budget, but also with post-budget announcements of schemes like PLI and others. Yes, to some extent, yes. But then as I say, it's always been saying the budget for the last 1 decade or so has lost to some extent its important milestone relevance because it's a work in process always. Yeah. And specifically last 3 years, during COVID and post-COVID, we have seen how things can change within weeks in terms of how businesses are done and how business challenges and all come in. True. So while the budget is rightly set in a motion of what the government intends to do for the next 12 months, I'm sure there will be many more announcements that it has been happening in the recent past over the month in terms of, major changes in structure. But then, as I said, in a nutshell, it's an excellent budget. Right. Jayanta, we'll come back to you sometime later in this program. Thank you so much for joining us. और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्रा मौजूद हैं। प्रोफेसर रमेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हरवीर सिंह जी भी हैं। हरवीर जी भी कृषि विशेषज्ञ के तौर पे अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मोटे तौर पे बजट में प्रोफेसर चंद्रा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उस पर एक बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा समझा जा रहा था कहीं ना कहीं कि किसानों के लिए ये एक शायद कहना चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक उनके लिए प्रश्न बन गया था। तो सरकार ने किस तरीके से इसको साधने की कोशिश करी है और इसका फौरी सीधा फायदा कितना मिलता हुआ नजर आता है? हमें इस सेक्टर के लिए इस बजट में क्या हुआ है उसको, जो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है इकोनॉमी का और उस सेक्टर का, उसको देखना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है इस वर्ष 3.9% आंका गया है। इससे पिछले वर्ष में 3% था, जबकि बाकी सब सेक्टर जो हैं उनका नेगेटिव ग्रोथ था। तो आप ये मत भूलिए कि कोविड पीरियड में एक एग्रीकल्चर जो है वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल प्रॉस्पेरिटी पे चलता रहा है, जबकि दूसरे सभी सेक्टर डिस्ट्रेस में चलते रहे हैं। तो मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ नीति आयोग के मेंबर के नाते, ऐसी सिचुएशन में एग्रीकल्चर सेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो सेक्टर डिस्ट्रेस में है उनकी एक हेल्प करे। जैसे यदि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है तो हम नॉन एग्रीकल्चर से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प करे। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, आपने एमएसपी से शुरुआत की। अब इस सरकार ने एक फार्मूला चेंज कर दिया था कि एमएसपी कॉस्ट का कम से कम 50% होगी। चाहे बजट में उसे वो डिक्लेयर करें या बजट में ना डिक्लेयर करें, जो एमएसपी है उस पे जो 50% प्रॉफिटेबिलिटी है वो सुनिश्चित है, कम से कम 50% पॉसिबिलिटी। उससे यदि ज़्यादा इंक्रीज दी जाती है उसका मतलब ये है कि हम एक डायरेक्शन देना चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन को। जैसे दालों में 50 की बजाय 70% ग्रोथ जो है दे दिया, ऑयल सीड में जिनकी कमी है वहाँ 50 की बजाय 70% या 60% दे दिया। तो अब राइस भी जिसमें हम 10% सरप्लस हैं, जिसे बेचने के लिए हमारे पास मार्केट नहीं है, उस पे 50% मिनिमम जो हम सुनिश्चित करते हैं। वैसे गेहूं में तो 100% ही होता है क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। तो एक बैलेंस रखने के लिए भी एमएसपी है। हर एक चीज़ में एमएसपी को हर वर्ष उससे ज़्यादा देना हर वर्ष उचित नहीं होता। Right. Harveer, coming to you, at the first instance, at the first glance, today's budget, you have been there, you have been analyzing all through. The day has almost, coming to an end. What would you say as far as agriculture is concerned? What are the big, takeaways from budget 2022? Actually, in agriculture budget, government has tried to keep the direction continue.
So and adding some new kind of things like technology and agri-tech, and to create funds to encourage startups in agriculture sector, and to basically make more and more IT services available to agriculture, whether it is a drone or crop mapping and all these things. And government has given this thing indication that this procurement system will remain continued, because this is the current marketing seasons. This 2.37 lakh crore will be total amount to be given to the farmers since wheat procurement season to this, when this paddy and rice procurement season will end. So this is the announcement like that. Otherwise, on policy front, there is no new kind of policy. It is just direction. As Dr. Ramesh Chandji said that agriculture has played a very important role for the economy in last 2 years. When economy was shrinking, agriculture was growing, and even on 3.3 or 3.4 growth, and after that 3.9% of growth in agriculture is definitely a very big thing. So, but to sustain that growth, this kind of initiatives are required. Farmers are growing, then who is buying those produce? The government is trying to buy this produce. So that's why this is a package kind of deal. Like this Kisan credit card, this credit facility continue. Government has increased the this interest subvention amount subsidy in this budget, and on the other hand, that even fertilizer subsidy, 1,40,000 crore subsidy is for the current fiscal, and more than 1 lakh crore provision for the next fiscal. So that these are the basically to keep the agriculture momentum going on. That kind of direction this budget gives for agriculture. Right. Professor Ramesh Chandra, what would you say, in today's announcement, especially this concept of Kisan drones, which probably would be used for, spraying insecticides, which is, actually being used for agriculture and also for, land records and all these purposes. Isn't this a very new concept which probably in times to come will catch up? And how it will be implemented? ये नया कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर की एक ही ट्रेजेडी रही है कि वो टेक्नोलॉजी में दूसरे मॉडर्न सेक्टर से पछड़ती जा रही है. आज भी आप यदि कई चीज़ों की यील्ड देखें तो हमारी जो वर्ल्ड की यील्ड है या चाइना की यील्ड से तो आधी भी नहीं है. वो इसलिए नहीं है कि हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एग्रीकल्चर में नहीं आने दिया. अब किसान ड्रोन, इसके बहुत से फ़ायदे हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा इसका एफिशिएंसी में है कि आप यदि इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू यदि आप ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइज़र करते हैं. दूसरा, आपने सुना होगा कि पिछले साल महाराष्ट्र में 12 मजदूर जो बेचारे खेतों में स्प्रे कर रहे थे, वो उसके इंसेक्टिसाइड की वजह से उनकी डेथ हो गई. जब आप ड्रोन से करेंगे तो जो इस तरह की ट्रेजिक इंसिडेंट होते हैं, एफिशिएंसी के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, और प्रिसीजन फार्मिंग इससे उसको बढ़ावा मिलेगा. और सबसे बड़ा जो हम क्रॉप की मॉनिटरिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस के लिए मॉनिटरिंग करनी हो, चाहे आगे कितने प्रोडक्शन के स्टैटिस्टिक्स हैं उनके लिए करनी हो, और उसी को आगे एक्सपेंड करके कि हम डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड हमें करना है या लैंड के किसी किस्म के जियो टैग्ड पिक्चर लेने हैं, तो ड्रोन से वो सारी चीज़ें संभव हैं. तो मैं ये कहूँगा कि ड्रोन एक संकेत है. Right. इसी तरह से but I also want to say this, it has to be provided to the farmers at a very cost effective manner, otherwise it won't be used by the farmers, isn't it? Of course it is already mentioned in the budget that provisions will be made with public private partnership through startups, and some assistance will be given to them, that drone doesn't become costlier than conventional method. Exactly. Otherwise, for adoption of any new technology, some incentive is needed. So I am sure that application of drone for undertaking certain farm operation will be much cheaper than the conventional method of doing those operations. तो श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि केंद्रीय बजट के बारे में आप अपनी जानकारी, अपने प्रश्न, अपने सवाल हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8700014411. Exactly, the number once again 870001
4411. And on your behalf, we will put your questions which you have in your mind, your queries, your doubts about Union Budget 2022 to the experts and analysts present in this program and in this studio. प्रोफेसर रमेश चंद, मैं एक चीज़ जरूर जानना चाहूँगा कि सरकार ने जो बजट दिया है, क्या आप इसको मानते हैं कि जो पिछली बार के जो काम थे उसको एक सतत प्रक्रिया के तहत उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, कि उन्होंने जहां पिछली योजनाएं छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ाया है, जिससे कि एक निरंतर विकास होता रहे कृषि क्षेत्र का भी, चाहे वो जैसे आपने अभी बात करी कि वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसी को सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसको इसलिए भी बढ़ाया है, यदि आपको अच्छे परिणाम किसी पॉलिसी से मिल रहे हों तो आपको डेफिनेटली उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो 2 अटेम्प्ट बजट में हुए हैं। एक तो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ गुड पॉलिसीज जो भी हैं उनको आगे लेकर जाना। दूसरा, इनडायरेक्ट बेनिफिट एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन के इतने मिलेंगे क्योंकि इस सेक्टर को दूसरे सेक्टर्स के साथ, साइंस सेक्टर के साथ इंटेग्रेट करने की बात हुई है। अब देखिए, आप कहोगे कि जो हिमालयन स्टेट्स में रोपवे बनेंगे, अब यदि रोपवे से आप प्रोड्यूस अपना लेकर जाते हो और कोई आदमी अपने सेब एक मजदूर से लेकर आता है, इतना फ़र्क है उसके कॉस्ट में, तो उनको उनका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह जो MSME की बात हो रही है, बाकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट उनके इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर में आएंगे कि ये कंटिन्यूटी ऑफ गुड पॉलिसीज ऑफ द पास्ट विद मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्टर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक्टर विद द अदर सेक्टर्स। तो इस अप्रोच के साथ बजट तो माना ये जाए कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी तकनीक का समावेश किया जा रहा है, जिससे कि उसके जो परिणाम हैं वो और बेहतर हो सकें और उसमें जो लागत और जो उसका लाभ आने वाला है उसको और तेज़ी से बढ़ाया जा सके, और जिससे कि किसानों के साथ एक आम जो शिकायत रहा करती थी कि किसानी अब वो मुनाफे का या लाभ का सौदा नहीं रह पा रहा है और कहीं ना कहीं लागत और जो कमाई थी उसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप हो जा रहा था, उसको दूर करने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। हाँ, नहीं, ऐसा आप कभी भी स्टैटिस्टिक्स देखो तो सेक्टर के लेवल पे किसानी कभी भी नुकसान का सौदा नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर के लिए वो नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर कभी क्रॉप फेल हो गई, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सेक्टर एज ए होल की बात है, चाहे आप क्रॉप्स को ले लो, चाहे लाइव स्टॉक को, चाहे फिश को, तो उनमें आप देखो अब हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर पिछले कई सालों से 8% की ग्रोथ हो रही है, फिशरी में 10% की ग्रोथ हो रही है। कल ही आपके आकाशवाणी के बाहर लगा था कि पिछले 9 महीने में 36% फिशरी के जो एक्सपोर्ट हैं उसमें ग्रोथ हो गई। तो यदि ये घाटे का सौदा ही रहता तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसमें कैसे संभव थी। तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपकी बात मानता हूँ, कहीं बारिश फेल हो गई, कहीं कोई और नेचुरल आफ्ता आ गई, कहीं बीमारी से फसल हो गई, इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें हो सकती हैं और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, फसल बीमा है और तरह की चीज़ें हैं जिनका लाभ लेना चाहिए। लेकिन हमें एग्रीकल्चर को इसकी प्रेजेंट स्टेट से एक आगे वाली स्टेज पे ले जाना है, जहां जाने के लिए अभी वो रुका हुआ है। अब यही प्रयत्न है। Yeah, Harveer, let's also talk about some of the other initiatives like implementation of the Ken Betwa, link project at an estimated cost of, more than 44,000 crore rupees. Can we expect to reap the benefits of a mega scheme like this in times to come? Actually, to increase irrigated facility is a big challenge for us, and our almost 50% area is still unirrigated if you go to not irrigated area. And dependent on So rains. this kind of project will definitely increase irrigated area, and I think if this project goes success, so it will enhance a large area of under irrigation as well as drinking water facility and power generation. So, and I think based on this is the maiden project of that kind. So government can take up such kind of projects on other river linkages, and in this budget finance minister announced that some draft report will be prepared for some other river linkages projects also. Okay, right. And ये also मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये केन बेटवा प्रोजेक्ट इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है। यदि कोई 2 स्टेट अपने रिवर्स को
इंटरलिंकिंग करने के लिए मानती हैं तो वो नेशनल प्रोजेक्ट बन जाता है। उसमें बहुत सी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो केन बेटवा में कोई 45,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और इस बजट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1400 करोड़ रुपया और छोटी मोटी जो चीज़ें रहती हैं, तो उससे आप देखोगे कि जो ये क्षेत्र हमेरा बुंदेलखंड हमेशा एक डिस्ट्रेस रहता है। 8 लाख हेक्टेयर एरिया वहाँ पर इरिगेशन हो जाएगा। तो ये स्टेट्स के लिए एक मैसेज है कि आप आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भूलकर एक बेनिफिट को देखकर इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट करिए, उसका खर्चा केंद्र उसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर देने के लिए तैयार है। Professor Ramesh Chand, I want to bring in that point which Amit also raised now. You know why it is considered that agriculture is not profitable, not lucrative? Because if we compare our farmers with farmers in Western countries, say US or someone in Europe, for them it is a vocation like any other thing, and they enjoy a wonderful standard of life comparable with professionals in other segments, whether it could be an IT engineer, a farmer, or a doctor, or a lawyer for that matter in US or Europe has the same standard of living. Why not in our country? Why is it that the farmer at the first opportunity to leave agriculture is ready to leave? Again, two aspects of this. Even in Australian Parliament, these questions are raised that farmers are under distress and they are committing suicide. So, agriculture vis-a-vis other profession, there is always some attraction in non-agriculture profession higher than what it is in agriculture, even in Western countries. But one of the reasons that why condition of Western farmer is much better compared to our farmer is the scale of farming. Our average size of holding is only 1.1 hectare, whereas average size of holding in USA will be in hundreds of hectares. So and it's complete mechanization. That is another aspect, but that scale itself, that even if a Western farmer has half of the productivity or profitability compared to our farmer, his income will be 500 times what is income of our farmer, simply because of this scale difference. But we should not imitate Western farmer. For us, the best farmer to imitate are Asian farmers, Chinese farmer, Japanese farmer. They are much smaller than what is the size of holding in our country. So the kind of agriculture which is done in China, which is done in Japan, we have and good, still profitable and viable. Still profitable and viable, but there is a big but here. We need to take in a gradual manner sizable excessive labor force from agriculture to non-agriculture. I published a paper in today's Hindu on this labor thing only, that the industry in India is becoming irresponsible in the sense that it is not offering jobs to the people. They are adopting capital intensive production. They are going for labor displacing kind of technology. This can't do for a country where labor is so cheap compared to capital. So the tragedy of Indian agriculture is not because of failure of agriculture. But it's all supply and demand driven, isn't it, sir? No, it is not. It has something to do with, industry will tell you, with labor laws. It has something to do with that it is easier to deal with the machine than to deal with the labor. So those kind of things are there, that we need to create proper environment for industry and make it responsible that you have to absorb labor from agriculture. So if the present level comes down from say 45% to 30%, income per farmer increase by 70%. Because it will be distributed over a few heads. So this is what is needed in agriculture, that we need to provide employment to some of the people who are right now in agriculture, if not in industry, by creating rural industrialization, by creating post-harvest value addition. Those are the kind of things which we need. हरवीर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि खेती के साथ साथ आज एक शब्दावली आई, प्राकृतिक खेती। मैं एक आम जनता की समझ के लिए ये जानना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती हम किसे कह रहे हैं, उसके फौरी फायदे क्या हैं। दूसरा, जिस तरह की खेती के एस्पेक्ट के बारे में भी हमने बात करी,
तो खेती में आज सिर्फ और सिर्फ वो अनाज उत्पादन से ही जुड़ा वो कृषि क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं मत्स्य पालन कर रहे हैं और उससे जो जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे तौर पे ना जुड़ के, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ एक जुड़ी हुई भी कार्यप्रणाली है, वो उसके साथ आ रही है। तो किसान इसके बावजूद इससे कितना लाभ उठा पा रहे हैं और प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं दोनों चीज़ों के लिए, वो आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो आपने सही कहा है कि खेती का मतलब सिर्फ फसल उत्पादन नहीं है या खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। अभी तो हमारा डेयरी सेक्टर का जो वैल्यू है प्रोडक्शन का, वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गया है, या हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो फूड ग्रेन से ज़्यादा हो गया है। तो ये ज़्यादातर बात होती है सिर्फ क्रॉप की, फसल उत्पादन की बात होती है। एक आम जनता के मानस में मन में इसलिए उसको हमें डेयरी, फिशरीज और बाकी दूसरे जो एनिमल हस्बेंड्री के और जो ऑप्शंस हैं, और ये सारा जोड़ करके एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली एग्रीकल्चर की बात होनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। कई बार एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो एक तो वो कॉम्प्रिहेंसिव उस तरीके से देखना चाहिए। अब तो एक मिनिस्ट्री अलग भी हो गई है जो है पशुपालन, डेयरी और फिशरीज का, वो इसलिए कि ज़्यादा फोकस किया जाए इसलिए है। तो बट है इन टोटलिटी एक जगह। और जहाँ तक आपने कहा नेचुरल फार्मिंग का, अभी मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट आया है कि केमिकल लेस फार्मिंग करें, जिसमें कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना हो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो। उसके लिए हम जो बायो फर्टिलाइज़र हो या फिर बायो केमिकल, ये आपका पेस्टिसाइड्स हों जो कि पौधों से या उसी तरीके से जैव उस तरह से तैयार हुए हैं, और जो भूमि का जो एक सॉइल की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करें। अभी ये कॉन्सेप्ट नया है, हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट्स की तरह से है। अभी इसको हम ये कहें कि सामान्य रूप से अडॉप्ट कर लेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। मेरा मानना है कि इसके ऊपर अभी डाटा कलेक्ट होना चाहिए, शोध होना चाहिए, और साइंटिफिक अप्रोच के साथ में इवन हमारे जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उनको पूरा डाटा का स्टडी करना चाहिए, और जो लोग इस धारणा को लेकर के कहते हैं कि बहुत फ़ायदा है, उन दोनों का इंटरफेस होना चाहिए, और रिजल्ट जब एकदम बेहतर आ जाए तो उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये एक तो ये मानिएगा, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं या नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो आपको सॉइल को केमिकल लेस बनाने के लिए भी एक जेस्टेशन पीरियड होता है, तो उस वक्त आपको क्रॉप लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उसको कौन इंसेंटिवाइज करेगा? दूसरे, ये एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इस तरह का जो प्रोड्यूस है उसको सामान्य उत्पादन के जो प्रक्रिया उससे बेहतर दाम मिलेगा। तो उसके लिए मार्केट लिंकेजेस क्या है? ये फैक्ट है कि उपभोक्ताओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा आ गया है जो इस तरीके का लेस केमिकल और साफ़ सुथरे उत्पादों के लिए बेहतर दाम देने को तैयार है। लेकिन ये है कि वो लिंकेजेस क्रिएट हों, या तो जो जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जो एफपीओज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं या मार्केटिंग के जो इसमें आ रही हैं लिंकेजेस, वो इस तरीके का एक इकोसिस्टम तैयार करें। बट विदाउट इकोसिस्टम मेरा मानना है कि आप ऐसे बड़े पैमाने पर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उसी पे आ रहा था कि जो आपने बात करी ऑर्गेनिक खेती की और जैसे प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती, क्या हम इन दोनों टर्म्स को एक ही संदर्भ में ले सकते हैं? पहली चीज़। दूसरी, अभी हम रंगा थोड़ी देर पहले इसी बात की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आज के दौर में हर कोई ये चाहता है, जिस तरह के आपने जिक्र किया, कि हम वो केमिकल मुक्त या फर्टिलाइज़र मुक्त चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ ही साथ खाली वो खाद्यान्न उत्पादन की बात नहीं है, अगर वो चाहे वो दूध है या उससे बने हुए उत्पाद हैं, उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा फोकस, और इसके लिए खास तौर पर एक बाज़ार है जो इस पर फोकस करता है। क्या उतनी चीज़ों की डिमांड बाजार में जिस तरह से आ रही है, क्या उसको सप्लाई चेन से जो हमारे कृषक हैं या खेती क्षेत्र है उस पर ध्यान दे पा रहा है? देखिए, ये पूरा एक चेन प्रोसेस है। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो एनिमल के जो फीड है वहाँ से शुरू होता है, और किस तरीके से मिल्किंग की जा रही है, किस माहौल में, क्या साफ़ सुथरी जगह पर, कैसे उसको ह्यूमन टच के बिना आगे ले जा रहे हैं, और फिर आपका जो पोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पैकेजिंग इस्तेमाल हो रही है वो कितना क्लीन है, जहाँ प्रोसेस है वो कैसे डिसइंफेक्टेंट ऑलरेडी किया हुआ है, और फिर किस पैकेजिंग में आप ले जाके दे रहे हैं। तो कुछ लोगों ने शुरू किया है और उसका करीब 50% का प्राइस डिफरेंस भी है, लेकिन उसको बहुत मास स्केल पे अभी कर पाएंगे हम लोग, ये देखना पड़ेगा। और ये डिफ्रेंशिएट करने का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक अपने आप में थोड़ा दोनों ओवरलैपिंग है। और एक ये भी है कि एक और मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि एक होता है हमारा कंजर्वेटिव फार्मिंग,
जहां आप इस्तेमाल तो करते हैं फर्टिलाइजर भी और केमिकल्स भी, बट आप कोशिश करते हैं क्रॉप रेजिड्यूज जो है वो वहीं पर हो जाए, जिससे कि बाकी आपको इस्तेमाल कम करना पड़े। वो भी एक नया प्रोसेस है, बट दैट इज़ वेरी साइंटिफिकली प्रोवन ऑल्सो कि एक आध साल आपका यील्ड कम होता है। हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बाद में यील्ड नॉर्मल होने लगती है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाता है, मतलब बेसिकली इनपुट कॉस्ट घटा देता है, टाइमिंग बचाता है। तो इस तरीके के ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं एक साथ, उसमें जिस किसान को जो बेहतर लगता है वहाँ बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए और उसको उसके लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मास स्केल पर लोगों को समझाएं और नतीजे बेहतर ना आए, बिकॉज ये चीज़ आप मान लीजिएगा कि भले ही हम लोग बहुत सरप्लस हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, हमारा इतना बड़ा मार्केट में रिक्वायरमेंट है हमारा कंजम्पशन का, एक क्रॉप अगर अच्छी नहीं होती तो सेकंड क्रॉप में प्रॉब्लम आने का डर रहता है। इन्फ्लेशनरी राइट। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक और जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से एक नया विचार, एक नई क्रांति ने तो कहीं ना कहीं में उसकी सुगबुगाहट काफी तेजी से चल पड़ी है, कम से कम ऐसा मानना क्या गलत होगा? नहीं, ये तो दुनिया भर में हो रहा है। देखिए हेल्थ कॉन्शियसनेस, और अभी जो पेंडेमिक के दौर में भी लोगों ने माना है कि उनको न्यूट्रिशन को लेकर के उनका जो है नजरिया बदला है और हेल्थ फोकस लोग बहुत हुए हैं इसमें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोड्यूस की तरफ जाए। जी प्रोफेसर रमेश, on the same aspect of organic food, you know, we have seen in the past couple of years this particular concept of organic food has caught on, but you know the penetration has been limited, because at the practical level, at the ground level, if you see, you know, if you have tomatoes which are normal tomatoes costing 40 rupees per kilogram, and on side by side you have organic tomatoes grown organically, which is say 60 rupees per kilo. There's a differential of 20 rupees, but a customer would say ki why should I give more for something which is not certified? So don't you think a certification mechanism is really important, and an institutional mechanism which is carried on right from the fields till the table of the consumer? I think when sizable quantity will be produced, then this kind of differentiation of products will already happen. That you have a supply chain where there is a traceability. Exactly. You can find out from which farm this produce has come. It is possible that you can find out from which farm this produce has come, but that requires some scale. That if you have only few quintal, for that you can't ensure separability. Have a certification mechanism. It is already happening under our ministry. There are centers, there are labs which are doing certification. That's how we are able to export large quantity of organic produce. It is not only for domestic market, we are exporting also. So now there are two type of organic produce in the market. One which is certified, second which is not certified, but which is claimed to be organic. But if you are going for certification, certainly there has to be cost. So you have to add that cost, price will further go up. So when things will be produced at large scale, then even cost of these kind of compliances also comes down. Because a lab, if it get only 100 sample, it will charge much higher than if it is getting say 1000 sample. So it all depends upon scale. That's why in case of organic farming and natural farming, we are promoting cluster of villages. So it is that there should be 100 hectare or some hectare like that. Only then whatever support is to be given to them is given by government. Otherwise on their own any farmer can do it. प्रोफेसर रमेश, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। देखिए अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी उत्पाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसको खेत से बाजार तक लाने की लागत भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसान उसकी लागत को नहीं सह पाता। और कई बार हमने ऐसा भी देखा, बहुत सारी इस तरह की बातें भी चलती हैं कि वो अपनी उपज को अपने खेतों के किनारे निकाल के फेंक देता है। क्या इस बजट के साथ साथ सरकार की इस तरह की नीतियों में क्या और बदलाव आए हैं जिसको कि हम पूरी जनता को आप बताना चाहेंगे और जो किसानों के लिए भी फौरी तौर पर लाभदायक है, जिसको के बारे में उनको जानकारी नहीं हो पा रही? ऐसा है कि इसको एडिक्वेटली तो एड्रेस हम प्रॉपर क्रॉप प्लानिंग से कर सकते हैं,
लेकिन क्रॉप प्लानिंग में भी आप कुछ प्रोजेक्ट करते हो कि इस तरह की प्राइस होगी, इतना एक्रेज आपको शो करना चाहिए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप एट बेस्ट एडवाइस कर सकते हो किसान को कि आप ये करिए, उसका उसे फॉलो करना या ना करना उनके अपने पे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये उनके अपने पे होता है। कई बार वो ये फीलिंग आ जाती है कि भाई इस बार तो प्राइस हाई होने वाली है, बाकी फार्मर कम करेंगे, मैं उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा लूँ, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इनको एड्रेस करने के लिए ही जो हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए जी, क्योंकि यदि वो आप उसको खा नहीं सकते तो कम से कम प्रोसेसिंग में काफ़ी जो है उससे एक मॉडरेट हम उसको प्राइस फ्लक्चुएशन को कर सकते हैं। तो पहला तो ये सरकार में मार्केट इंटेलिजेंस है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, उसको उससे एक्रेज एलोकेशन का पता चलेगा। दूसरा एक बेटर स्टोरेज है कि आप उसको थोड़ी देर बाद में बेच लीजिए। तीसरा ये फूड प्रोसेसिंग सा है, इनसे होगा। बाकी जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती हैं, इकोनॉमिस्ट इनको कहते हैं कि इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरह की होती है कि थोड़ा सा बढ़ गया तो प्राइस क्रैश हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो गया तो प्राइस शूट अप हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ता है एग्रीकल्चर कमोडिटी में, उनकी नेचर ऐसी होती है। Harbir, let's also talk about some of the other aspects going beyond agriculture. We have an allocation of 60,000 crore rupees made for Har Ghar Nal Se Jal to probably approximately 3.8 crore household for this particular year 22-23. So don't you think this will go a long way in improving the standard of living in the rural areas, and also may have a cascading effect on other aspects also? Yes, it has direct on this standard of living as well as on health. True. Waterborne disease is a very big thing, and if you have clean water at your home and a regular supply, so definitely it has a very big impact on the living standard of the common people, particularly in villages and all. So it's a massive program, this Har Ghar Jal Nal Se Jal. So and in this coming fiscal, more than 3 crore household will be basically connected to this. It is a very big initiative. साथ ही इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर चूंकि जो जल है वो गांव में बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे मतलब पानी की उपलब्धता या जल की उपलब्धता कराना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और परिवार के एक सदस्य का पूरा फोकस उस पर रहता है कि किस तरह से वो पानी इकट्ठा करके ले पा रहा है या पानी की उपलब्धता करा पाए। अगर इस तरह से होता है तो क्या हमारे पास वर्कफोर्स की भी बहुतायत हो सकती है, या जो जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर रहता है उससे उसकी चिंताएं अगर हम दूर कर सकते हैं तो उसको कहीं ना कहीं और प्रोडक्टिवली कैन बी डिप्लॉयड। जी जी, जाहिर सी बात है। देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खुद से कोई भी व्यक्ति उतना बेहतर क्वालिटी का पानी उसको हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सलाइन वाटर बहुत जगह है। वहाँ पर अगर गवर्नमेंट का कोई बेहतर प्रोजेक्ट है तो उसको साफ पानी मिल सकता है। तो एक तो उतना इन्वेस्टमेंट उसके खुद के बूते की बात नहीं है, और जैसे आपने कहा कि इवन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपका मथुरा के आसपास का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है और पीने के पानी का बड़ा संकट लोगों के पास है। वहाँ पर अगर इस तरह की स्कीम्स के थ्रू पानी मुहैया कराया जाएगा तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरे आपने जैसे कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल किसी दूसरे काम में होगा। ये एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है पानी, लेकिन उसके लिए आदमी पूरा समय लगाए ये ज़रूरी नहीं है। Right. Professor Ramesh Chand, another provisions which has been made, 100 Pradhan Mantri Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics. Can we expect its impact on the agri sector as well? Because often it is said that a lot of produce is, especially fruits and flowers and horticulture products are wasted during transport and cold storage, lack of all these cargo facilities. All general infrastructure is meant for all these sectors. I don't know why we feel that agriculture should be excluded or included into it.
I think we have already seen Kisan Rail, the kind of impact which it had, that you attach only one bogie and that make huge difference. That make huge difference. Today's agriculture is modernized. Many farmers, they are so aware that you find they have a customer in UK, they have customer in Netherlands. They study pulse of the market in other countries. They come to us whenever they face a slight problem. That ministry is not clearing our produce. They are putting unnecessary quarantine. So we have those knowledgeable, elite kind of farmers, and we have a concept of FPO. That if individual farmer can't take benefit, they can form a group, they can take benefit of it. So I would say that all these infrastructure, they are as much meant for agriculture as they are for industry and services. Right. And our agriculture should come forward to take advantage of that. Right. Professor Ramesh Chand, thank you so much for joining us, and Harbir Singh, thank you so much for joining us in this segment of our program. आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. आपका धन्यवाद. Well, listeners, you are tuned in to our special budget analysis program, and we are talking about the Union General Budget 2022. Now, let's go across to our economic analyst, Puneet Jain. Puneet, a warm welcome to this program. Thank you, Ranga. I'm sure you would have been interacting with a number of media organizations since morning to discuss the budget threadbare. First things first, what would you say, your first reaction to the Union Budget 2022? So as you all know from the reaction of the market, that markets are quite happy about the way the budget has panned out, because a finance minister has made it very clear that she is going for growth. In fact, it's a very bold budget. She has actually taken a certain risk because she has prioritized growth over everybody's concern of like inflation. Because she's saying that I'm taking that bold step, and that is really reflected in the fact that the capital expenditure that has been hiked by 35%. So government is going out boldly saying that we are going to spend more money and we are going to push for growth. And right now they are saying that we will take the risk of inflation, but they want growth. I think that is what the markets have welcomed, and we saw that reaction across the board in terms of metal stocks and all the infrastructure companies. पुनीत, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बजट को चुनावी बजट कहने की आहट कहीं ना कहीं गलियारे में सुनाई दे रही थी. तो वित्त मंत्री इस बारे में, जैसा आपने कहा कि काफ़ी बोल्ड बजट है, उन्होंने इस बात को कितना दरकिनार किया, पहला. दूसरा, एक विशेषज्ञ के तौर पे इससे आम जनता को, जो मिडिल क्लास है, उसको क्या मिला, निम्न वर्ग उसको क्या मिला, और उद्योग जगत की कितनी आकांक्षाएं पूरी हुई, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा. तो पहली बात तो हमें यह है कि किसी भी तरीके से इसको चुनावी बजट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनावी बजट में पॉपुलिस्ट स्कीम्स अनाउंस होती हैं, कुछ गुडीज बांटे जाते हैं टैक्स के शक्ल में, या छोटे मोटे ग्रांट्स होती हैं. इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया. इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा बोल्ड बजट है. पॉलिटिकल रिस्क भी लिया है, इकोनॉमिक रिस्क भी लिया है, लेकिन उन्होंने एक लंबे अरसे के लिए, लंबे टाइम के लिए एक नींव रखने की कोशिश करी है नए भारत की. और उसका जो खास कारण, आपने कहा कि मिडिल क्लास को क्या मिलेगा या दूसरे वर्गों को क्या मिलेगा, वो अगर हम देखें कि डायरेक्टली उनकी जेब में क्या आया तो शायद वो नंबर्स ऐसे नहीं है कोई बहुत ज्यादा. लेकिन जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, रेलवेज में 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, दूसरे जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स है 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी. यदि आप देखें तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी. तो ये एक बहुत ही मैं कहूंगा फार साइटेड बजट है, जहां पर ये मान्यता है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रो करेंगे तो सभी को फायदा होगा, हर वर्ग को एम्प्लॉयमेंट बेटर मिलेगी, और जो उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो सबको मिलेंगे. तो मुझे लगता है कि उस प्रकार से, और तभी मैंने कहा कि बहुत फार साइटेड बजट है और इसीलिए बोल्ड बजट है. आसान है किसी को कुछ थोड़ा बहुत आप कंसेशन दे दीजिए, आप कहिए कि ये बहुत आपको फायदा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं किया. ऐसी इजी ऑप्शन नहीं लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने एक डिफिकल्ट लॉन्ग टर्म ऑप्शन लिया. Yeah, and Puneet, I want to bring in this indirect point also. You know, in today's budget, the announcement was made that as far as NPS is concerned, the new pension scheme, the contribution of employers would be 14% instead of, you know, the current 10%. So that new 4% differential, you know, sooner or later it will find its path to the stock markets, isn't it? Yes, definitely. And there was this dichotomy actually between central government
others. So that has been bridged, and the money which goes into NPS, and NPS corpus has really grown over the past few years now, and it's a significant corpus. So directly or indirectly, it goes into expenditure in terms of infrastructure. So government borrows from it through small savings schemes, etc. So this money, of course, will get saved and will get invested. So, but it is an indirect thing. It doesn't. You don't see the benefit tomorrow, but I'm sure we'll see the benefits 2 or 3 years down the line. पुनीत, क्या ये माना जाए कि वित्त मंत्री ने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया कि उपभोक्ताओं या आम जन के हाथ में सीधे तौर पे पैसे देने के बजाय उनकी क्रय शक्ति को बढ़ा दिया जाए या उनको परोक्ष रूप से इतने सारे उनके पास पैसे दे दिए जाएं जिससे कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाए, उनके पास अतिरिक्त धन आ जाए, चाहे वो निवेश करने के लिए आए, चाहे वो खर्च करने के लिए आए? इसमें उनका फोकस था और इसी को उन्होंने, इसी विचार को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, तो ये इकोनॉमिक आर्गुमेंट है कि जो अर्निंग कैपेसिटी है या अर्निंग्स हैं उसको बढ़ाया जाए, इसकी बजाय कि हम सीधा ग्रांट्स को बढ़ाएं। और ये एक आर्गुमेंट रहा है कि अगर आप सीधा ग्रांट्स को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ मेंटेन भी किया है। एमजी नरेगा है, उसको मेंटेन किया है, या पीएम किसान स्कीम है, उसको भी मेंटेन किया है। ऐसा नहीं है कि वो स्कीम्स कम करी है, लेकिन गवर्नमेंट ने ज्यादा एक्सपेंडिचर पे जोर दिया है। और उसके लिए मैं ये कहूंगा, जो मैंने कहा पहले कि बोल्ड है, वो इसलिए बोल्ड भी है कि उन्होंने बोरोइंग करने को तैयार है। आज सरकार कह रही है कि हम जो पिछले साल हमने यानी 2021-22 में 7 लाख करोड़ रुपए मार्केट बोरोइंग करी थी, उसके बजाय वो 11 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करेंगे, जिससे इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। वो कुछ कीमत हमें देनी पड़ेगी, लेकिन उनका सरकार की मान्यता है कि ये जो पैसा हम बोरो करेंगे, इसको हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, उस आमदनी से उनको फायदा होगा। दिस इज द लॉजिक। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने सीधे सीधे तौर पे ये कहा कि हम लोगों को के पास खर्चे करने के लिए, मुहैया कराने के लिए बाजार से उधार लेके भी अर्थव्यवस्था में पैसे डालें, ताकि जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनका विस्तार हो सके या अतिरिक्त चीज़ों का संसाधन है उनको जुटाया जा सके, जिसका फौरी तौर पे शायद उतना सीधा फायदा मतलब ना दिखाई पड़े, लेकिन ये लंबे समय के लिए एक मजबूत और स्थायी तत्व की शुरुआत हो जाए? बिल्कुल। तो फाइनेंस मिनिस्टर शुरुआत में ये कहा था कि ये बजट अगले 25 साल के भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट है। और मैं आपको बताता हूं, जैसे इस बजट में जो मेन एक बहुत बड़ा एलोकेशन बढ़ाया गया है, जैसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के लिए जो हाईवेज बनाते हैं, वो बजट हमने करीब 65,000 करोड़ से बढ़ाकर करीब डबल 1,30,000 करोड़ कर दिया। यानी सरकार ये कह रही है कि अब हम रोड ज्यादा बनाएंगे, 25,000 किलोमीटर रोड एक्स्ट्रा बनाएंगे, और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जो रोड्स बनेंगे उसकी यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक्सपेंडिचर होता है, उससे जो फायदा होगा इकोनॉमिक, हम वो फायदा हम प्रेफर करते हैं, इसकी बजाय कि हम सीधा आपको ज्यादा पैसे आपको हाथ में दें। इसी तरह रोपवेज की बात करें हम, तो रोपवे की बात होगी, हिमालयन रोड्स की बात हुई है, हिल रोड्स की बात हुई है, तो सभी आप देखें तो पूरा बजट साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए है, वो उसकी प्राथमिकता है। बाकी सारी स्कीम्स भी है, लेकिन प्राथमिकता जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर है। पुनीत, हमें खेद है कि we've lost contact with Puneet Jain. We'll try and connect again to him. But Amit, what would you say? A number of big ticket announcements, although they don't seem to be like that, and as everyone is saying that this is kind of a status quo budget, or maintaining that continuity, that particular continuity. But many of the provisions which have been which Puneet also mentioned, 25,000 kilometers of national highway in the year 2022-23. मैं इसकी खासियत बताता हूँ। रंगा, इसकी खासियत बताता हूँ। देखिए, आपको समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के हाथ में धन पहुंचाना है, उसको राहत पहुंचानी है। सड़क हर के गांव से निकल के जाती है, अगर आपने गांव तक सड़क पहुंचा दी तो वहां पे इस तरह के उस अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को आपने उसको आजीविका भी दे दी, उसको रोजगार भी दे दिया, और एक संसाधन या एक ढांचागत सुविधाएं उनका विकास कर दिया। सरकारी खर्च पे एक से, जैसे कहते हैं ना कि अगर 1 रुपया 10 हाथों में जाता है तो 10 रुपये के बराबर हो जाता है। यहाँ पे पूरी तरह से उनकी यही क्षमताएं नज़र आती हैं, जिसका मेरी नज़र में मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ, और ये बहुत अच्छा कदम है। Exactly. Right, and now Puneet has joined us back on the program. Puneet, let's also talk about this particular initiative of linking almost 1.5 lakh post offices which are spread across the country. Every nook and corner of the country is covered by the postal department. Now connecting them directly to the core banking system. Won't that go a long way in ensuring financial inclusion at every nook and corner of the country?
Absolutely, Ranga. In fact, I think this would be the backbone of what a financial system will evolve in India, because post offices reach almost every village in the country. So banks may not be there, banking correspondents may not be there, but post offices are there. And if we are able to connect all these post offices, it will become an enormous network. Like NPCI, like the work that UPI is doing, I think along with post offices, it will empower people and their spending and their savings to a huge level. And I think it will transform the way financial management is done in India, particularly in rural areas. Yeah, and Puneet, we have seen in the last couple of years, and also, we can call it a decade or so, a postal department has lost its, prime core business of sending letters with the advent of email and new technology and all. So now this is a clear-cut effort at diversification of their business, core business, isn't it? Exactly. And Ranga, this is the global trend. If you look at Japan, if you look at Germany, everywhere the postal services have now become financial services. They are no longer the people delivering just letters. They are mostly companies which are delivering services to the people, and everywhere in the world it has transformed like that. And therefore, I think India is also following the same patterns very successfully. और इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं आर्थिक विशेषज्ञ चंद्रशेखर तिलक। चंद्रशेखर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज संसद में पेश हुए वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट के बारे में। आर्थिक जगत के तौर पे, एक विशेषज्ञ के तौर पर, आप उद्योग जगत को बजट से सीधे तौर पर क्या मिला, उसके बारे में मैं आपका विश्लेषण जानना चाहूँगा। If you look at this particular budget, it has been presented today by Honorable Finance Minister, and if you have to correlate it with the industrial sector as far as our country is concerned, one thing is very clear, that this particular budget really recognizes the contribution and sustenance power displayed by our industrial sector in last 20 to 21 months. Although per se the industrial sector contribution to GDP, it has not gone yet to the pre-pandemic level, but they have certainly shown it in the matter which has been done. Especially their contribution as far as their revival and the monthly GST collections are concerned, certainly those have been recognized by this particular budget. And they have provided the new vistas as far as the opportunities for the cottage small-scale industries are concerned. Probably this particular budget is trying to establish certain interlinkages between an unorganized sector and industrial sector. At the same time, especially considering the announcements made regarding our defense sector and making our road building constructions as far as the 25,000 kilometer in a particular year, yes, would certainly act as an impetus to our industrial sector. And especially considering the introduction of a digital currency by Reserve Bank of India in coming days and advent of 5G being announced over here would certainly help our industrial sector. Right. Because one thing is very clear, that although the corona or Omicron in particular is on a waning wane, certainly the concept of work from home is going to stay over here. And taking into consideration this concept of work here from home and its linkages and intermingling with the actual office work, this 5G and definition or the importance of the sustenance and the concentration being given on a digital India would be a good thing as far as the industrial sector of our country is concerned. Yeah, Mr. Tilak, let's talk about the stock market and the impact of the budget on the stock markets. We have seen how the markets have given a thumbs up to the union budget. But going ahead, do you think this thing to be sustained? Many a times the trend reverses the very next day. But what would you see? There has been no surprises at all, leave alone nasty surprises in the budget or in the fine print that the market may take cognizance of later. And it's been kind of status quo, even on taxation, direct taxes also, there are no surprises as such. So don't you think the markets have taken that thing, that there is stability in policy, there is continuity in policy, and no bad surprises? Sir, to be honest, the latter part of your question itself gives the answer. It is not required that each and every time
each and every annual budget comes out with some pleasant surprises or a nasty surprises or a shock. Okay. To be honest, as always we say that capital market and especially the secondary market in particular discounts the future under such circumstances when you are having a stability of your economic, fiscal and taxation policies. Exactly. Under such circumstances, that is easier for the market. As far as the cold shouldering which may amount, because hardly the Sensex has gone up by 800 points today, it needs to be understood that in last 21 months or so, ours was an economy or a market which has always outmastered the global trends as such. And because of which, we are now boasting of more than $630 billion forex reserve. So government as well as the market, both of them were in need of some sort of a cooling period, and this particular budget has provided it. And to be honest, at the specific details as far as the IPO of LIC is concerned, and then there is a subsequent announcement that LIC IPO would not be a solitary example as far as the public sector is concerned. It was very much needed because just like LIC or Air India, the privatization of IDBI Bank and various other public sector enterprises was in the offing. It was being a matter of discussion more than in reality. But given the sense that the disinvestment program seems to be on a very much on the radar, not only on the sheer wish list of the government, has given that. And although it is not a part and parcel of a budget, one thing is very clear, that the public sector enterprises performance on the eve of the budget itself has helped. If you see that today's newspaper, when one oil company announces the interim dividend of ₹4, another gives the interim dividend of ₹5, that clearly shows that public sector enterprises on a disinvestment target are not because they are on a loss-making proposition, but certain business-making propositions can also be forthcoming into. Right, Mr. Tilak. The emergence of Indian Postal Payment Bank, IRCTC, container, and the government announcement that henceforth almost 75% of my defense procurement would be done from the local sources. And up to 14,000 rupees, we will be going for a local tender. Certainly the market would be sustaining it. And as you said, on the next day the market reverses. But if you see the last 10 budgets, especially made during the current regime, you will say that hardly on 2 days, this particular reversal has taken place. And a day here or there doesn't matter as far as the secondary market of our country is concerned. Fine, Mr. Tilak, thank you so much for joining us on this program. Thanks for giving me the opportunity. Thanks a lot. That was Mr. Chandrasekhar Tilak joining us from Mumbai. And let's continue our discussion with Puneet Jain. Puneet, let's talk about this tax on cryptocurrency as well. As on date, there is we don't have much of a clarity as far as the legality of cryptocurrency is concerned. The thinking process is still on, but in the middle of that, the government has taken this decision to tax it and tax it at the highest slab. How do you see this decision? So, Ranga, in effect, government has indirectly said that this is an asset. So, and SM has very clearly said this is not a currency. It is wrong to call it a cryptocurrency. It is a digital asset. Exactly. Now, of course, whether it is desired or not to trade in such assets is something different. And government can still come out and ban this at a later date. But for the time being, because there was no provision for taxing these assets, government has gone ahead and said that, okay, we'll tax it at 30%. I do not still believe that they will recognize it in the long term, because we all know they are very risky assets and not desirable to be traded by retail investors. So it will need some regulation at least, if not complete banning. But for time being, it is recognized indirectly for taxation purposes at least. But as far as income tax is concerned, income tax is very clear in that income tax doesn't make a distinction between legal money and illegal or semi-legal money, and also income tax does not exempt tainted money. So from that particular point, probably crypto, whether it is legal or illegal, it has been taxed. But the concept which is often spoken about cryptocurrencies is that that sovereign backing is
not there, and also a corresponding asset is not backing this particular currency, cryptocurrency, and no country, no central bank is backing it, isn't it? Absolutely, Ranga. So clearly, all sorts of cryptocurrencies are purely speculative assets. They have no backing. In fact, the irony is that till date, we don't know who created Bitcoin, who manages Bitcoin, who creates Bitcoin. We still don't know. And so it is completely a dark chapter. And therefore, as I said earlier, it's not desirable as an asset. It does not hold any intrinsic value. However, it is an income. So from taxation point of view, anything which causes me to bring in an income or an inflow of money, that needs to be taxed. If I receive money from abroad, whether that money is tainted or not tainted, income tax will go ahead and tax it. Exactly. And other agencies will of course deal with it, whether it is legal or not. पुनीत, आज के बजट प्रस्तुति में जो एक बात कही गई, उन्होंने कहा कि आप 2 वर्ष तक अपनी जो आयकर रिटर्न है उसको अपडेट या उसको एक सुधार कर सकते हैं. इसके फौरी तौर पे क्या मायने समझे जाएं और ये किस तरीके की चिंताओं को दूर करने का साधन बन सकता है? अभी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोविजन है, बहुत ही दैट इज अ बिग सरप्राइज इनफैक्ट, और इट विल रिड्यूस लिटिगेशन अ लॉट. कई बार क्या होता है कि हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं और बाद में कोई तथ्य सामने आते हैं कुछ टाइम के बाद. तो इस बजट में प्रोविजन किया गया है कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज नहीं, अपडेट कर सकते हैं, उस इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं. उसके ऊपर आपको नॉर्मल टैक्स से 50% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. यदि आपका 30% टैक्स स्लैब है तो आपको 45% टैक्स दे करके आप उस इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं 2 साल तक. तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर टाइप की एक स्कीम है कि अगर आपका मन 2 वर्ष तक असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद, यानी 3 वर्ष आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, you can still change your mind. You can change your mind, pay 45% टैक्स, थोड़ा सा 50% टैक्स ज्यादा लगेगा और वो आप अपना डिस्क्लोज कर सकते हैं. तो इट इज अ डिस्क्लोजर स्कीम विद अ 2-year टाइम फ्रेम for all times to come, in a sense. Yeah. And Puneet, just one more aspect related to the cryptocurrency taxation. 30% being taxed on crypto assets. Now, what do you expect? People, do you see this as a disincentive, and people will probably, now leave cryptocurrency investment and probably look towards the conventional modes of investment like the stock market and other assets and bring in more? No. I think people who do trade in cryptocurrencies do it purely for speculative reasons. I don't think they're bothered about taxation. Good thing is that they will now be brought to book, in a sense that their income will be taxed. Right now, that is totally grey area, and most of them are maybe not paying any tax. So there's a TDS now, which will help them to track all payments, and there's an income tax. So at least they are brought into a tax net. I don't think they'll be discouraged by tax. They will still speculate because it is a purely speculative activity. पुनीत, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो 15% करने तक की सीमित करने तक की बात की गई है, इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि ये क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं और क्या इसके फौरी तौर पे फायदे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज की बात हुई है. जो लिस्टेड शेयर्स हम जब ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर जब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज जो है वो 15% अभी फिक्स्ड है. लेकिन जो अनलिस्टेड एसेट्स हैं, मान लीजिए कैपिटल गेन आपको घर की एसेट से आता है, आपको कैपिटल गेन आ रहा है अनलिस्टेड शेयर से, तो उसके ऊपर सरचार्ज का स्लैब बढ़ जाता था 15% से 20%, और ये बढ़ते बढ़ते 35% तक ये चला जाता था स्लैब. तो वो उन्होंने कहा है कि जो अनलिस्टेड एसेट्स हैं वहां पर भी जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर सरचार्ज है 15% पर उन्होंने कैप किया है. ये एक फायदा होगा उन लोगों के लिए जो कैपिटल गेन्स शेयर से नहीं, दूसरी एसेट से इनको कैपिटल गेन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उनके लिए सरचार्ज कम हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम. पुनीत, हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इतने सरल शब्दों में बजट की व्याख्या करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. Amit, we were talking about taxation of cryptocurrencies. As we all know, the consultation process is still on at the RBI level, whether it is legal or not, whether it is illegal altogether, whether it is semi-legal, and all these aspects. But moving ahead, it seems even RBI will itself launch its own digital currency. So that would give an avenue to people to invest rather than going for unknown things. रंगा, इसके पीछे का जो कारण मैं समझ पा रहा हूँ उसका सीधा मतलब ये है, क्रिप्टो करेंसी ने जिस तरह से आया और बाजार पे छा गया और जो इसने रिटर्न्स दिया वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आकर्षण पैदा कर रहा है. तो
धीरे धीरे कहीं ना कहीं चूंकि नई चीज़ें हैं, अगर नई चीज़ समावेशी हो रही हैं तो उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उस माइंडसेट को वित्त मंत्री ने भांपा है और उसकी तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। Exactly. जी। Well, now we are joined by A.K. Bhattacharya of Business Standard. Mr. Bhattacharya, a warm welcome to this budget analysis program. You have seen it all. You have gone through the fine print also by now. Tell us. Thank you. Yeah. Tell us about the main highlights. What all do you see as the big highlights of budget 2022? This is a budget that believes in borrowing more to invest more. Yeah. In a sense that the finance minister has not shied away from going in for a 32% higher market borrowing to finance the government's much needed capital expenditure, which has also gone up by around 35%. So if you look at the overall budget numbers, that is what comes through very clearly, that the fiscal deficit, which is a reflection of the overall gap between government's total receipts minus borrowings and total expenditure, now that has come down from is going to come down from 6.9% to 6.4%. So while adhering to the overall glide path of fiscal consolidation, what I do see is in the finance minister's mind the desire to not hesitate from borrowing more, giving the RBI the responsibility of managing the bond market accordingly. And it will, of course, mean the government will have to, will have to meet higher interest payment liabilities. But the need of the hour, she thought, and this is, I would say, broadly in the right line, to increase capital expenditure at a time when the private sector is not investing more. So to kickstart and sustain the economic growth process, this additional 35% increase in capital expenditure seems to me the highlight of this budget. And of course, there are many other, positive aspects. For example, the transparency in the budget, I think. Myself being a great votary of transparency, this year she's actually brought it even more by reducing the entire the off-budget borrowing to zero for next year. And the current year, she was expecting it to do 30,000 crore, but actually she's done only 751 crore only. So transparency-wise, this is a clear positive. In terms of risk-taking, which is borrowing more to invest more, you have taken that risk. Okay. In terms of revenue expenditure, you have squeezed very, very. Revenue expenditure is subsidies, defense. Subsidies have gone down by 26%. Now, that is a big risk again, because if petroleum product prices go up next year, will your fertilizer and petroleum subsidies come down? You do not know. Yeah. But budget is an intention. And that intention tells me the government is willing to squeeze its revenue expenditure to the tune that it is going up by only 0.86%. It has never happened. Whereas your capital expenditure is going up by 35%, मिस्टर भट्टाचार्य, एक चीज़ जिस पे आपने अभी कहा कि सरकार की मंशा रही है या वित्त मंत्री की मंशा रही है कि आप बाजार से उधार लेके लेकिन उसका निवेश करें, क्या इस मामले में एक बहुत टाइट रोप नहीं रहती कि कहीं ना कहीं हमें महंगाई दर या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा भी है, या वो एक खतरा ये जोखिम लेने को तैयार थी क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए? आपने ये बात एकदम सही कहा। देखिए, अगर आप इस माहौल में अगर ये एक कंट्रोल्ड रिस्क नहीं लेते हैं तो आपका जो ग्रोथ इंजन जो है अगले साल में शायद उतना ना काम करे, क्योंकि अगर आपने बजट नंबर्स देखे होंगे, बजट के नंबर्स, उसमें आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट सिर्फ 11% दिखाई गई है। इस साल 21-22 में नॉमिनल ग्रोथ रेट 18% की थी। इसका मतलब हम नॉमिनल ग्रोथ रेट
अगली साल सिर्फ 11% देखेंगे, इसका मतलब ये कि हमारी जो आय करने की या टैक्स बटोरने की जो सरकार की जो क्षमता है उसमें थोड़ी बहुत एक धक्का पहुंच सकता है। तो इसीलिए सरकार ने ये जोखिम उठाया है कि बोरो कीजिए, पर बोरो करके उस पैसे को आप कंजम्पशन में मत दीजिए, कैपिटल एसेट क्रिएट करने में दीजिए। तो सरकार ने क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रोक लगा दी। अब ये देखना पड़ेगा कितनी दूर तक ये सक्षम रहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रोक लगाना। पर जो मंशा जो है, इरादा जो है, वो मैं समझता हूँ एक एम्बिशियस इरादा है। मैं कहूँगा इस माहौल में भी सराहनीय एक रिस्क है, पर लेने लायक है ये। अच्छा, एमएसएमई के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम है, इसके दायरे को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये माना जाए कि जो कोविड का दौर था उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा जो परेशान होने वाला एक तबका था वो कहीं ना कहीं एमएसएमई था। और उसमें अभी भी चूंकि उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो लेबर कॉस्ट की जो बढ़त हुई है, और कुशल कामगारों की भी जो इस मामले में अभाव हुआ है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। ये कदम उसको फौरी तौर पे कितनी राहत पहुंचाएगा और कितना उसको सक्षम और स्थायित्व प्रदान करेगा? देखिए, एमएसएमई का जो करीबन 6 करोड़ या 6.25 करोड़ की जो एमएसएमई यूनिट्स जो हैं, उनके लिए ये एक एक्सटेंशन मिलना कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये उनके लिए कोई दो राय नहीं है कि सहायक साबित होगी। पर उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि उनकी जो जरूरतें जो हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं, और उनकी जो एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से जो एग्जेम्पशन मिली थी, वो कितनी दूर उनको ये उनकी सहायता कर सके। पर इसमें एमएसएमई पैकेज यही दर्शाता है कि सरकार को ये रिकॉग्नाइज किया है सरकार ने कि एमएसएमई सेक्टर में असेसमेंट मतलब जो स्ट्रेस जो है, पेन जो है, वो काफी है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। Yeah, and Mr. Bhattacharya, let's talk about fiscal deficit as well. We have seen the glide slope given by the government is credible and kind of sincere. But in the last couple of years, actually we have stopped talking about FRBM, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Is it a foregone conclusion that these are bad times, especially the last 2 years, and these are not times to talk about fiscal responsibility? Maybe 2-3 years down the line, when things normalize, maybe at that time we can see and rein in fiscal deficit altogether. I would not entirely agree with you there, Mr. Bhasam. My understanding is that the government does have a fiscal glide path, fiscal consolidation glide path, and that glide path says it is not yet documented in a Fiscal Responsibility and Budget Management Act, which had to be revised and amended and presented. But within the government and within the budget document, if you look at it closely, you see that there is a glide path of fiscal consolidation, which is to reduce fiscal deficit to 4.5% of GDP by 2025-26. Currently, in the current year, you will be ending the year from 9.2% last year to 6.9% this year. Now, this is a reduction. Next year, it's 6.4%. 6.4%. So you have another 3 years from next year to reach 4.5% in 2025-26. That is the 4 or 5 year the trajectory of the fiscal consolidation that the government has accepted, and it has been endorsed also by the Finance Commission. Right. Mr. Bhattacharya, let's also talk about, the so-called barometer of our economy and also of the budget, the stock markets. The stock markets have very clearly given a thumbs up to the union budget. But do you think it's sustainable? In the fine print, there won't be anything which, in tomorrow's trading session could interfere and, kind of, give for a course correction, and maybe there could be some correction? Well, it's difficult to read the mood of the market. But my reading as of now is
that there are signals in the budget that suggest that government will be spending more. Okay. And there are signals in the budget that the government will not be disruptive in its taxation policy. There are signals in the budget that the needy, the COVID-affected sectors will be taken care of. So the stock market don't like things to be done when things seem to be going all right. Okay. Now, if your revenues are growing by 25%, 26%, tax revenues, which means that there is the corporate sector, the personal individuals who are taxpayers, who are earning more money and paying more taxes. So the government has taken a very, very reasoned stand, saying that don't fix it, when it is not broke. So that is a message I think the stock market has taken, that no damage has been done. Yeah. You have got some concessions in terms of surcharge on the long-term capital gains tax to be capped at 15%. This is going to be a big boost for the startup companies. Yeah, Mr. Bhattacharya, I want to discuss something related to it. As far as NPS is concerned, the contribution of employers, central government and state government employers, which runs into lakhs of people. Now that has been increased from 10 to 14%. So this extra 4%, obviously, we know NPS, at least 50% of the contributions is invested into equities and then bonds and government securities. So won't this go into enhancing investment in equities and the stock markets? My reading is that this will actually remove the inequality that used to exist between the state government employees and the central government employees. This money will obviously be invested in the stock markets. It will, but the additionality would be much to change or to influence the mood of the market. मिस्टर भट्टाचार्य, जो ये एनपीएस स्कीम में सिर्फ इसका एक जो अंग था वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो इसका दायरा बढ़ाया गया है, आम जनता को अगर इससे जोड़ा जाता तो क्या इसके बहुत अधिक फायदे निकलते हुए नहीं नजर आते? देखिए, आम आदमी को भी करते तो फायदा जरूर आता, पर इसमें जो सरकार की जो एक आर्थिक जो क्षमता जो है, कितना इसको वो मेंटेन कर सकती है, इसके भी ऊपर निर्भरशील है। आपकी बात एकदम सही है कि आम आदमी को भी, अगर ऑर्डिनरी जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज है उसको भी आप इसको दायरे में लाते, पर उसमें वो सरकार का एक कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सरकार कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा, ये देखना पड़ेगा। पर ये बात चर्चा हम कर सकते हैं, ये क्यों नहीं लाए गए। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एमएसएमई के लिए जहाँ सरकार ने इतनी सारी जो घोषणाएं की हैं, क्या आपको लगता है कि उनको एक सही दर पे, मैं अगर ब्याज दरों की बात करूँ तो चूंकि उनको सही रेट पर जो फंड्स मुहैया कराए जाने चाहिए वो उनको मिल पा रहे हैं? क्या सरकार ने इस तरफ भी कुछ ध्यान देने की कोशिश करी है? देखिए, इसीलिए जो इमरजेंसी जो लाइन क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, उसका प्रावधान 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। पर लेकिन उसमें तो सीमाएं हैं, क्योंकि ये आपने एकदम सही कहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक बहुत बड़ा एक इशू, उसका रिजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। पर जो सवाल ये है कि इस वक्त इस समय जो सरकार के पास जो चैलेंज जो है, वो मैं समझता हूँ कि सरकार किस तरह से इन्वेस्टमेंट के पहिए को ज्यादा तेजी घुमाए। वो इन्वेस्टमेंट के पहिए को ज्यादा तेजी घुमाने में वो
बोरो ज्यादा कर रहा है उससे इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रभाव आएगा। तो इस समय अगर आप चाहते हैं कि एमएसएमई को भी जो कर्जा जो लेना चाहिए वो कम दाम में लेना चाहिए, कम इंटरेस्ट रेट देना चाहिए, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन जाएगा कि तो सरकार इससे कभी निकल नहीं सकेगा। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया, मैंने जैसे कहा कि ये एक जोखिम है, एक रिस्क लिया गया है, सरकार ने लिया है कि अगर ग्रोथ आ जाए, ग्रोथ से डेट रिपेमेंट का साइकिल वो शायद इंटरेस्ट रेट में सरकार की क्षमता में हानि उतना नहीं पहुंचे। अच्छा, आप कितने आशावान हैं कि जो सरकार के फौरी कदम है जो एमएसएमई के लिए, चाहे वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन हो या उन्होंने जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की जो बात की है, उससे कहीं ना कहीं एमएसएमई को सीधे तौर पे फायदा मिलता नजर आएगा और वो जो पूंजी बाजार से उठा रहा है या सरकार के बैंकों के द्वारा ले रहा है उसको वापस चुकाने में सक्षम हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि एमएसएमई को सबसे बड़ी जो बेनिफिट जो आएगी वो ये सारे स्कीम सपोर्टिंग स्कीम है। सिर्फ एक्चुअल जो बेनिफिट जो आएगा वो आएगा आपका ग्रोथ से। अगर ग्रोथ ठीक से हो, इकोनॉमी में डिमांड पुरानी जगह में आ जाए, इस वक्त डिमांड की जो अवस्था जो है, कंजम्पशन डिमांड की जो अवस्था है वो अभी भी 2 साल पुराने पीछे की स्तर में है। तो जब तक वो स्तर आगे ना आए, कंजम्पशन डिमांड ना बढ़े, एमएसएमई की डिमांड नहीं बढ़ेगी। एमएसएमई अगर बेच नहीं सकेंगे तो वो कैसे अपना वो आपका अपना जो खाता कैसे खोल लेंगे? तो मैं ये समझता हूँ ये जो सारी जो सरकारी जो स्कीम की जो बात हम कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, ये एक सपोर्टिंग एक फ्रेमवर्क है। लेकिन अभी भी एमएसएमई के लिए रॉ मटेरियल की प्राइसेस के जो तेजी आई है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है वो, बहुत बड़ा चैलेंज, आपने एकदम सही कहा। Yeah, Mr. Bhattacharya, some of the other innovative, announcements which have been made, I want to draw your attention for that. In the railway sector, the minister said one station, one product concept to popularize, local businesses and supply chains. We have all seen, I'm sure you will also recall, if you travel from Delhi to Chennai or Delhi to Trivandrum, every major station would throw up, new products, maybe, eatables, oranges. One particular station, you would be having vendors, selling oranges altogether. In some station, it would be wooden toys, for example. In something else, agarbattis maybe. So this is a wonderful concept which can actually be institutionalized and, focused to increase whatever is locally available is promoted. Well, these are all, ease of living index oriented schemes, This way, definitely it will mean an improvement in the way people undertake their travels. It is somewhat similar to, introducing e-passports for Indians. So I think there is, but this is actually, in my view, not a key focus of the budget. These are all, associated announcements that the budget makers do. The fringe benefits. The fringe benefits, so to say, So, the budget is actually a financial statement of the government, and if you want to looking at that, you realize that the government is tackling a big challenge of how to revive and sustain growth from the impact of COVID. Ensure that government investment crowds private investment. But the challenge it is facing right now is if interest rates go up, then it will restrict its own ability to spend more. I think these are the challenges that this budget beautifully captures and provides the way out. Time will tell whether this is the way out actually to address it. Earlier we spoke about, capital expenditure, an increase of 35%. This is really substantial. Along with that, I want to bring in this point of, the national highway network to be expanded by 25,000 kilometers in 22-23. So don't you think that is an ambitious target? This is a very, very ambitious target. The current year's highways network addition is going to be around 12,000 kilometers, which comes to around 33 kilometers per day. Now, if you want to do it 25,000 kilometers extra for next year, at a time when the NHAI is not in the pink of its health,
and unless you want to involve private sector in a big way to achieve 68 kilometers of road construction, highway construction per day will be a really tough challenge. Yeah, and also incidentally, like you have other incidental, especially big impediment is land acquisition, which is, with the states, and the central government has a different equation with different states. Yes, absolutely. Very true. Yeah. Very true. Yeah, and also let's bring in this point about 60,000 crore rupees allocation which has been made for Har Ghar Nal Se Jal. And this is to cover probably some 3.8 crore households in 2022-23. So 60,000 crores is really huge. Can we expect a substantial portion of our rural population to have pipes and tap water? Yeah, I think I do not know whether you meet the target, but it's a very ambitious, commendable scheme. A lot of work has been done. Like the rural housing, Har Ghar Mein Nal, will again, the quality of life in rural India will get better. Also the ease of living that I was talking about. Don't forget that in the financial inclusion side also, this asking 1.6 lakh post offices to adopt the core business solutions of the banking sector would actually mean financial inclusion. At least the opportunity will be given to a rural Indian from any part of the village to access core business solutions of the Indian banking sector through the post offices. मिस्टर भट्टाचार्य हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में बजट की बारीकियां समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. And now let's go across to another of our analysts, and we are now joined by Professor Yamini Agarwal. Professor Agarwal, a warm welcome to this program. Thank you so much. Yeah, and I'm sure you would have, by now done a threadbare analysis of the entire budget. But first things first, I think we have lost contact with Yamini. Yamini, do we have you online? Yes. Yeah, you're very much there. Okay, so that's what I'm saying. Since morning, I'm sure you would have done a threadbare analysis of the provisions of today's budget. But at the first glance, and as far as the highlights are concerned, the big takeaways are concerned, how do you see today's budget 2022? I see it as a one nation, one big plan, one speed up budget which does take into consideration big schemes like Gati Shakti to a next level with higher investments into infrastructure, giving job opportunities for today and for future. I also see it as impetus given to digital infrastructure to provide basic facilities like education, healthcare, as well as accountability and transparency to the overall system by taking care of social evils like corruption as well as black money. Also, it does provide a strong impetus to the overall growth in the economy by taking into consideration every specific sector one by one. कहूँगा कि जो आज के बजट में दो तीन चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दिया गया है. एक छोटी सी चीज़ की गई है कि सारे जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको पेमेंट बैंक्स में बदलने की जो प्लान किया गया था उसको पूरी तरह से कर दिया गया है. उसका डिजिटलाइजेशन भी कर दिया गया है. पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन की जो एक भूमिका किसी ज़माने में हुआ करती थी वो बड़ा विश्वसनीय सहयोगी हुआ करता था गाँवों में और सुदूर के क्षेत्रों में. इस कदम से जो सुदूर के क्षेत्र वाले लोग हैं वो बैंकिंग व्यवस्था से सीधे तौर पर किस तरह से जुड़ पाएंगे और सरकार इसमें कितनी सफल हो पाई है इस कदम से, एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं जानना चाहूँगा आपसे. जी, बहुत ज़्यादा पहले ही पोस्ट ऑफिस को एक पोस्ट ऑफिस बैंक में तब्दील कर दिया गया था और उसी के साथ साथ जो बैंकिंग की सर्विसेज है वो पहुंचा दी गई थी. जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो क्योंकि पोस्ट ऑफिसेज गांव में हैं और जो एक पोस्टमैन है वो हर गांव के व्यक्ति को जानता होता है, वो उस तक वो सेवाएं पहुंचा पाएगा.
और क्योंकि लोग उसके साथ जुड़े होते हैं और उन सेवाओं के साथ फिर जुड़ सकते हैं, वो अपने लिए कल्याणकारी योजनाओं में भाग ले सकते हैं। कोशिश ये भी रहेगी कि पोस्ट ऑफिस की जो सिस्टम है जिसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक सुचारू रूप से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और उनके लिए आगे ग्रोथ के एवेन्यूज भी हो। तो एक रूरल इंडिया में पेनिट्रेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। Yeah, Yamini, let's also talk about the capital expenditure, which has been hiked by more than 35%, almost 2 lakh crore rupees. So that would be having a big impact, as they say, the multiplier effect of capital expenditure in itself. Can we expect all-round development and benefit to each and every sector of the economy through this capital expenditure? Well, truly, because the entire infrastructure that is being developed is not only focused on the physical infrastructure, which includes roads to the rural area and to the urban area, national highways, ports, railways, which are going to be started new, which is about 400 or so. Also, the development of the digital infrastructure reaching out to every individual, and making the use of this particular infrastructure to provide jobs, which are about 60 lakh or so, as well as to ensure that, the overall infrastructure is very progressive by using and leveraging the technology for the development of the industry in terms of giving it scale for production, also in terms of growth that is needed in the economy to reach to an 8% and a higher growth level. Right. And let's also talk about the rural focus as far as, provision for agriculture and related rural. This particular concept of Kisan drone, eventually when it is made viable and rather economically viable for the farmers to use it, whether it is for spraying pesticides or whether it is for identifying land parcels and all these efforts, do you think it will go a long way in making the life of an average farmer easier with drones being used in the field? I think the technology has been leveraged to the full level to reach out to the agriculture sector also, which includes the drones. Also, the capital goods or the capital equipments which are needed for farm equipments have been made, cheaper, which does add on to the advantages of the farming. We need to recognize that the agriculture sector, despite the pandemic, has been growing at 3.6% and is estimated to grow at 3.9%. The growth that is being seen with the technological developments of the agriculture sector will be enhanced by these technologies. Yeah, and earlier you spoke about the Gati Shakti terminals, 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics. Can we expect this to have an impact? We have seen the logistics boom in the last couple of years with so many online platforms, but specifically from the agriculture point of view, we have always said that logistics is one area where we need to improve. Can we expect this Gati Shakti cargo terminals to play a crucial role in forwarding agricultural produce to the markets? यामिनी, एक बीच में मैं आपको जरूर टोक रहा हूँ, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए गति शक्ति का एक सरल मायने में व्याख्या भी बता दीजिए कि गति शक्ति के मायने क्या है, किस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। जी, गति शक्ति एक ऐसी स्कीम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे सेक्टर्स को, चाहे रोड्स हैं, रेलवेज है और पोर्ट्स है, इन सभी को मिला जुला करके एक ऐसा लॉजिस्टिक डेवलप किया जाएगा जहां पे आसानी से ट्रांसपोर्टेशन, आसानी से मूवमेंट हो सके गुड्स एंड सर्विसेज की। जिसमें एक बहुत जरूरी बात है जो इस सरकार ने समय समय पे कोशिश की है, वो एक भारत बनाने की, एकजुटता के साथ, चाहे वो एक जीएसटी लाना हो, चाहे वो इस गति शक्ति के माध्यम से लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना हो। हमने देखा है कि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स जो अभी भी पेंडेमिक में असर कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी हाई है। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स को हटाने के लिए और लोगों तक कम कीमत पर
सुविधाएं पहुंचाने के लिए और पूरे देश में उस सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जरूरी है कि गति शक्ति जैसी स्कीम लाई जाए और उसका पूरा फायदा हर नागरिक को मिले, क्योंकि हमारा भारत एक बहुत बड़ा भारत है जिसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा है। तो अगर फार्मर कहीं पे प्रोड्यूस करता है और दूसरी जगह उस चीज की कमी है तो वो सामान कम से कम कीमत पे पहुंचाया जाना चाहिए ताकि लोगों तक वो खाना भी पहुंचे और उस फार्मर को उसकी प्राइस भी मिले। जी and let's talk about the highway announcement. National highway network to be expanded by 25,000 kilometers in 22-23. Don't you think that's almost doubling the target from the current levels of roughly 12,000 13,000 kilometers per year? Well, yes, it is a important target which has been maintained for a very long time, primarily to bring about connectivity to the entire country. One needs to understand that the basic infrastructure, which did include roads and railways to reach to every single individual so that economic resources can be used by them or they can be made accessible to them, is an important aspect. Because when roads reach, other facilities also reach, and then the person can connect to the economic activities and contribute faster, whether it's education, whether it is for providing for health services, whether it is anything else. The road connectivity is one of the important means of connecting him to the centers across the country. Right, and let me bring in this aspect of direct taxes. No change, totally silent altogether. What would you say? Were people expecting some tinkering in direct taxes, maybe the slabs or the standard deduction to be hiked, or was it a foregone conclusion that nothing this time around? इसमें भी मैं बीच में आपको जरूर टोकना चाहूंगा। इसमें भी क्या वित्त मंत्री ने ऐसा सोचा है कि एक कुछ मतलब खुले पैसे देने की बजाय उनके उन हाथों तक सीधे तौर पे ना सही लेकिन परोक्ष तौर पे उनके हाथों में मुद्रा की जो फंड्स हैं वो एडिशनल मुहैया करा दिए जाएं जिससे कि उनको कुछ फायदा हो? हालांकि ये जरूर है कि सुनने के बाद इमीडिएटली जो उनका रिएक्शन था उस बारे में शायद कोई बहुत उम्मीद जगत या आशाजनक नहीं रहा। जी देखिए, टैक्सेस के मामले में अगर आप देखें तो पिछले सत्र में ही जो है बजट का रैशनलाइजेशन हो गया था जिसमें कम टैक्सेस लगा दिए गए थे और नई प्रणाली शुरू की गई थी। ज्यादातर माना जाता है कि जो गरीब तबका है या एक अर्निंग मेंबर है वो ज्यादा खर्चा करता है जिसकी वजह से वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का फायदा नहीं उठा पाता। जो अमीर लोग होते हैं क्योंकि वो बचत करते हैं उनको उनका फायदा पहुंचता है। कोशिश ये भी की गई कि जो जिन चीजों में सब्सिडी देनी चाहिए थी जैसे वैक्सीनेशन है या बूस्टर डोजेज हैं उन सब पे पहुंचाई जाए ताकि लोग वापस अपने काम तक पहुंचे। कोशिश ये भी की गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा जो है इकोनॉमी में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएं ताकि ओवरऑल जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। जो एक खास तौर पे ध्यान रखा गया कि लास्ट टाइम जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.5% के का कैलकुलेट किया गया था लेकिन वो 12 और 13% के आसपास पहुंच गया था। इस बार का 6.8 था वो 6.9 पे पहुंचा और उन्होंने उसे मेंटेन करने की कोशिश की है और ये कहा है कि फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए वो 4% 4.5% के आसपास लेकर आएंगे ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी इकोनॉमी की वो रियल सेंस में कंटिन्यू करे और जो मुद्रा जो हमारी रुपए है और जो इसकी कीमत है वो जो है बचाई जा सके और लोगों का उसको पूरा मूल्य मिले। जीडीपी की विकास दर का जो अनुमान 9.2% है ये कितना एक सहज अनुमान मान सकते हैं या कितना ये लक्ष्य प्राप्ति की ओर नजर आता है? जी देखिए, काफी हद तक जो है एक अच्छे अनुमान के साथ चल रहे हैं। 9.2% ग्रोथ और उसके आगे 8% ग्रोथ। जो ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं जैसे पहले भी देखा गया है वो एक देश को जोड़ते हुए रिफॉर्म्स आए हैं, स्टेट्स को टुगेदर लाते हुए रिफॉर्म्स आए हैं। कोशिश की गई है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उन्हें ओवरऑल स्ट्रेंथ दी जाए, लॉजिस्टिक्स के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा और ईज ऑफ कंप्लायंसेस के द्वारा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि लोग
बेहतर प्रदर्शन कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ। संशोधित वित्तीय घाटे का अनुमान को भी बढ़ाया गया है। मेरा कहीं ना कहीं अभी जो चिंताएं हैं, क्या इस चिंताओं को, मेरी चिंताएं वाजिब हैं? एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कितना सहमत हैं इन बातों से? जी देखिए, ओवरऑल जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरीज रहेंगी वैसे वैसे रेवेन्यूज भी जनरेट होंगे और जो वेलफेयर स्कीम्स है उनमें कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहेंगी। अगर आप देखिए महिलाओं की भी स्कीम्स हैं या पीएम सम्मान किसान योजना है या कोई भी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है या उज्ज्वला योजना है, वो सारी एक कंटिन्यूड रही है। पर फिस्कल डेफिसिट को फिर भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कोशिश की है कि वो अनुमानित तौर पे रहे और 6.9% के आसपास रहे। जी यामिनी, हमसे बात करने के लिए और इस सारी चर्चाओं में सरल भाषा में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। कुछ क्षणों में हम हिंदी में जो है आर्थिक सुर्खियों पर नज़र डालेंगे, साथ ही साथ मुख्य समाचारों पर भी नज़र डालेंगे और उसके तुरंत बाद हम वापस लौटेंगे। इस चर्चा को, बजट पे जो विशेष चर्चा है, हम इसको जारी रखेंगे। आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। अगले वर्ष के लिए 9.2% विकास दर का अनुमान। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण का प्रावधान। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। अगले 3 वर्ष में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। किसानों के लिए उच्च तकनीकी सेवाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर दिया जाएगा। एक केंद्र एक उत्पाद योजना को लोकप्रिय बनाया जाएगा। स्टार्टअप उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 की गई है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। देश भर में डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग केंद्र खोले जाएंगे। बजट में भारतीय रेल में पूंजीगत निवेश के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी बुनियादी ढांचे पर जोर नए रोजगार सृजन में सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अधिक निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार और विकास के नए अवसरों के बजटीय प्रावधान से आम आदमी लाभान्वित होगा। औद्योगिक जगत ने बजट का स्वागत किया, इसे विकासोन्मुखी और भविष्योन्मुखी बताया। विपक्ष ने कहा, बजट में गरीबों, किसानों और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं। निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है आम बजट पर हमारी चर्चा। Welcome back. We are continuing this special discussion on the union budget. We have been, having this program right from the morning, from 10:20 onwards, and then we had the speech of the finance minister, and then the analysis continued right up till now, and we will go on, and we'll also have in this series our radio bridge program right from 9:15 to 10 o'clock, where we will go across to different cities in our country and take the reactions on the union budget. But right now, let's continue our discussion, and we are indeed fortunate to have been joined by Shri Tarun Bajaj, the Revenue Secretary. Mr. Bajaj, a warm welcome to this program.
Namaskar. I'm sure the media's attention had been on the finance ministry itself. You would have by now tried and put forth what exactly is in the budget 2022, all the provisions. But to begin with, we will be actually discussing each of the main highlights at least. But to begin with, how do you see and what all would you say are the highlights of budget 2022? I think the biggest highlight of this budget is the emphasis of the government on capital expenditure. So the capital expenditure is proposed to be increased from 5.5 lakh crores to 7.5 lakh crores. In fact, in the last 3 years, the capital expenditure has more than doubled. So this is going to have a big multiplier effect, and this is one of the highlights of the budget. The second thing which is very important and which shows the cooperative federalism which is prevalent in the nation between the center and the state is the 1 lakh crore of amount that has been provided to the states for capital expenditure. So that is again a major highlight of our budget in the current year. Other than that, the expenditure has also gone up on a lot of items. The vulnerable sections have been taken care of, and I think this is a growth-oriented budget that is continuing with the reforms that we had announced in the last year. So I think this is something big which has happened in the budget. On the revenue side, if you ask me questions, I'll answer them separately. Sure. Mr. Bajaj, I also want to bring in this point that, earlier, a couple of years back, we used to always talk about FRBM, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Have we kind of given it a go by now, and, we are waiting for better times? Obviously, the last 2 years, this year and last year, have not been good, and to rein in the fiscal discipline, maybe we can wait for better times. I can answer that question, but now we have the finance secretary with us, and it is his baby. So I think it'll be right and appropriate for me to ask him to answer this question. Indeed, and we have with us Shri T.V. Somanathan, the finance secretary himself. Sir, a warm welcome. We also have with us Shri Tuhin Kant Pandey, Secretary, Department of Investment and Public Asset Management. Gentlemen, a warm welcome to this program. We also have the Chief Economic Advisor, Shri Anantha Nageshwaran. And first of all, Mr. Somanathan, the thing which I put to Mr. Bajaj, FRBM Act, has it taken a backseat that probably, the fiscal deficit, yes, despite the glide slope and all, that this is probably not the right time to look at that. We need to look at growth. We need to look at how to sustain the momentum in the economy. What would you say? Yes, it has taken a backseat, because at this time the focus has been on restoring growth, and this is a global phenomenon, and countries that have typically given us advice on how to run our fiscal affairs are running much higher deficits than India has run during the pandemic, and they're also monetizing their deficits, which our Reserve Bank has never done. So I think we've been very prudent. We've been prudent outside the framework that the FRBM Act had prescribed, because that was the need of the times. Now, in terms of a return to the targets of the FRBM Act, the finance minister has already laid out a path to reach 4.5% of GDP by 2025-26. And we are on course to reach that. We have come down from 9.2% in 2021 to 6.9%, which is actually the single biggest reduction in fiscal deficit ever in a single year. That's substantial. And we are likely to reach we are projected to reach 6.4 next year, and we are on course to reach 4.5 in 25-26. What happens after 25-26 is rather academic at this moment. There's plenty of time, and we'll see. Yeah, that's true. That's true. Mr. Pandey, your first, comment on the budget. What would you say, according to you, what are the big highlights, takeaways from today's budget? I think the biggest, the message of the budget is to create job opportunities and through the capex, and sustainable job opportunities through the capex without putting any additional burden, and while keeping the fiscal situation as in a manageable level, but we have to see the growth and
employment impetus as a primary focus. Right, and let's also take in a quick comment of the chief economic advisor. What would you say, sir? You have just recently taken over the reins, taken over the position. What would you say as far as this particular budget is concerned? How do you see it? So it actually continues the framework that last two budgets have set. If you look at it, the government has obviously had to respond to the pandemic. So the last 2-3 budgets have been about a response to the pandemic and therefore short-term relief and support measures to the economy, especially to vulnerable sections. Second, of course, as is the case in India and globally, use the crisis as an opportunity to usher in supply-side reforms. 3, also to create supply-side reforms as well. Number 4, I would say many process improvements, including budget transparency, have been brought in during these crisis years, and this budget continues the tradition. So I would say that this budget continues the framework of relying on 3 pillars: short-term support to the economy, process reforms including budget transparency, using crisis as an opportunity to usher in supply-side reforms, and this budget actually meets these 3 criteria or the framework. Yeah. Mr. Somnathan, a 35% increase as far as capital expenditure is concerned, close to some 2 lakh crore rupees. Can we expect the trickle effect into the entire economy as quickly as possible? That's the idea. The whole intention is that, and I think it's likely to happen because one new feature of this budget is that a substantial portion of that increased capital expenditure will be spent by state governments through this scheme of 1 lakh crores of 50-year interest-free loans that will be given to state governments. So the kind of capital projects that will be taken up this year are not just national highways and railways and pipelines and telecommunication lines. They are grounded projects of the states which are of capital nature, and they have a lot of employment generation potential. So I think that will help maximize the employment effects of this capital expenditure. These are likely to be more labor-intensive capital projects than the typical central projects. In addition, I think the central projects also have very large multiplier effects. They will generate jobs through the effects of the contracts that are awarded, the workers that are employed, the companies that have to supply materials and components to these projects. So we'll have a cascading effect. I think there's likely to be a very large cascading effect. Right. Mr. Pandey, recently the entire country has seen the divestment of Air India. Although it was more symbolic now, it was done much before. But moving ahead, what would you say? It's often been repeated and highlighted that the business of government is not to be in business, in hardcore commercial business. Maybe the government should focus its attention on other sectors. So, as far as divestment is concerned, what would you say? Well, I think broadly that is the message that the new PSC policy transmits to us, and it makes it clear that we should go for privatization. But as I said that we are right now, I think one of the more important tasks is for not actually privatization, but making the public ownership possible for an organization like LIC, and that is, I think, immediate task for us. So that is on track, it seems. And plus, of course, the other transactions which are already on the offing, we need to conclude them one by one and also launch more transactions. Okay, fine. Mr. Bajaj, what would you say? No tinkering with the tax rate, direct taxes. Probably, there were expectations that there could be some change in the slabs, or standard deduction being hiked. Nothing of that sort happened. Was it kind of on expected lines? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा बजाज साहब, इससे पहले कि आप इस बात का जवाब दें। क्या सरकार की मंशा ये थी कि हम छोटी छोटी छूट को दरकिनार करते हुए आम जनता के हाथ में सीधे तौर पे ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली हम उनके हाथ में ज्यादा पैसा मुहैया करा सकें, जिससे कि वो उसका उपयोग चाहे वो बचत में हो या निवेश में हो, वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। सरकार की किस सोच के साथ इस तरह की चीजें की? क्योंकि आमतौर पे एक मध्य वर्ग है, कहीं ना कहीं उसको होता है कि आयकर में कितनी छूट मिली सीधे तौर पे, उसका फोकस कहीं ना कहीं वही रह जाता है। तो छूट मिली भी और नहीं भी मिली, इसको किस तरीके से आप दर्शाएंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ छूट तो हमने कुछ क्षेत्रों में दी है, कुछ सेक्शंस को दी है, लेकिन अगर आप देखें तो मेरे पास
जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 6.3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, और वो जो टैक्स देते हैं उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जो कि इनकम 5 लाख से कम की दिखाते हैं, 92% हैं जो कि 10 लाख से कम दिखाते हैं। तो ये जो टैक्स पेयर्स हैं, ये बेसिकली इनसे हमें कोई टैक्स नहीं मिलता है या शून्य की मात्रा में मिलता है। लेकिन आपका सीधा जवाब देने के लिए मेरे पास ये कहना है कि हमारे पास 2 विकल्प थे कि हम टैक्स कंसेशन देते इन 1 करोड़ लोगों को, या हम अपना टैक्स रेवेन्यू को बॉयंट रखते हुए जो एक्सपेंडिचर जो बहुत आवश्यक है, जो ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी चीज़ों में एक्सपेंडिचर है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, उनको जो हमने प्रावधान देना है वो हम दे पाएँ, तो वो बहुत आवश्यक था। तो इसलिए अगर आप देखें तो एक्सपेंडिचर में आरई के क्षेत्र, आरई में भी इस साल और अगले साल बी में भी इंक्रीज है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की चर्चा तो आप कर ही चुके हैं जिसमें कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीज है, और पिछले 3 साल में ये डबल से ज़्यादा हो गया है। तो ये सब करने के लिए इकॉनमी एक बार ग्रोथ पे आएगी तो इनकम लेवल्स अपने आप बढ़ेंगे, और इस बार हम रिटर्न्स को ज़्यादा एनालाइज करके ये भी देख सकेंगे, थोड़ा टैक्स बेस बढ़ेगा कि हम आगे आने वाले समय में कुछ रिलीफ दे। क्या ये जो आयकर की जो रिटर्न्स हैं उसको 2 साल तक के लिए उसको संशोधित करने के अनुमान है, वो भी इसी दिशा में एक कदम है? जो 2 साल में संशोधित करने का हमने जो प्रावधान बनाया है वो इसलिए बनाया है कि आज के दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन है असेसीज के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में। साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ कि टैक्स पेयर भी कई बार गलती कर जाता है, रिटर्न फाइल करता है लेकिन उसको 2 या 3 महीने के बाद हम कहते हैं अब आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, अब हम आपको नोटिस देंगे, आप पे पेनल्टी लगाएंगे, आपसे टैक्स की वसूली करेंगे, जो कि लिटिगेशन को बढ़ाता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 2 साल तक अगर किसी टैक्स पेयर को पता लगता है कि उसने टैक्स देने में थोड़ा सा कोताही की है या टैक्स नहीं दिया है, तो वो अपना टैक्स दे सकता है, और इससे मेरा विश्वास टैक्स पेयर की तरफ इस चीज़ को दर्शाता है। तो ये उस But Mr. Bajaj, what would you say? Is this provision of revising and modifying the returns within 2 years, is it in the sense of an amnesty, an ongoing voluntary disclosure kind of a thing? That's a good question that you're asking me. So it is not an amnesty at all. Okay. So this is a provision which is there to stay if it gets passed by the parliament this year. So basically what we are saying is that people who are not able to file their return, who are not able to show their income correctly and realize this mistake at a later stage, they can actually pay those taxes along with certain extra taxes and get away with it and get away with it. But remember, this is before they have been found out by anybody. This is voluntary. Okay, yeah, this is voluntary. That's why I said, is it kind of an ongoing, It's a an voluntary ongoing disclosure income scheme, rather than... No, it is not a... Once in a... It doesn't operate if you've been found out. Okay. You cannot do it after you've been... so that challenge is always there. That if we find out that somebody is trying to evade then taxes, it's not available to you. Then it is not available to you. But you may realize, suppose you were traveling for 1 year outside the country, you didn't file your return, you want to come back and file your return. This gives you an option. Otherwise, you didn't have an option of filing your return. That's true. इसका एक कदम का मतलब अभी ये भी कह सकते हैं कि सरकार जो है वो करदाताओं, मतलब जो टैक्स पेयर है, उस पे भरोसा बढ़ाने की तरफ भी कदम बढ़ा रही है कि अब कोई बात नहीं, 2 साल में भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज छूट गई है तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल आपने सही बात की, मैं यही बात कहना चाहता था, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से बताया है कि हम टैक्स पेयर पे अपना विश्वास जता रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि 2 साल का समय है, कोई गलती हो गई हो, नहीं सोच नहीं लीजिए, कोई गलती हो गई हो, गलती भी हो जाती है। मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरा कोई बैंक अकाउंट है, मुझे मालूम ही नहीं होगा, उधर से मुझे इंटरेस्ट आया 3,000 रुपया, मुझे मालूम ही नहीं है, उस इंटरेस्ट पे मुझे टैक्स देना है, तो ये मेरे को प्रावधान अब देता है कि मैं टैक्स दे सकता हूँ। नहीं तो पहले क्या व्यवस्था थी, पहले मैं जाता किसी असेसिंग ऑफिसर, उससे कहता मुझे नोटिस दे, वो मुझे नोटिस देता, फिर मैं उसका जवाब देता, फिर हमारा एक ऑर्डर आता, उस ऑर्डर में कुछ पेनल्टी होती, तो लंबा किस्सा, लिटिगेशन क्यों करें। Yeah, but Mr. Bajaj, I want to bring in this particular aspect into our discussion, that it's been many years since that the ATC limit of 1.5 lakhs has not been touched at all, and inflation has moved up. We have had the implementation of the 7th pay commission, and the cascading effect in the private sector as well. Salaries have gone up. So isn't it eating into the amount of money which a common man has in his hand and is able to spend? What I would like to say is that in the last year, we came up with a
provision where you could pay lower taxes but take no exemptions. Okay. So that is a new scheme that we have brought out, which scheme is also there for the corporate sector, that if you don't take exemptions, you pay a lower rate of tax. So our whole idea is that if you are making some money, you pay taxes, the taxes should be lower. Rather than taking a plethora of exemptions and trying to work around it, which raises litigation, which raises the complexity in the taxation system. So the whole idea is that we want to wean away people from the exemption regime to the non-exemption regime, and they pay lower taxes, which is a facility which is available today, and people, in my view, who have higher income would have taken advantage of this and would have paid lower taxes by not taking exemptions. इस चर्चा में हम अब स्वागत करेंगे श्री अजय सेठ का, जो आर्थिक मामलों के सचिव हैं। अजय जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। और इस भरे पूरे पैनल्स में मैं सीधी दो तीन चीज़ें एमएसएमई के ऊपर जानना चाहूँगा कि एमएसएमई के लिए दो चीज़ें बताई गई हैं। एमएसएमई के लिए आपने जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन है स्कीम, उसका दायरा बढ़ाया है, उसको 5 लाख करोड़ तक का किया गया है और 2 लाख करोड़ का एक एडिशनल उसमें फंड दिया गया है। इन दोनों के मायने सोमसुंदरम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको एमएसएमई के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन को बढ़ाया गया है, इसके फौरी मायने क्या हैं और इस Yes, sir. Yeah, go ahead. You're probably Amit, you are addressing to the chief economic advisor. Okay. So the emergency credit line guarantee scheme has been quite instrumental in keeping the stress in the MSME sector within very manageable levels, and that showed up in RBI's annual report on these trends in banking in India, where the expected non-performing assets did not happen. So clearly, the ECLGS scheme has been very, very instrumental in reducing MSME stress. And that is why this scheme has been extended for 1 more year, and an additional allocation of 50,000 crores has been made exclusively for the contact sectors. And if you see the data that got released in January first week, and if you look at the activity levels in the tourism hospitality industry, that is one area where we are still about 8% below the pre-pandemic level. Okay. And that is why this extension of the ECLGS has been made exclusively for the contact sectors to help them come back to the pre-pandemic levels, which other sectors have already come back to. This Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises scheme, can you elaborate these things? What is it and how it can be beneficial to any of the MSME directly? No, so right now we have a credit guarantee trust, and so if by putting in more capital into this scheme, basically the financial institutions that are able to give credit to the MSME sectors will now have a broader capital base, and this trust fund will compensate them. And because the current ECLGS scheme has come with specific provisions. Okay, and it is related to what happened during the pandemic. But the Credit Guarantee Trust for MSME is a permanent institutional arrangement. By providing more capital into that structure, it is not an emergency scheme. It is a permanent arrangement which provides a financial backstop to the lending institutions and encourages them to take more risk in terms of lending to uncollateralized and pure risk-based MSME loans. So it clearly gives a comfort, a cushion to financial institutions to make more loans to MSMEs. So that means clearly means that the MSME will get the lower interest rates on this particular under this particular trust. I'm not sure that it is involved. Yeah. No, I'm not sure the particular scheme involves lower interest rates. It simply provides a financial backstop to the lending institutions, therefore encouraging them to shed their risk aversion in terms of lending to small, micro and medium enterprises. इसके बारे में अगर मैं ये भी कह सकूं, जो ये ट्रस्ट स्कीम की बात हुई है CGTMS की, इसकी रीवैम्पिंग की जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें ये ट्रस्ट एक फी भी लगाता है, जो फी बोरोवर को देनी पड़ती है जी। तो अब ये जो रीवैम्पिंग होगी उसमें इस बात को भी देखा जाएगा क्या फी ज़्यादा है, उसे कुछ कम करने की गुंजाइश है,
जिससे वो क्रेडिट में उसके जो इफेक्टिव रेट जो बोरोइंग रेट होगा उसमें भी क्या कुछ कमी की जा सकती है, तो उसके बारे में भी अभी उसकी डिटेल्स वर्कआउट करनी है। धीरे अगर इसको मोटे तौर पे माना जाए, जिस तरह सिडबी ने भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो गारंटी स्कीम निकाल के दी थी और उसमें भी कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट का बोझ था वो कहीं ना कहीं सिडबी बियर करता था, क्या मोटे तौर पे कहीं ना कहीं उसी फ्रेमवर्क में है? नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। ये ट्रस्ट जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं देता है जी, एक गारंटी देता है, लेकिन तो उसके लिए कोई भी संस्था जो गारंटी दे रही है उसकी खुद की भी कुछ रिस्क कैपिटल होनी चाहिए, तो वो सरकार देती आई है, लेकिन वो शायद पर्याप्त नहीं है। उसके चलते एक तो वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, तो अगर उनकी वो हम जो रिस्क कैपिटल वो बढ़ाएंगे तो 2 लाख करोड़ का क्रेडिट और वो गारंटी दे सकते हैं। दूसरी बात जो अभी उस पर वो फी लगा रहे हैं गारंटी फी, उसे कुछ कम करने की क्या गुंजाइश है, उसके बारे में भी अभी हम एक रिक्वायरमेंट हमने नोट करी है और उसके बारे में भी मंत्रालय के साथ चर्चा करके निष्कर्ष पे पहुंचे। Mr. Nageshwaran, now let's turn our attention to taxing cryptocurrency as such. Is it a step towards recognizing cryptocurrency? There has been kind of flip flops at times. If in the last 4-5 years, if you see, at one time it was held that this is totally illegal and probably it will be banned sooner or later by the government, but nothing of that thing happened, and RBI also came out with certain clarifications. But now, when you have taken cognizance of a particular asset class and you have taxed it, so isn't it getting closer to kind of recognizing it? No, not necessarily. Not Both necessarily. should be kept separate. Okay. There is a separate discussion going on, and the government is examining the regulation of the cryptocurrency and these alternative digital assets. That's a separate discussion. But the government always has the prerogative to tax economic transactions, whether they are legal or illegal. I mean, if someone received a black money and then built a house on that basis, and then later on the house is sold at a capital gain, the government still has the right to tax the And capital obviously, gain income tax arising. does not distinguish between tainted money and untainted. The revenue has the right to tax transactions whether they are legal or illegal, and this doesn't therefore create an implicit assumption that therefore the government is recognized, or that is a separate discussion. That's a separate discussion. Yeah. Okay. मिस्टर सेठ, मैं ये जानना चाहूँगा, जो रेलवेज के लिए 1,40,000 करोड़ से अधिक का जो प्रावधान किया गया है बजटीय अनुमानों में, उसमें क्योंकि रेलवे का जो परिचालन खर्च ऑपरेटिंग रेशियो है वो भी काफ़ी बड़ा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें तो सीधे सीधे तौर पे जो उनकी सैलरीज हैं उस अकाउंट में भी खर्च हो जाते हैं। क्या इसको पर्याप्त मानते हैं, या इसमें भी, क्योंकि बहुत सारी नई परियोजनाएं रेलवे चला रहा है और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रेलवे चूँकि बहुत जगह जगह पहुँचा हुआ है, वहाँ पे लोकल लेवल पे रोज़गार भी दे पाता है, एक सीधा फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है। कितने सहमत है इस बात से, और क्या रेलवे का उद्देश्य भी यही है कि हम कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें, साथ ही साथ सुदूर क्षेत्रों में पहुँचे हुए आदमी को भी हम रोज़गार उत्पन्न करा सकें? देखिए, ऐसा कि जो रेलवे का रोजगार, ये जो विजन आपने जिक्र किया, ये एक नए इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो जो उनके परिचालन के लिए जो खर्चा है वो अलग है जी। इसमें जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है या जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए जो प्रोविजन चाहिए, या जो नई ट्रेन लेनी है या सेफ्टी सिस्टम्स लगाने हैं, उनके लिए है। दूसरा, ये रेलवे एक साधन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन वो जितनी रफ्तार से, जितनी एफिशिएंसी के साथ वो गुड्स को इधर से उधर ले जा सकते हैं, लोगों को मूवमेंट में मदद कर सकते हैं, उससे वो मदद करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। Yeah. Talking about railways, Mr. Nageshwaran, what would you say? 400 new generation Vande Bharat trains to be developed in the next 3 years. Will also be, the old style coaches or the locomotives, rolling stock, will they be phased out also during this period? या ये सिर्फ इसका ये नहीं माना जाए कि I just want to add something कि this is due to because the line capacity enhancement is not possible with the old type of coaches, and this type of technology can be added to achieve such kind of targets. I think probably his response answers your question. Yeah. So, इसका भी बात ध्यान रखें कि दो चीज़ें हैं। एक तो उस स्पीड के कोच हिंदुस्तान में ना भी बन रहे थे, ना ही हमने इंडिजिनियसली बनाए थे जी। तो भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक तो उसका जो एक डिज़ाइन है, बेसिक डिज़ाइन,
वो इसमें उस पे बनेंगे ये नए कोच, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ वो ट्रैक लेवल इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है. Right. Fine. Now, we are coming towards the end of this segment of our discussion. Mr. Nageshwaran, we earlier talked about the cryptocurrency. As far as RBI is concerned, now have we touched the rock bottom of interest rate regime? And from here on, do you think interest rates will firm up and move in? No, it wouldn't be appropriate on my part to give a public comment on what the central bank should be doing or will be doing. Okay. So I would scenario, the central banks across the world. The hardening of rates. I mean, as Dr. Somanathan responded to your question about the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, the developed countries had overextended themselves both in terms of fiscal policy and monetary policy, and therefore they are in the process of unwinding their stimulus measures. So I think that doesn't necessarily apply automatically to our situation. Right. Well, listeners, you are tuned in to our post-budget discussion and analysis. It's time now for the English news headlines, and after that, we will continue our discussion. Good evening. This is All India Radio. I'm Gaura Dhawan Lal, and with me is VC Pramod with the evening news. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget for 2022-23, projects a growth of 9.2% for the coming year. Additional credit of 2 lakh crore rupees for MSMEs to be provided under Credit Guarantee Trust for micro and small enterprises. In the spirit of PM Gati Shakti, National Highways network to be expanded by 25,000 kilometers, 100 cargo terminals for multimodal logistic facilities to be developed in next 3 years. Delivery of digital high-tech services to farmers in PPP mode. One station, one product concept to be popularized. Last date for tax incentive for startups extended by 1 year up to 31st of March 2023. National Tele-Mental Health Program for better access to quality mental health counseling to be launched. 75 digital banking units in 75 districts by scheduled commercial banks to take digital banking to every nook and corner of the country. Indian Railways receive an outlay of 1,37,000 crore rupees capital investment support in the budget. Finance Minister says increased capital expenditure and emphasis on infrastructure in the budget will have immediate impact on job creation. Prime Minister Narendra Modi says with more investment, infrastructure, employment and development opportunities, budget will give a financial boost and benefit the common man. Industry bodies welcome the budget, calling it growth-oriented and future-looking. Opposition says budget has nothing for the poor, farmers and downtrodden. Election Commission appoints 15 special observers for assembly elections in Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh. And in Under-19 Cricket World Cup, India to take on Australia in the semi-final tomorrow at Antigua. As the number of COVID-19 cases is rising fast in several parts of the country, we appeal to our listeners to be vigilant and to get fully vaccinated and help others, including children between 15 and 18 years, also get vaccinated. With the new Omicron variant of coronavirus causing concern, please continue to follow these 3 simple steps to stay safe. Wear a face mask, maintain 2 gaz ki duri for social distancing, and focus on hand and face hygiene. For any COVID-related information and guidance, contact the national helpline numbers 011 239 78046 and 1075. And now, the news in detail. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, the highest among all large economies. Presenting the Union Budget 2022-23 in Parliament today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said overall sharp rebound and recovery of the economy from the adverse effects of the pandemic is reflective of the country's strong resilience. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience.
India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. The finance minister said the nation is marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and has entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. She said the government aims to attain the vision of the Prime Minister outlined in his Independence Day address. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. The finance minister said Budget 2022-23 reflects the firm commitment of the government to boost economic growth by investing in infrastructure development. This is substantiated by an increase in capital expenditure by 35.4%, that is over 1,96,000 crore rupees over the budgetary estimate of 2021-22. Under the budget, the total resources being transferred to the states is 16,11,781 crore rupees. The outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. Ms. Sita Raman said the latest GDP estimates and movement in key economic activity indicators confirm the strengthened momentum of India's economic recovery. India's nominal GDP is expected to grow by 11.1% in the financial year 2022-23 over 2021-22. The finance minister said in the railway sector, the minister said the one station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chain. The minister said capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects will be ramped up. National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. 1,500 crore rupees have been allotted under the PM Development Initiative for the Northeast Region or PM Divine Programme.
The minister said multimodal logistic parks at 4 locations through public-private partnership PPP mode will be implemented in 2022-23. The National Digital Health Ecosystem will be rolled out and the National Tele-Mental Health Programme will be launched for quality counselling, the minister said. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele-mental health centers of excellence, with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology, Bangalore, IIIT Bangalore, providing technology support. To give a boost to digital banking by post offices, 100% of post offices are to be brought under the core banking system. The minister said the government is keen on promoting chemical-free natural farming, starting with farmers' lands close to the river Ganga. It also envisages to promote post-harvest value addition, consumption and branding of millet products. Talking about the benefits of digital banking, the finance minister said, to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. The financial support for digital payment ecosystem announced in the previous budget will continue in 22-23 as well. This will encourage further adoption of digital payments. E-passports using embedded chips and futuristic technology will be issued in 2022-23 to enhance convenience for citizens for overseas travel. A battery swapping policy will be launched in view of the constraint of space in urban areas for setting up charging stations for electric vehicles. One Nation, One Registration software will be promoted under NGDRS. It will be a uniform process for registration and anywhere registration of deeds and documents. The auction of required spectrum for the rollout of 5G mobile services will start in 2022. The contract for laying optical fibre cable in all villages, including remote areas under the BharatNet project, will be awarded through PPP in 2022-23. In order to reduce imports and promote Atmanirbharta in equipment for the armed forces, 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 2022-23. This is 10% more compared to 58% during the current fiscal. The digital rupee will be introduced using blockchain and other technologies. It will be issued by the Reserve Bank starting 2022-23. As against a total expenditure of 34.83 lakh crore rupees projected in the budget estimates 2021-22, the revised estimate is 37.70 lakh crore rupees. The revised estimate of capital expenditure is 6.03 lakh crore rupees. In the budget estimates, total expenditure in 2022-23 is estimated at 39.45 lakh crore rupees, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crore rupees. The revised fiscal deficit in the current year is estimated at 6.9% of GDP. The fiscal deficit in 2022-23 is estimated at 6.4% of GDP, which is consistent with the broad path of fiscal consolidation announced by the government last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 2025-26. While dwelling upon the direct tax proposals contained in the Union Budget for the year 2022-23, the Finance Minister announced a new provision to permit taxpayers to file an updated return on the payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that capital expenditure has been increased to generate more jobs and thrust has been given on it in the Union Budget. Briefing media in New Delhi after presenting the budget, Ms. Sitharaman said increased outlay for capital expenditure or public investment will have immediate impact on job creation, and production-linked incentives for new manufacturing units are being provided in 14 sectors, which will also create jobs. She said emphasis has been given on infrastructure sector so that more jobs are created. The minister said
Pandemic snatched away so many jobs across the world, and the Atmanirbhar Bharat package saved the jobs of a lot of people. She said government is trying to help those who lost their jobs through various schemes. Ms. Sitharaman said several steps have been taken to increase the income of farmers, like provision of MSP procurement, solar pumps and agri-credit. Replying to a media query, the finance minister said the hospitality sector needed support as the sector was in difficulty post-second wave of the COVID-19 pandemic. First thing about hospitality and contact intensive. I've said hospitality and related sectors. This was one thing which has come out repeatedly from very many stakeholders, and we recognize that post the second wave, hospitality is in difficulty and they needed support. The tested and sort of proven formula was the Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme. Since that had worked out well for the MSMEs, we thought that formulation is the best to be adopted. So to the existing 4.5 lakh crores of sovereign guarantee, we added 50,000 crore more sovereign guarantee and wanted the hospitality and contact intensive sectors to benefit out of it. So that is the scheme. As it is, many of them are still approaching their banks. Banks can, even without the ECGLS, help them out if they want. But if ECGLS has to be extended, yes, we have given provision of 50,000 crores for it. She said emergency credit line guarantee worked well for MSMEs and government has added 50,000 crore rupees to ECLGS for benefit of hospitality and related sectors. Ms. Sitharaman said Air India sale shows government's intent on divestment. She added that LIC IPO in all probability is going through this year. On a question on cryptocurrency, she said the RBI will issue digital currency. We are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it, and what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. Replying to a question, the minister said government has not tried to earn even a single paise by increasing tax this year and even last year. She said the Prime Minister had given clear instructions that people should not be burdened with taxes at the time of the pandemic, notwithstanding the deficit. Prime Minister Narendra Modi has said that this budget will strengthen the economy and create new opportunities for common man. Speaking on Budget 2022-23, which was presented in Parliament today, Mr. Modi said this will give a financial boost and benefit the common man with more investment, infrastructure, employment and development opportunities. He said this budget is full of new possibilities for infrastructure, investment and growth and jobs. विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। The Prime Minister said this budget will also open up the field of green jobs. He said for the first time in the country, the Parvatmala scheme is being started for areas such as Himachal, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and the Northeast. The scheme will create a modern system of transportation on the mountains. जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर
नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। You are listening to the evening news on All India Radio. A reminder of the headlines before we move on. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget for 2022-23, projects a growth of 9.2% for the coming year. Additional credit of 2 lakh crore rupees for MSMEs to be provided under Credit Guarantee Trust for micro and small enterprises. In the spirit of PM Gati Shakti, National Highways network to be expanded by 25,000 kilometers. 100 cargo terminals for multimodal logistic facilities to be developed in the next 3 years. Delivery of digital high-tech services to farmers in PPP mode. One station, one product concept to be popularized. Last date for tax incentive for startups extended by 1 year up to 31st March 2023. National Telehealth Program for better access to quality mental health counseling. 75 digital banks in 75 districts by scheduled commercial banks to take digital banking to every nook and corner of the country. Prime Minister Narendra Modi says with more investment, infrastructure, employment and development opportunities, the budget will give a financial boost and benefit the common man. Industry bodies welcome the budget, calling it growth-oriented and future-looking. Opposition says budget has nothing for poor, farmers and downtrodden. And in Under-19 Cricket World Cup, India to take on Australia in the semi-final tomorrow at Antigua. For quick news updates round the clock, follow us on Twitter at AIR News Alerts. चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। Welcome back to the evening news. Union Minister Nitin Gadkari said the union budget focuses on the growth of infrastructure, which will lead to career opportunities for the youth. He said the budget will pave the way for Prime Minister Narendra Modi's vision of a new India. Industry leaders have also welcomed the budget. The president of FICCI, Sanjeev Mehta, has termed the budget as growth-oriented. Talking to reporters, he complimented Finance Minister Nirmala Sitharaman for bringing out a bold budget. We are, as a business, very pleased with that there has been broad consistency in the policy, in the tax rates. We are also pleased with the boldness of the budget, that we are all conscious that it will take some time for private consumption expenditure and the private capital expenditure to pick up. So still there is a very clear glide path of fiscal deficit, which is absolutely the right thing. From 6.9% this year, it is looking like 6.4%. That's what the Honorable Finance Minister is targeting. Now, the good bit has been the boldness with which the budget outlay on capital expenditure has been. Increasing by 35% is absolutely the right thing to be done. And that clearly indicates that this is a growth-oriented budget. ASSOCHAM has welcomed Finance Minister Nirmala Sitharaman's decisions to focus on green energy and reducing logistic costs in the union budget. CII President-designate Sanjeev Bajaj called the union budget growth-oriented and said it focuses in the right direction.
Talking to AIR News, Director General of CII, Chandradeep Banerjee, said it is a future-looking budget with tremendous focus given on infrastructure. He said focus has also been given on ease of doing business. I see a lot of focus also given to ease of doing business. Ease of doing business we have been talking about for a long time. We see a trust-based approach by the government, digitization of lots of manual forms which were earlier there. There is a focus on that, on MSME credit, and that was something that we have been talking about, and I see the extension of the ECLGS to the next year, which is something that we have been talking about. So I think the government has really focused on infrastructure and continuing, which is a very, very important thing. Number two, another area I would like to say is we don't see any flip-flop of the government on reforms. In fact, we were talking about DISCOMs and power sector reforms. There is a lot of power given to the states to actually do those reforms. And the focus on the states and the money to the states are very, very important features. The opposition has criticised the budget, saying it has nothing for the poor, farmers and downtrodden. Congress leader and former Finance Minister P. Chidambaram criticised the union budget, saying that it focuses more on the future rather than the present. Briefing the media in New Delhi, Mr. Chidambaram said cryptocurrency is not beneficial to 99.99% of people of the country. On the contrary, another senior Congress leader and former Union Minister Shashi Tharoor termed the government's proposal on digital currency as a reasonable proposition. Talking to the media outside Parliament, Mr. Tharoor said it was very clear that as far as digital currency is concerned, the government was heading in that direction. Samajwadi Party leader Professor Ram Gopal Yadav said the budget is very disappointing and it is for the affluent class. CPI General Secretary D. Raja said the budget does not address the current critical issues related to the Indian economy. Harshit Bhavari, Director Financial Services Shillong, said that the union budget presented today is a very capital-intensive spending budget. He also spoke about the new scheme added under the preview of the NEC. He emphasized on the importance of road, rail and air infrastructure to transport goods produced in the northeast to the mainland India. Prime Minister Narendra Modi will talk about today's people-friendly and progressive budget at a program tomorrow at 11 a.m. In a tweet, Mr. Modi said, people from all walks of life have welcomed the Atmanirbhar Bharat Ka budget. You are listening to the evening news on All India Radio. For quick news updates round the clock, follow us on Twitter at AIR News Alerts. Best wishes to all consumers for Azadi Ka Amrit Mahotsav. Hallmark ensures purity of gold. Always purchase Hallmark gold jewellery. For any consumer-related complaints, please contact National Consumer Helpline's toll-free number 14404. Issued in public interest by Department of Consumer Affairs, Government of India. Jago Grahak Jago. The Election Commission of India ECI today appointed 15 special observers for the assembly elections in Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh. The ECI held a briefing with the observers for ensuring smooth conduct of elections. ECI said special observers will be supervising and monitoring the work being done by the electoral machinery in states and oversee the entire poll processes as the eyes and ears of the Commission on ground. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Prince Salman conveyed greetings on the occasion of the Republic Day of India. Both leaders reviewed the bilateral relations between India and Bahrain and expressed satisfaction that the relationship has seen continued progress in diverse sectors, including political, trade and investment, energy, health, security and people-to-people contacts. India and Bahrain are celebrating the Golden Jubilee of the establishment of diplomatic relations between the two countries in 2021-22. Four-time champions India will take on Australia in the semi-final of the ICC Under-19 World Cup 2022 at the Coolidge Cricket Ground in Antigua tomorrow at 6:30 p.m. Indian time. Meanwhile, the first semi-final between England and Afghanistan is underway at the Sir Vivian Richards Stadium in Antigua. In Now Before We Close, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents Union Budget for 2022-23. Projects a growth of 9.2% for the coming year.
Additional credit of 2 lakh crore rupees for MSMEs to be provided under Credit Guarantee Trust for micro and small enterprises. In the spirit of PM Gati Shakti, National Highways Network to be expanded by 25,000 kilometres, 100 cargo terminals for multimodal logistic facilities to be developed in next 3 years. Delivery of digital high-tech services to farmers in PPP mode, one station, one product concept to be popularized. Last date for tax incentive for startups extended by 1 year up to 31st March 2023. National Tele-Mental Health Program for better access to quality mental health counselling to be actioned. 75 digital banking units in 75 districts by scheduled commercial banks to take digital banking to every nook and corner of the country. Indian Railways receive an outlay of 1,37,000 crore rupees capital investment in support in the budget to be launched. Finance Minister says increased capital expenditure and emphasis on infrastructure in the budget will have immediate impact on job creation. Prime Minister Narendra Modi says with more investment, infrastructure, employment and development opportunities, budget will give a financial boost and benefit the common man. Industry bodies welcome the budget, calling it growth-oriented and future-looking. Opposition says budget has nothing for the poor, farmers and downtrodden. Election Commission appoints 15 special observers for assembly elections in Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh. And in Under-19 Cricket World Cup, India to take on Australia in the semi-final tomorrow at Antigua. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the evening news. Good night. आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का मरकज़ी बजट पेश किया, जिसमें आइंदा साल के लिए 9.2% की शरह तरक्की का निशाना मुकर्रर किया गया है। किसानों को पीपीपी तरीक़ाकार के तहत डिजिटल हाईटेक खिदमात फराहम की जाएंगी। एक स्टेशन एक चीज़ के तसव्वुर को मकबूल आम किया जाएगा। दिमागी सेहत की क्वालिटी काउंसलिंग तक बेहतर रसाई के लिए दिमागी सेहत का कौमी टेली प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवेज़ को असासा जाती सरमायाकारी में मदद के लिए बजट में 1,37,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि बजट में असासा जाती अखराजात में इजाफे और बुनियादी ढांचे पर ख़ास तवज्जो से फौरी तौर पर रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मज़ीद सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे और मौक़ों की तख्लीक़ से माली फ़रोग़ और आम आदमी को फ़ायदा हासिल होगा। और एंटीगुआ में 19 साल से कम उम्र के क्रिकेट आलमी कप के सेमीफ़ाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। जैसे कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीक़े अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज़ की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ़ रखने पर ख़ास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में 2022-23 का मरकज़ी बजट पेश किया। उन्होंने लगातार दूसरी मरतबा बग़ैर कागज़ वाला बजट पेश करते हुए कहा कि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वो अमृत काल में दाखिल हो गया है, जो इंडिया एट 100 तक का
25 साल का सफ़र है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि बजट 2022-23 से बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए की जाने वाली सरमायाकारी के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के हुकूमत के मज़बूत अज़्म का इजहार होता है, जिसे असासा जाती इखराजात में 35.4% इजाफा करके अमली जामा पहनाया गया है, जो 2021-22 के बजट तखमीने में बताए गए 1,96,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। बजट के तहत रियासतों को मुंतकिल किए जाने वाले कुल वसाइल 16,11,781 करोड़ रुपए मालियत के हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP के बारे में उम्मीद है कि इसमें 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के माली साल में 11.1% का इजाफा होगा। रेलवे के शोबे में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मकामी कारोबार और सप्लाई चेन में मदद के लिए एक स्टेशन एक चीज़ के तसव्वुर को मकबूल किया जाएगा। ज़्यादा आबादी वाले शहरी ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के दरमियान कई तरह के राब्ते तरजीही बुनियाद पर कायम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि PM गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में तेज़ी लाई जाएगी। PM डिवाइन प्रोग्राम के तहत 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मगरिबी रियासतों में 500 करोड़ रुपए की लागत से आइजोल दर्रे की तामीर की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 2022-23 में PPP तरीक़ाकार के तहत 4 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कायम किए जाएंगे। सेहत का कौमी डिजिटल निज़ाम शुरू किया जाएगा और क्वालिटी काउंसलिंग के ज़रिए दिमागी सेहत का कौमी टेली प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। डाकघरों के ज़रिए डिजिटल बैंकिंग को फ़रोग़ देने के लिए 100% डाकखानों को कलीदी बैंकिंग निज़ाम के तहत लाया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत कीमियावी मादों से पाक कुदरती ज़राअत को फ़रोग़ देने की मुतमन्नी है, जिसका आगाज़ दरियाए गंगा के करीब वाक़ ज़री ज़मीनों से किया जाएगा। शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र में मज़ीद आसानी के लिए ऐसे पासपोर्ट्स जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगा होगा और इनमें मुस्तक़बिल में काम आने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए शहरी इलाकों में जगह की कमी के पेश नज़र बैटरी को मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ पॉलिसी शुरू की जाएगी। ज़मीन के वसाइल के भरपूर इस्तेमाल के लिए रियासतों की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो लैंड पार्सल के मुनफरिद शनाख्त के नंबर इस्तेमाल करें ताकि रिकॉर्ड्स के IT पर मबनी बंदोबस्त की सहूलत हो। NGDRS के तहत एक मुल्क एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये अदालती दस्तावेज़ात के किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन के लिए यकसा अमल होगा। 5G मोबाइल खिदमात शुरू करने के लिए मतलूबा स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में शुरू की जाएगी। 2022-23 के दौरान दरामदात में कमी करने और मुसल्लह फ़ौजों के लिए साजो सामान के शोबे में ख़ुद किफ़ालत को फ़रोग़ देने के लिए फ़ौजी ख़रीदारी का 68% हिस्सा घरेलू सनत के लिए मुख्तस होगा। ब्लॉक चेन और दीगर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक इसका इजरा 2022-23 से करेगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तखमीनों के बारे में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि 2022-23 में कुल इखराजात का तखमीना 39.45 लाख करोड़ रुपए है, जबकि कर्जाजात के अलावा कुल मौसूला रकम का तखमीना 22.84 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने टैक्स दहिंदगान के लिए इस नई सहूलत का ऐलान किया है कि वो इजाफी टैक्स की अदायगी के वक्त नए सिरे से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ये ताज़ा तरीन जानकारी वाला रिटर्न मुताल्लिक़ा जायज़ा साल के अवाखिर से 2 साल के अंदर अंदर दाखिल किया जाना चाहिए। रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव का कहना है कि भारतीय रेलवे को 1,37,000 करोड़ रुपए के असासे की सरमायाकारी का ताउन का एक निज़ाम मौसूल हुआ है। नई दिल्ली में आज नामा निगारों से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि नई नस्ल की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियाँ अगले 3 बरस के दौरान तैयार की जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के तौर पर कवच के तहत 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को लाया जाएगा। ये 2022-23 में तहफ़्फ़ुज़ और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुल्क में ही तैयार आलमी दर्जे की टेक्नोलॉजी है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि असासों के अखराजात में इजाफ़ा किया गया है ताकि रोज़गार के ज़्यादा मौक़े पैदा किए जा सकें और मरकज़ी बजट में इस सिलसिले में गुंजाइश रखी गई है। बजट पेश करने के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि असासों के अखराजात या सरकारी सरमायाकारी के लिए इजाफ़ी निज़ाम
रोज़गार के मौके पैदा करने पर फ़ौरन असरअंदाज होगा और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के लिए पैदावार से मरबूत सहूलियात 14 सेक्टरों में मुहैया कराई जा रही हैं, इनसे भी रोज़गार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के सेक्टर में ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं, जैसे कम अज़ कम इमदादी कीमत पर ख़रीदारी की शिक, शमसी पंप और एग्री क्रेडिट जैसे इक़दामात शामिल हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि एयर इंडिया की फ़रोख्त से कुछ कंपनियों के असासों को फ़रोख्त करने की हुकूमत की मंशा का इजहार होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल LIC के IPO को भी सभी इम्कानात के साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत अफरात ज़र को 2 अददी गिनती तक नहीं पहुँचने देगी। उसने 1 माह के लिए 6% की हद को तोड़ा ज़रूर है, लेकिन इसे कभी पार नहीं किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और आम आदमी के लिए नए मौके पैदा होंगे। 2022-23 के बजट के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जिसे आज पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जनाब मोदी ने कहा कि इससे मज़ीद सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे, रोज़गार और तरक्याती मौक़ों के ज़रिए आम आदमी को माली फ़रोग़ और फ़ायदे हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये बजट बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी और फ़रोग़ नीज़ रोज़गार के नए इम्कानात से पुर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बजट से माहौल के लिए साजगार रोज़गार के रास्ते भी खुलेंगे। ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। उन्होंने कहा कि मुल्क में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिक़ जैसे इलाकों के लिए पहली बार पर्वतमाला स्कीम शुरू की जा रही है। इस स्कीम से पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट का एक जदीद निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने यह कहकर मरकज़ी बजट की नुक्ताचीनी की है कि ये हाल की बनिस्बत मुस्तक़बिल पर ज़्यादा तवज्जो करता है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चिदम्बरम ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से मुल्क के 99.99% अफराद को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ये आकाशवाणी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे एक प्रोग्राम में आज के अवाम दोस्त और तरक्की पसंद बजट के बारे में बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इस बजट में ऐसी कई गुंजाइशें हैं जिनका मकसद ज़रूरी शोबे की काया पलट करना है। इनमें कर्ज़ों को यकीनी बनाना, रिकॉर्ड कम अज़ कम इमदादी रकम, खुराक को डिब्बा बंद करने के अमल को फ़रोग़ देना और इस शोबे में स्टार्टअप की हौसला अफजाई करना शामिल हैं। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि मेहनत कश छोटे किसान इन इक़दामात से खूब फले फूलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का आत्मनिर्भर भारत का बजट अपने साथ हमारी तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए नई तवानाई और क़ुव्वत लेकर आया है, बिलखुसूस ऐसे वक्त के जब हम अपनी नौइयत की क़तई मुनफरिद आलमी वबा से पूरी दलेरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट अपने साथ ज़्यादा बुनियादी ढांचा, ज़्यादा सरमायाकारी, ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा रोज़गार लेकर आया है। उत्तराखंड में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने, जांच पड़ताल होने और नाम वापस लेने के बाद कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 नशिस्तों वाली असम्बली के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इससे कबल 750 उम्मीदवारों ने इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें से 23 नामजदगियाँ 29 जनवरी को जाँच पड़ताल के बाद मुस्तरद कर दी गई थीं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक मरहले में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।
भारत के इलेक्शन कमीशन ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कानून साज असेंबलियों के हालिया आम इंतखाबात 2022 के लिए आज 15 खुसूसी मुशाहिदीन का तकर्रुर किया है। ECI ने इंतखाबात के बिला रुकावट इनेकाद को यकीनी बनाने की गरज से उनके साथ एक मीटिंग की। ECI ने कहा कि खुसूसी मुशाहिदीन सूबों में इलेक्शन मशीनरी के ज़रिए किए जा रहे काम की निगरानी करेंगे और नज़र रखेंगे और वो आज़ादाना, शफ़ाफ और वोटर दोस्त इंतखाबात को यकीनी बनाने की गरज से ज़मीनी सतह पर कमीशन के निगरां बनकर तमाम इंतखाबी अमल पर नज़र रखेंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज वर्चुअल तरीके से समुद्री सरहद की सलामती से मुताल्लिक़ अपने दूसरे मुज़ाकरात किए। इस मीटिंग की सदारत मुश्तरका तौर पर वज़ारत ख़ारजा में तर्क असलहा और बैनुल-अक़वामी सलामती के उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी संदीप आर्या और यूरोपीय ख़ारजी उमूर की खिदमात में सलामती और दिफाई पॉलिसी की डायरेक्टर मोहतरमा जॉनेक बैलफोर्ट ने की। सलाह मशवरे में समुद्री सरहद की सलामती के माहौल को फ़रोग़ देना और भारत बहरुल काहिल समुंदरों में ताउन के लिए यूरोपीय यूनियन की हिकमत अमली का अहाता करने वाली पॉलिसी मामलात शामिल हैं। 4 मरतबा के चैंपियन भारत का ICC के 19 साल के कम उम्र के आलमी कप 2022 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। ये मैच कल शाम 6:30 बजे एंटीगुआ के कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में होगा। भारत की मुहिम को पहले मैच के बाद कोविड-19 की वजह से उस वक्त बड़ा धक्का लगा था जब भारत के कप्तान यश धुल और 5 दीगर कोविड से मुतासिर पाए गए थे। धुल और 4 दीगर खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शामिल हो गए, लेकिन निशान सिंधु मुतासिर ही रहे और क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल सके। अब वो सेहतयाब हो गए हैं और सेमीफाइनल के लिए दस्तयाब होंगे। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने 2022-23 का मरकज़ी बजट पेश किया, जिसमें आइंदा साल के लिए 9.2% की शरह तरक्की का निशाना मुकर्रर किया गया है। किसानों को PPP तरीक़ाकार के तहत डिजिटल हाईटेक खिदमात फराहम की जाएंगी। एक स्टेशन एक चीज़ के तसव्वुर को मकबूल आम किया जाएगा। दिमागी सेहत की क्वालिटी काउंसलिंग तक बेहतर रसाई के लिए दिमागी सेहत का कौमी टेली प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवेज़ को असासाजाती सरमायाकारी में मदद के लिए बजट में 1,37,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि बजट में असासाजाती अखराजात में इजाफे और बुनियादी ढांचे पर ख़ास तवज्जो से फौरी तौर पर रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। Good evening and welcome to Radio Bridge, focusing on overall assessment of the Union Budget presented today by Finance Minister Nirmala Sitharaman. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार। केंद्रीय बजट 2022-23 पर रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। बजट प्रावधानों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ जुड़ेंगे और सबसे पहले हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला जी। अरुण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम अरुण। थैंक यू वेरी मच। जी अरुण जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया उसको आप किस तरीके से आंकते हैं? क्या ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है या रोजगार सृजन करने वाला बजट है या फिर कुछ और भी खूबियां आप आज के बजट में देखते हैं? क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ? जी श्योर। I would say that the finance minister has once again laid out a pragmatic, prudent and growth-oriented budget that puts forward the blueprint for long-term development of our country. She has not only done a fine balancing act of ensuring consistency in policy and tax rates, but simultaneously laid down a comprehensive package for recovery, relief and reforms. And when I say recovery and relief and reforms, I mean relief to the stressed segments, steps and measures for recovery and continued push to the reform process, which was the need of the hour. I must say that the budget scores high on all these counts. FICCI did a survey in which MSME, retail, tourism, hospitality were the worst affected sectors and needed handholding.
Survey also revealed that emergency credit line guarantee scheme had been successful in helping MSMEs navigate through the crisis and needed extension. This is exactly what has been done, as the scheme has been extended for a further period of 1 year with an additional allocation of 50,000 crores for the hospitality sector. Another very positive thing is that credit guarantee scheme for subordinate debt will be revamped with additional infusion of funds. A review of CGT MSC scheme could improve cash flow based lending by banks and enable more MSMEs to get access to formal credit without collateral. On the recovery part, let me say over 35% increase in the capital expenditure will have a multiplier effect on the economy and help in higher pace of growth. Also, the investments in 100 cargo terminals for multimodal logistics and other initiatives under the Gati Shakti will help bring down the logistics cost, that is cost of doing business, and will boost manufacturing. So there is additional allocation of 19,500 crores for PLI scheme for the manufacturing of solar PV modules to increase the solar power capacity. So the budget has, extended the timelines for benefits under the concessional corporate tax regime for newly incorporated manufacturing companies till March 2024. And on the reform side, government has introduced path-breaking reforms over the last few years, including during the COVID period, but the budget continues its focus on reducing litigations and simplifying procedures. For instance, if a question of law in the case of an SSC is identical to the one which is pending in appeal before the jurisdictional High Court or Supreme Court, the filing of further appeal in the case of that SSC by the department will be deferred till that question is decided by the High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayers and the department. And finally, on the reforms, budget also lays down a comprehensive roadmap towards the enhanced ease of doing business. The contours of ease of doing business 2.0 reflect the spirit of cooperative federalism, effective governance, and a strong consultative mechanism with business and citizens. Yes, Mr. Chawla, you very rightly said that the finance minister has pledged to spend more to fire up the key engines of growth in Asia's largest economy. And she has increased the size of the economy's annual spending to $529 billion to support growth plans for the year beginning April. And that, Mr. Chawla, is quite an encouraging figure to begin with. Absolutely, I fully agree with you. And not only that, the finance minister has, given a push to the digitization of the economy, which will lay the foundations for a new India. Rollout of 5G mobile services, focus on developing the digital economy backbone through greater telecom penetration, expanding broadband coverage to rural and remote areas, introduction of the digital rupee, setting up of 75 digital banking units, rolling out of national digital health ecosystem, setting up of digital university for world-class quality education, issuing e-passports with embedded chips, encouraging the states to set up digital management of land records are steps in making India modern and digital economy. So I think the Honorable Finance Minister has actually done a wonderful job. Thank you so much for joining with us, Mr. Chawla. That was DG Ficky giving his views on the union budget. Joining us now is Mr. J.B. Mohapatra, CBDT Chairman. Mr. Mohapatra, we welcome you. Thank you. And with him is also in our studio, we have Vivek Johri, CBIC Chairman. We extend a warm welcome to you as well. Gentlemen, to both of you, my first question is,
First of all, we needed a big focused domestic growth oriented budget, and that is what has been given to us by the finance minister. Also the fact that there has been hardly any disruption, and this lends a lot of confidence to the entrepreneurs in India going forward, and communicates to them that we are in a stable policy regime. What do you say, Mr. Mohapatra? Yeah, you brought in entrepreneurs. We have a particular section, 80 IAC, where if you read through the finance bill, you find the Honorable Finance Minister expanding the 80 IAC to 1 more year. Incorporation will be now delayed by 1 more year, and still then he will get that 80 IAC. Those are for the startup entrepreneurs, right? So for everything, for all classes, there is something. For all classes, there is something or the other. There may not be a rate cut per se, but there is a reduction in surcharge, and there is expansion of deductions also for all sectors, for cooperatives, for companies. There is something or the other for all sectors of the economy. जी मोहपात्रा जी, अगर हम ये बात करें, आज वित्त मंत्री ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है बजट में, वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी शुरू करने की बात की गई है, यानी कि डिजिटल रुपया अब डिजिटल करेंसी कहलाएगी। तो इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी खरीद बिक्री पर भी 1% का टीडीएस देना होगा। तो ये जो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है मोहपात्रा जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो डिजिटल करेंसी होगी, इससे इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलता आप देख रहे हैं? जो डिजिटल वर्चुअल असेट्स जो हम उसको टैक्स करने वाले हैं फ्रॉम 1/4/2022, इसका डेप्थ नापना इस टाइम में ऑफिशियली it is almost impossible, because there are some anecdotal evidences. Sometimes it is said it is 30,000 crores annual turnover in those exchanges. Sometimes it is said that it is 100,000 crores. One really doesn't know. But as an income tax department, हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं इस पे, तो इसमें 4-5 वेराइटीज़ का इश्यूज़ आ रहा है। एक तो है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें, और जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग में उसका प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं दिखाते हैं। अब वो अगर वो दिखाते हैं तो उसमें मिसमैच है, उनका सेल्स परचेजेस से बहुत ज़्यादा है, राइट? तो सेल्स एंड परचेज में मिसमैच हो जाता है। एंड चौथा, अगर वो सरप्लस दिखाते हैं, कौन सा हेड में टैक्स होगा? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है? ये तीनों टाइप में दिखाते हैं। सो टैक्स पेयर्स में भी कन्फ्यूज़न है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी कन्फ्यूज़न है कि किस हेड में उसको टैक्स करें। तो ये जो टैक्स अभी आ रहा है 115 BBH रेट विथ सेक्शन 194S जो TDS प्रोविजन है, तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि इस मार्केट में कितना डेप्थ है, कौन सा इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट सोर्स है वो प्योर है, नॉट टेंटेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, एंटी सोशल एक्टिविटीज़, इसमें उनका रोल इम्प्लीकेशंस, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। सो मेरा कहना यही है कि हम लोग 4-5 साल से 7 साल से 8 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बनाए, राइट? सो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, हम कोई ओपेसिटी या कोई नॉन ट्रांसपेरेंट सेक्टर्स को हम लोग अगर वो आ जाएगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। दैट्स द रीज़न एज टू वाई वी वांट टू ब्रिंग दैट सेक्टर, द एमर्जिंग सेक्टर, supposedly the fastest growing sector, into also the tax net. So this is the right time to have taken the call, and I think we are not late in announcing it in the budget. So, Mr. Mohapatra, does it lend legitimacy to crypto? No, it doesn't, because income tax does not determine, or it does not pronounce. Recognize. No, it does not pronounce on the legality or illegality of any transaction. जी, क्रिप्टो से जुड़ा एक और सवाल कि 30% का जो टैक्स का बात की है कमाई पर, जो क्रिप्टो से जो अर्निंग्स हो रही हैं उस पर जो लोग कमाई कर रहे हैं निवेशक,
उसमें 30% टैक्स की बात की गई है। तो ये 30% टैक्स जो है ये नए निवेश पर लागू होगा क्रिप्टो में, या फिर जो पहले निवेश कर चुके हैं और उससे कमाई कर चुके हैं उन पर भी लागू होगा? देखिए, ये रूल है कि निवेश करने के टाइम में इनकम टैक्स वहाँ पे नहीं जाता है नॉर्मली, राइट? Only when you exit a transaction by selling or transferring, then only the tax incidence comes, right? अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है क्रिप्टो का, अभी 1/4/2022 के बाद अगर आप सेल करेंगे तो न्यू रेजिम में अब टैक्स होगा। अगर वो अभी सेल करते हैं तो भी टैक्स होगा। क्रिप्टो में टैक्स देना जरूरी है, राइट? वेदर अंडर द ओल्ड रेजिम और वट एवर regime he was following earlier, right? It has to be taxed, whether as a business income or as income from other sources or income from capital gains or whatever. But now he has to pay tax, right? But if he makes a profit after 1/4/22, if the bill becomes an act, then he gets that amount taxed under 115 BBH at 30% of the surplus. Okay, Mr. Jory, this question is directed at you. According to you, is this a thumbs up, a thumbs down, or a neutral for the budget? I think it's an absolute thumbs up. I have no question in my mind. And I'm speaking on the basis particularly of proposals that are there in indirect taxes. As you're aware, the budget doesn't really deal with GST per se, so it's focused mainly on customs. The main theme of this year's budget, as far as customs proposals are concerned, is that it has made a very deep dive into cleaning the tariff structure. And FM had announced it in the last budget that she will undertake a comprehensive review of exemptions. I think all experts will agree. If you look at all the tax reforms committees, starting from Raja Chillaya committee to all the others which have done work on tax reform, particularly in customs tariffs, they have all uniformly and consistently recommended that there should be low and moderate taxes with very few exemptions. This year, we've been successful in eliminating as many as 500 exemptions from the customs tariff. And the beauty of it is that we've been able to do this with very broad-based consultations with the industry, with stakeholders, with the line ministries concerned. They have recognized that there are some exemptions that have outlived their utility and need to go. There were a large number of exemptions which were listed. They had long lists of products that were exempted, for example, in the machinery sector. All those lists have been reviewed for oil exploration, for machinery, for pharmaceutical, and we've been able to prune down many of those lists. The other part of simplification which has been addressed in a very big way is that the tariff structure in India was very often called very opaque, because the rates were prescribed first in the schedule, and then from the schedule you had to move to exemption notifications to even figure out the rate that was applicable to an item. This year what we have also managed to do is that a very large number of exemptions we have built into the tariff itself. So that is a practice that most international and most customs administrations in the world follow, and I think that is also a very major step in the direction of simplification. So I see it as an absolute thumbs up as far as cleaning up the customs tariff is concerned. Okay, now this question is directed to both of you. There had been phenomenal buoyancy in tax revenues this year. Despite that, and wasn't the finance minister a little cautious, and only a 10% increase in tax revenue has been budgeted for next year? For indirect taxes, I would say that if you were to look at individual components of buoyancy, you see the indirect tax revenue is made up of three components. So you have customs, you have GST, and you have excise. Now, excise, which is 3.65 lakh roughly, you can count out of the buoyancy equation because these are specific rates which are not really dependent on GDP, etc. So the other two taxes, if you were to analyze individually, they've exhibited a buoyancy in estimates for this budget compared to revised estimates of last year. We've assumed a buoyancy of almost 1.1 to 1.3, which I think is quite healthy. And we're therefore anticipating an increase of about 12% in customs and about 15% in GST.
All right. Now, we have also been seeing stability in taxation, and the finance minister also said that in her speech today. The government has made a commitment towards a stable tax regime, towards easing of paying taxes, and no news on the front. On that front, reiterates the fact that all is well. So, and do you agree that this will improve the investment climate in the country? Absolutely. That is a must. Stability in the rates, stability in all in the administration also. That is a must for investment to come in. Unless one is sure about and confident about the stability of a system, then only investment will come in. Nobody likes periodic disturbances in the administration or in the rates, right? So the certainty of the tax rates and the certainty of the tax deductions or the exemption provisions, all these will have a big stake and a big say in an investor's choice to putting the money in a particular tax jurisdiction. So that has been the goal. That has been the goal of the government, to make it turn around from a exemption-driven, deduction-driven tax administration to a simplified, stable, certain tax regime for the years to come. We are here for the long haul, and we want to be conservative in our approach, because the big businesses or small businesses or medium businesses would always like the economy to stabilize, tax administration to remain stable, right? And not to litigate unnecessarily, and to have a clear direction at which the tax administration is moving. जी, आपने स्टेबल टैक्स रिजीम की बात की। बजट से आम आदमी को जो सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है कि कर टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव होगा, कुछ राहत मिलेगी। इस बार कोई राहत हमें इनकम टैक्स के मामले में कोई नहीं दिखाई पड़ी। बात होती है कि कैसे कंज्यूमर की स्पेंडिंग किस तरीके से बढ़े अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। तो हम कंज्यूमर को या करदाता को हाथ में कुछ दे नहीं रहे हैं, तो ये स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ये कहना टोटली करेक्ट नहीं है कि कुछ नहीं मिला है। सरचार्ज में हम लोग चेंजेस किए हैं, 2 डिडक्शन प्रोविजंस में, एनपीएस में, और डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ समबडी हु इज सपोर्टिंग डिपेंडेंट हु इज सफरिंग, राइट, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, उनके लिए हम लोग किए हैं। कोविड का रिलीफ जो प्रॉमिस किए थे सब हम लोग डाले हैं। कोविड में एक्स ग्रेसिया पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, दैट इज टैक्स एग्जेम्प्ट नाउ, वी हैव पुट ए एक्सक्लूजन इन 56(2), एंड ऑल्सो कोविड में आपको जो रिलीफ मिला था फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, फ्रॉम एनीबडी एल्स, दैट ऑल्सो विल नॉट बी परक्विजिट इन योर हैंड्स। सो मेनी थिंग्स हैव बीन डन, स्मॉल सिग्निफिकेंट थिंग्स, बट मेजर आइडिया हमारा ये था कि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन किए हैं। फेसलेस को हम लोग एफिशिएंटली चलाने के लिए आगे उसका दरवाज़ा खुले हैं। टैक्स पेयर का राइट्स को, टैक्स पेयर को कैसे मिले, जो डिमांड करेगा हियरिंग के लिए, जो पहले प्रोसेस जो कम्बरसम था, उसको हम लोग ईज आउट किए हैं। हर पैमाने पे ये बजट स्टेबल टैक्स रिजीम का उसी डायरेक्शन में ये लेके जा रहा है, और उसके लिए जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन का जो था, दैट हैज़ बीन द मेन थीम ऑफ दिस थिंग। एंड अपडेटेड टैक्स रिटर्न जो आपको बताया गया था, अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स, राइट, इफ़ यू हैव मिस्ड आउट फाइलिंग योर रिटर्न्स, यू कैन कम बैक आफ्टर 2 years, within 2 years, and you file your return. It shows a great empathy from the government or the taxpayer, that he may have a legitimate reason as to why he did not file the return. So the common man was all along listening to radio or TV, and everyone was saying that we are trying to understand the figures. Perhaps deep down somewhere it is buried, oh, there is going to be something given to the common man. But as we discussed, it is something which is done so that there is consistency and there is investment also. Planning can take place as they go forward. Quickly, Mr. Johri, I would like to ask you this. The fiscal deficit target has been set at 6.4% for FY23.
Higher tax collections so far in the current fiscal have ensured that the government meets that target comfortably. You agree? I think so. And I think Chairman CBDT also touched upon this point. So this is a year where, we want to, use revenues collected through taxes for, additional expenditure requirements. And a pandemic, for instance, has imposed some new sort of obligations on the government. And in order to meet them, we need to have high tax revenues. The beauty of tax collections, I think both in CBDT and us, if I may speak also on behalf of CBDT, is that without tweaking the rates, without increasing the tax burden on taxpayers by rate increases, we've been able to garner much more revenue through better administration, through use of technology and other means. So I think that is what is significant about revenue collections in recent years. Okay, what do you have to say? Now I'm moving away a bit. Or let me ask you this about the GST. Are there more products that are going to come into it? Will there be a fall in or reduction in the GST tax? Is there something on the anvil going forward? Yes, so on GST, there is a group of ministers which is currently working on the subject. There has been a view expressed by many experts on GST that you need to rationalize the rate structure. There are two ways in which you rationalize the rate structure. One is by removal of inversions. So you had instances where the finished product attracts a lower duty or a lower tax, and the inputs attract a higher tax. We've already corrected quite a large number of those inversions with the approval of the GST Council. For instance, in textiles and footwear, and many other products, renewables. So that is one way of rationalizing the tax structure and also providing relief to the end consumer. This is a point which is often missed, and I want to emphasize it. When we correct inversions, what happens is that because of the availability of credit to the manufacturer or the supplier, he's expected to, and he does, pass on the benefit of the correction and inversion to the consumer. And so you may not see a direct rate change, benefiting the consumer, but it works through the price effect. So because the credit can be more easily utilized and the flow of credit in the system becomes, unhindered, the consumer benefits, and the supplier is expected to pass on that benefit to the consumer. So that's one good way of rationalizing the rates. The other, of course, is reducing the number of rates, rate dispersion, and removal of exemptions. Now that is something that the group of ministers chaired by Honorable Chief Minister of Karnataka is working on currently. The urgency is that, as you're aware, in June of this year, the compensation, the assured compensation of 14%, will come to an end. And the states are obviously very concerned that if the assured compensation does not come to them, then what are the means through which they can raise revenues? We expect to have the recommendations of the group of ministers soon. And of course, the GST Council will discuss those and take it forward. जी विवेक जौहरी जी, स्टार्टअप्स को लेकर के सरकार का बहुत जोर है, स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए, और स्टार्टअप्स को जो है टैक्स में छूट का फ़ायदा जो है इस बार जो उसको 31 मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया है, शायद एक्सटेंडेड जी। ये कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है स्टार्टअप्स के नज़रिए से? देखिए, स्टार्टअप के लिए जो पहला मैंने बोला था, स्टार्टअप को इंडिकेट किया था जब आप एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन लाए थे, तो स्टार्टअप में 3 out of 10 years उसमें आपको 100% टैक्स हॉलिडे मिलता है। स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन 31/3/2022 तक होना था, तभी वो उसको मिलेगा, एग्जेम्पशन डिडक्शंस मिलेगा under 80 IAC. Now it has been extended by 1 more year because of pandemic, right? So startup movement के लिए, to continue the momentum built up by the startups, to build up the momentum, so this is the Honorable Finance Minister gift to the startup community
that you have one more year to be in the game for getting the tax holiday. Okay. Right. For the benefit of our listeners, this is essentially this essentially means that the startups will be able to avail a 100% tax rebate on the profit made in 3 years in a total time frame of 10 years of operations, given their overall annual turnover is not crores. More than 25 crores. 100 crores. 100 crores. Okay. Yeah. In a fiscal. Okay. I would like you to throw some light on the central bank digital currency, if you could, which is going to come up in the form of digital rupee using blockchain, and this will be issued by RBI in 2022-23 as investment in cryptos turn hot in the country. So how and what will happen going forward? Exactly. The finance bill, if you look at 115 BBH, that enables the government to tax the trading in the virtual digital assets at 30%. It also empowers the government to say which digital asset, virtual assets will be kept out of the taxation, right? So once the RBI's virtual asset comes into play, then we must wait the government's directions at which these things will be playing out, right? At this point in time, I cannot say with confidence the policy trajectory of the digital currency which RBI is going to come out with. Okay, and what about the sovereign green bonds for funding green infrastructure? Do you want to throw some light on that? I don't think that is any of the subjects either of CBDT or CBS. I know. I'm generally asking you because this is something that green bonds are debt instruments that offer from conventional fixed income securities only to the issuers and pledges benefits only if he invests further into green products. Absolutely. Yeah. So for a common man, from a common man's perspective, how do you think that I have to admit that you really have made it very convenient for a common man to file returns, and it's mostly digital based everything, so there's no face-to-face interaction happening. What else is happening to ease this interaction between you and the common man? Is there anything else that you are coming up with? No, the basic aim and the basic motto of the department, hence moving forward, and it has been going on in the last 3 to 4 years, is to cut out the physical interface between the taxpayer and the tax administrator. Right. And towards that end, many of the things which we have been doing, even for verification of the data, now it is faceless, right? And that is playing out. It is giving us good revenues, right? Even this is because the improvement in the quality of the data processing, what we have done, right? So the kind of data which you are having and sharing and co-sharing with different agencies, including the CBIC, so that is bearing fruit, right? If somebody exports and we have the data from the CBIC, we are utilizing that, leveraging that data to look at and compare the return of any income tax return of anybody, right? So these are giving us lot of data points and a lot of leverage in order to capitalize on the data and to make the most of it. So we are at a space and at a position in which we can best utilize, maximize the revenue earning potential of both the legislations to the fullest. Okay, and you did touch upon the citizens uploading income tax returns or ITRs within 2 years in case of any omission or mistake. Correct. Would you elaborate a bit more on that? How can a common man, it's primarily for citizens, so how will they benefit? What is it that they need to do going forward to avail this? Okay, right. So, if you could elaborate on that. Yeah, I'll do that. The new section is section 139, 8 capital A. Okay, there is nothing like that. So this has come into being from 1/4/2022. It will come into being. 139 8A would say that if a return has been filed under 139.1 or 139.4 or 139.5, all these things mean
normal return in time, or it's a revised return under 139.5, or it's a belated return under 139.4. 4.5, 139.145 if you filed a return, or if you have not filed a return. In both the cases, you have one more chance of coming under 139.8 capital A within 12 months or within 24 months and filing a return. That is for assessment year 22-23, where the door for you filing a return, original, revised, belated, it stops by 31/12/2022. So from 31/3/2023 to 31/3/2024, he can file the return by paying 25% additional tax and interest. Okay. And if he comes in the second, that is from the 12th month onwards till 24 months, he can file the return, pay the additional taxes at 50%. So for both the years. So this is available to people who have not filed the return and people who have filed the return but have omitted to disclose fully the total return, right? But this is not available if you are trying to game the system, in the sense you are coming for filing a loss return. We will not allow that. No claim of refund, right? If a notice has been issued to you to taking your case to scrutiny, or your case has been completed under scrutiny, you cannot come back, and you can file a updated return only for 1 year. In the sense, for 1 year you can file one return. You cannot file it. You cannot update the updated return. Only one time you can get that, right? Right. You cannot file the updated returns if your case has been searched or surveyed for that year and 2 back years. So there are certain restrictions also, so that we don't have that temptation of gaming the system, right? So there are some restrictions over there, but broadly it says that if a general assessee has missed out filing the return or disclosing fully and truly all the facts, and before the department issues him a notice, if he comes and files the returns, we are happy with that. Okay. Mr. Jory, I would like to ask you about the customs, the duties, etc. If you could tell our listeners as to which are the products which have been given concession, and I do know, my wife told me about diamonds, 5% duty cut has been levied. Is there anything else? See, the duty changes in customs have been driven by 2 or 3 policy objectives. The main one being how to support Atmanirbhar Bharat and Make in India. Linked to that is how can we support MSMEs, who have suffered a setback either because of pandemic or for any other reason. The strategy quite clearly with customs duties is that if you want to support domestic industry, you would either drop the duty on the raw materials or inputs or intermediates that they need and which are not available domestically, or you would give them some additional protection by increasing the duty on the finished product. Okay. So what we have done in this budget is that we've adopted a mix of the two. MSME sector has been helped, particularly with regard to umbrellas. We've increased the duty on umbrellas, reduced the duty on parts of umbrellas. For toys, we have reduced the duty on parts of toys, electronic toys, which are manufactured in India. We have reduced the duty on, like you mentioned, cut and polish gemstones and diamonds. It's not a full sort of removal of duty, but it's a drop in the rate. It's meant to help, the jewelry industry, which uses these cut and polished stones for manufacturing jewelry, mainly for export. It could also be for domestic sales. We've also reduced the duty on half-sawn diamonds, which are, as you know, India is a pioneer in cutting and polishing of diamonds. This is a raw material which goes into that. So the duty has been fully exempted on half-sawn diamonds. Similarly, for shrimp cultivation, there are some inputs which are not available domestically. Those have been given a duty reduction. We have also reduced the duty on cocoa beans because we realize that there is potential to manufacture value-added products out of cocoa beans in India. Then, some chemicals, textiles.
there are many sectors where we've given these kind of duty concessions. Another big one which I want to mention is steel. Yes. So there are a lot of manufacturers of steel in the secondary steel manufacturing who use melting scrap as a raw material. And last year we had exempted the duty on melting scrap for 1 year. We have extended that by another year so that MSMEs can continue to get that benefit. Another big area which also has a lot of MSME presence is electronic hardware. And earlier you had talked about stability of tax regime. Right. In customs, we've also tried to attain stability by for a couple of years now by announcing a glide path for certain products which are focused products for being manufactured in India. We have the phased manufacturing program. We are doing the production linked incentive scheme also. Now, in phased manufacturing program, for example, we want to encourage the manufacture of electronic hardware. There are 3 products for which we've given duty concessions on the inputs, which are hearables, these buds, and other sophisticated equipment you use for listening to music, or wearables, which are smart watches, etc., and smart electricity meters. So there's a lot of potential for manufacturing these in the country. A tax break has been given for all 3. Also for medical X-ray. Okay. Because there's a PMP going on. Now, in all these sectors, what we've tried to do is to announce a predetermined duty glide path. So the industry knows well in advance that they'll get this tax break or a reduction for this much time, and it'll gradually get phased out. So they plan their production and investments accordingly. Okay. So these are some of the things. That was very well explained, Mr. Mahapatra and Mr. Johri. Thank you so much for being with us. It was a pleasure getting all the information from you. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Thank you. Joining us now is Sushma Ramachandran, our senior business journalist. Sushma, a warm welcome to you. Thank you. So Sushma, how do you see the budget? Is it a long-term budget? Is it a growth-oriented budget? Well, I think, first, yes, I would say it is definitely a long-term budget. And I think what's important in the budget is that it seems to be there's a single-minded approach. It has placed its bets squarely on pushing public investment in infrastructure to promote growth. It is, it's a very, in some senses, it's a very low-key budget in the sense that there are no fancy schemes, there's no frills. The most important highlight of the budget is the 35% increase in capital expenditure, which is quite unprecedented. And it is expected to kickstart a virtuous cycle of investments in an economy which has been, badly affected by the pandemic, despite the recovery process having started a few months ago. So this is the key element of the budget. The other key issue in the budget is the focus on digitizing the economy, and I think that, of course, is brought out in 2 or 3 aspects. First of all, the announcement of a digital currency that the RBI is going to launch very shortly, and the decision to recognize cryptocurrencies. There's an implicit recognition of cryptocurrencies by announcing that, virtual digital assets will be taxed, and cryptocurrency is being considered as an asset class. But Sushma, sorry to butt in, but the chairman was just now with us. Mr. Mahapatra said that there is no legitimacy just because we are taking 30% does not mean we are making them legit. Well, I think that, of course, is something in the fine print, I would say. That is something probably more technical. But somebody who is trading in cryptocurrency will now have to pay tax. You know?
So to that extent, you are recognizing the cryptocurrency. You are, of course, probably, as he says, not giving legitimacy to it. But I think the secretary, revenue secretary, was on television, and I heard him say, well, as far as we are concerned, if somebody is making money on a transaction, then we want to ensure that we get the taxation out of it. So probably what the CBDT chairman said is correct also. They're not legitimizing it, but they are merely taking a very revenue-oriented approach to the whole issue. जी सुषमा जी, सरकार ने विनिवेश लक्ष्य में कटौती की है और वित्त वर्ष 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है और चालू वित्त वर्ष का भी जो 1,75,000 करोड़ का जो विनिवेश लक्ष्य था उसे घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो विनिवेश के लक्ष्यों को हासिल करने में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं आपके नजरिए से, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, वो मेरे ख्याल ये प्रोसेस काफी धीरे धीरे चल रहा है। अगर आप देखें एयर इंडिया का वो 7-8 साल से ये इश्यू चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, तो ये चीजें काफी प्रोसीजरल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से क्योंकि उनकी टारगेट 3-4 साल से अभी वो अचीव नहीं हुई है, तो इस साल उन्होंने बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। उन्होंने कहा कि चलो हम अपना टारगेट बहुत ही कम रखते हैं, 65,000 करोड़ का रखेंगे और मेरे ख्याल में वो ये जो टारगेट है इसको ये इजीली ब्रीच कर दें। अगर बीबीसी या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन होता है तो वही एक प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन से ये इससे क्रॉस कर लेंगे। Sushma, we got 40 seconds quickly about the defense sector being opened up. What's your view on that? Well, I think this is, in the fitness of things that we are going into this Atmanirbhar, focus of the economy. And let us hope that this opening up to the private sector will enable us to modernize the defense sector, as is happening in countries all over the world. Okay. So what would you say about the common man? Okay, I think I'll let that go. Sushma, thank you so much for joining us. And thank you, Rajesh. Thank you for your feedback and all your opinions that our valued guests gave us on the union budget. Thank you so much for the comments and reactions. And thank you for joining us on the Radio Bridge. At this point of time, on behalf of Vishal Sharma, my co-host, and I myself, Rajesh Lake, we say goodbye to you. Good night. This is All India Radio. The news read by VC Pramod. As the number of COVID-19 cases is rising fast in several parts of the country, we appeal to our listeners to be vigilant and to get fully vaccinated and help others, including children. मनोज भटनागर, संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की 8वीं कड़ी। कलकत्ता अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों और गांधी जी की अहिंसा की धारणाओं के मध्य एक तरह का विवाद सा छिड़ गया था। जवाहरलाल के समर्थन के बावजूद संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कुछ मतों से पारित नहीं हो पाया था। सुभाष का दिल टूट सा गया था। उनका चेहरा पहले जैसा खिला हुआ नहीं रह गया था। क्या बात है सुभाष, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कहीं कुछ दुख रहा है क्या? क्या कहूं बासंती माँ, आप ही बताइए। मित्र के विछोह से ज्यादा कष्टदायक भी कुछ हो सकता है क्या?
किस मित्र की बात कर रहे हो तुम? जवाहर की माँ, जवाहर की। अरे, अभी कलकत्ता अधिवेशन में तो तुम दोनों चंद्र सूर्य की तरह दमक रहे थे। अब दोनों में अनबन की कौन सी बात हो गई? नजर लग गई एक महात्मा की। गांधी जी के फंदे में फंसकर लगता है जवाहर ने संपूर्ण स्वतंत्रता का पक्ष और हमारे वामपंथी गुट का साथ छोड़ दिया है माँ। चल हट, ये सब तेरे मन का वहम है। जवाहर को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। अब देख लेना कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या होने जा रहा है। बस तू वहां जाने की तैयारी भर कर। सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू। अरे क्या है किरण शंकर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? बुरी खबर है, आज जतिन दास अपने अनशन के 61वें दिन शहीद हो गए। हे माँ दुर्गा, ये क्या अनिष्ट हुआ माँ? हे माँ। समय ने करवट बदली थी। 1929 के अप्रैल महीने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और निडर होकर कहा था कि इस बम विस्फोट के पीछे उनका उद्देश्य बहरे ब्रिटिश शासन के कान खोलना और दमन का विरोध करना था। घटनास्थल से भागने की जगह उन्होंने खुशी-खुशी अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। बम विस्फोट के वक्त कुख्यात साइमन कमीशन का प्रणेता जॉन साइमन भी असेंबली में मौजूद था। इन्हीं दिनों लाहौर षड्यंत्र के झूठे जाल में फंसाकर जतीन दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तहकीकात के दौरान यह रहस्य खुला कि भगत सिंह और उनके सहकारियों को बम बनाने का तरीका जतीन दास ने ही सिखाया था। फिर लाला लाजपत राय की हत्या के दोषी सैंडहर्स्ट को गोली मारकर यमलोक पहुंचाने के साहसिक कृत्य ने भगत सिंह और उसके साथियों को देश के शौर्य का प्रतीक बना दिया था। लाहौर षड्यंत्र के राजबंदियों ने अपने खिलाफ हो रही बदसलूकियों के जवाब में अनशन शुरू कर दिया था। इस अनशन में उनके अगुआ जतीन दास ने अंततः 13 सितंबर 1929 को शहीद की मौत पाई। ना सुभाष, ना। बंगाल के शेर कभी रोया नहीं करते। ये हताशा के क्षण ही इंसान में नया जोश भरते हैं। जा, लाहौर अधिवेशन की तैयारी कर। मुझे विश्वास है ये अधिवेशन पूरे देश में एक नई जान फूंकने वाला है। जा सुभाष, जा। जवाहर भाई, हम लोगों का विचार है कि यहाँ लाहौर में भी कलकत्ते की तरह युवक कांग्रेस का अधिवेशन किया जाए। हाँ, मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन बापूजी ये बोले कि जवाहर, अब तो मैं देश की बागडोर तुम्हें एक युवा को ही सौंप रहा हूँ, तो फिर अलग से युवक कांग्रेस के सम्मेलन का क्या तुक है? और फिर सुभाष, संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खुद बापू रखने जा रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? जवाहर भाई, सिर्फ प्रस्ताव पर सहमति असहमति से क्या होने वाला है? सीधे संघर्ष का कार्यक्रम बापू कब हाथ में लेने वाले हैं? कांग्रेस 44 वर्ष की हो गई है, पर इसके दामन में अभी तक क्या आया है? सुभाष, ऐसा मत समझो कि गांधी जी का शिष्यत्व स्वीकार करके मैं वामपंथी विचारों और अपने नौजवान साथियों से दूर हो गया हूं। जवाहर भाई, आप भी ये मत भूलिए कि हम दोनों ने ही मिलकर कांग्रेस में प्रगतिशील और गर्म विचारों के बीज डालने की शपथ ली थी। यूथ लीग की स्थापना आप ही ने की थी। मद्रास में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव आप ही ने रखा था। सुभाष, इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे यह बताओ कि तुम्हें डर किस बात का है? गांधी जी हमारे वामपंथी विचारों के रास्ते में रोड़ा अटका सकते हैं। बापू, पर तुम्हारा यह आरोप सरासर गलत है सुभाष। पर इसके प्रमाण हैं। प्रमाण? कैसे प्रमाण? ना आने का वादा करने के बावजूद गांधी जी का कलकत्ता अधिवेशन में आधमकना, इटली और तुर्किस्तान की यात्रा को स्थगित कर देना, बस इतना ही? नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उन्होंने आपको क्यों नियुक्त किया?
जबकि इसके सही हकदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सुभाष, मुझे भी ये अध्यक्ष पद यूं ही अनायास कहां चाहिए था। उल्टे मैंने खुद साबरमती जाकर इस निर्णय का विरोध किया था। सुभाष, मुझ पर विश्वास रखो, मुझे इस पद पर जबरदस्ती बिठाया गया है। बापूजी जैसे महात्मा और अपने पिता का मान मैं जरूर रखूंगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा वामपंथी और प्रगतिशील विचारों के ही साथ रहेगा, क्योंकि मैं युवा हूं, ठीक 40 साल का। अरे बापू आ गए। साथियों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। परंतु गांधी जी के प्रस्ताव में अवज्ञा आंदोलन का सिर्फ जिक्र भर हुआ है। सुभाष, मैं चाहूंगा कि इस संबंध में तुम उपस्थित जनों के बीच अपने विचार स्पष्ट करो। आओ, माइक संभालो। धन्यवाद बापू। साथियों, संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव के पारित होने से मुझसे ज्यादा आनंदित भला और कौन हो सकता है। यह तो मेरा चिर स्वप्न रहा है। परंतु जब तक मजदूरों, किसानों और पद दलितों की समस्याओं को पहचान कर हम उन्हें अपने राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल नहीं करते, जब तक हम अंग्रेजों से सारे संबंध तोड़कर एक समानांतर सरकार की स्थापना नहीं करते, तब तक संपूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सुभाष के प्रति मेरे मन में बहुत आदर की भावना है, परंतु ये मुझे किसी शठियाए हुए बूढ़े की दृष्टि से देखते हैं। मैं वृद्धावस्था के कारण इतना दुबला हो गया हूँ कि ये पहलवान की तरह कभी भी मुझे ऊपर उछाल दे सकते हैं। परंतु आज भी मैं एक नौजवान पट्टा होने का दावा करता हूँ। मेरी हड्डियाँ भले ही 60 साल पुरानी हो गई हैं, परंतु मैं अब भी नौजवानों को हरा सकता हूँ। मैं आज भी नौजवानों की तरह घोड़ा दौड़ा सकता हूँ। शारीरिक तौर पर ना सही, पर मानसिक तौर पर तो ऐसा कर ही सकता हूँ। और इसीलिए देश के घोड़े की लगाम मैंने एक नौजवान और सुभाष के दोस्त जवाहरलाल के हाथों में सौंप दी है। मेरे ख्याल से कांग्रेस के नौजवानों और ख़ास तौर पर सुभाष को इस सब से खुश ही होना चाहिए। मैं नहीं जानता मां, पता नहीं मेरे और गांधी जी के बीच संबंधों में ईश्वर कौन सा खेल खेलता रहता है, वो मुझे समझ नहीं पाते। उनसे कहते कहते मेरा गला सूख गया कि वो संघर्ष का आह्वान करे, परंतु गांधी जी जल्दी मानते ही नहीं थे। अंग्रेजों के वचन और उनकी नीयत से जब उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने संघर्ष के लिए खुलकर आह्वान किया, तो दुर्भाग्यवश उस वक्त मैं जेल में था। दांडी यात्रा के वक्त भी ऐसा ही हुआ मां। सुभाष राजा, ये मत भूलना कि गांधी जी महाराज मेरे प्रिय नेता हैं। क्या मेरे नहीं हैं? पर मां, मेरे और उनके बीच झगड़े और विवाद सिद्धांतों को लेकर ही होते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम दोनों के बीच जितना होता है उसे नमक मिर्च लगाकर उसका ढंढोरा पीटा जाता है। मां, ये कभी मत भूलना, मैं भी गांधी जी का उतना ही सम्मान करता हूं जितना कि आप करती हैं। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी का अंग्रेजी अभियान जारी रहा। फिर आया गांधी जी का आह्वान, नमक कानून भंग किया जाए। इसी सिलसिले में एक बैठक में भाग लेकर सुभाष बाबू बंबई के दादर स्टेशन से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में सवार हो ही रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
जब उन्हें जेल में लाया गया तो उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई शरद बोस यानी मेजदा भी पहले से ही जेल में थे। मेजदा, आप यहां कैसे? रेगुलेशन एक्ट सन 1818 उपधारा 3। दादा, आपको कोर्ट में पेश किया गया था? कानून में ऐसा प्रावधान है ही कहां सुभाष। गिरफ्तारी की वजह? यह बताने के लिए सरकार मजबूर नहीं है। उसे सिर्फ गिरफ्तारी के आदेश की जानकारी है। पर कितने दिनों के लिए? बेमुद्दत। बर्मा की मांडले जेल की ही तरह शिवनी जेल में भी सुभाष बाबू का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। एक दिन नई दिल्ली के सचिवालय में गृह सचिव मॉरिस हलेट के कार्यालय में एक कुलीन भद्र महिला नजर आई। चपरासी ने जब ये बात हलेट को बताई तो उसने उन्हें तुरंत अंदर भेजने का आदेश दिया। वेल, बताइए मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता है? मेरे बीमार देवर की मुक्ति। आप? मैं विभा बोस हूँ। क्या बीमारी है आपका देवर को? तपेदिक और पेट की पीड़ा। ट्यूबरक्लोसिस। ऐसा में तो उसको छोड़ देना चाहिए था। यही शिकायत लेकर के तो मैं आई हूँ। कैदी का नाम? सुभाष चंद्र बोस। What? मैडम, आई एम सॉरी, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। आपका देवर जैसा खतरनाक क्रांतिकारी आज का तारीख में पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मैं उसका मदद कैसे कर सकता है? बट हम उनका हेल्थ का पूरा ध्यान रखेगा। क्या ध्यान रखेगा? शिवनी और जबलपुर की जेलें मैं खुद देख कर आई हूँ। आप मेरे देवर को तपते हुए पतरे की छत के नीचे सुलाते हैं। वहाँ जानवरों को बांध दें तो उनकी भी खाल उधर जाए। मैडम, मेरा पूरा सिंपैथी आपके साथ है। मैं ब्रिटिशर होकर भी इस सब का अगेंस्ट हूँ। बट क्या करूँ मैडम, मैं अंग्रेज सरकार का मुलाजिम हूँ। मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ठीक है होम सेक्रेटरी मिस्टर हैलेट, इस तरह छींचते हुए सुभाष की मौत का दोष आपकी सरकार के सर पर ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होने को पाएगा मैडम। हम उनका ट्रीटमेंट का वास्ते उनको मेड्रास शिफ्ट कर रहा है, वही उनका डायग्नोसिस होगा। बताइए, आप आगे का ट्रीटमेंट का वास्ते उन्हें बहरामपुर भेजना चाहता है ना? सुनिए, सुभाष के भाई सुनील चंद्र डॉक्टर हैं। आप उन्हें ही उनके साथ क्यों नहीं रहने दे सकते? सॉरी मैडम, ऐसा ना करने का कुछ खास वजह है। तो सुभाष को आप बंगाल के ही किसी जेल में स्थानांतरित क्यों नहीं कर देते? नो वे मैडम, आप चाहें तो 100 खूंखार क्रिमिनल्स को हम बंगाल भेज सकता है, बट सुभाष बोस नो मैडम, नेवर। तो बंबई भेज दीजिए या पंजाब भेज दीजिए। वहाँ डलहौजी में चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं। पंजाब में? भगत सिंह का देश में? आई एम सॉरी मैडम, आपका देवर एम्पायर का एनिमी नंबर 1 है। ऐसा खतरनाक कैदी को किसी भी स्टेट का सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कमाल है, ब्रिटिश सरकार उसे जीने भी नहीं देती और उसकी मौत का बोझ भी अपने कंधों पर उठाना नहीं चाहती। हाँ, आप चाहें तो हम उसको ट्रीटमेंट का वास्ते विदेश भेज सकता है। और सुभाष उपचार के लिए यूरोप रवाना कर दिए गए। गंतव्य था वियना। वहीं सुभाष बाबू की मुलाकात उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हुई। एक तो थे विट्ठल भाई पटेल, जो सुभाष बाबू की तरह बीमार थे और आराम के लिए वियना आए थे, और दूसरा व्यक्तित्व था एक ऑस्ट्रियाई लड़की एमिली, जो आई तो उनकी जिंदगी में एक सेक्रेटरी के रूप में थी और जिसका काम इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखने में सुभाष बाबू का हाथ बटाना था। लेकिन वो सुभाष बाबू के जीवन में ऐसे प्रवेश कर गई मानो वो उनकी चिर प्रतीक्षित प्रेमिका हो। सुभाष प्राकृतिक चिकित्सा से स्वस्थ हो रहे थे। पुस्तक लेखन का कार्य भी जोरों पर था और एमिली से प्रेम संबंध भी पींगे भर रहा था कि अचानक तार मिला कि सुभाष बाबू के पिता जानकीनाथ जी बहुत बीमार हैं। सुभाष बाबू मातृभूमि की ओर लौट पड़े
होने को तो होना ही था। पिता पुत्र के आने से पूर्व ही स्वर्ग सिधार चुके थे। दिन बीते, सुभाष बाबू का राजनीति में पुनरागमन हुआ। सरदार, तुम्हें नहीं लगता कि सुभाष की अब तक की त्याग तपस्या से अर्जित धन उसके दामन में डाल देने का वक्त आ गया है? बापू, साल दर साल कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो, इसका निर्णय तिलक जी के बाद आप ही करते आए हैं। तुमसे सच कहूं सरदार, सुभाष जैसे जुझारू देशभक्त को इससे पहले ही कम से कम 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाना चाहिए था। तो रुकावट क्या थी बापू? वल्लभ भाई, उसके अध्यक्ष पद का मार्ग अभी तक मैंने ही रोक रखा था, परंतु वर्तमान परिस्थिति में उसके अलावा और कोई अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। लेकिन बापू, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो ये लेकिन क्यों? सरदार, वो जन्मजात बागी है, उस पर मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं। लेकिन अब मैं उसका इस राजमार्ग पर बढ़ना न तो रोक ही सकता हूँ और ना ही उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल ही सकता हूँ। राजेंद्र बाबू और पटेल जी, आप लोगों ने ये क्या चला रखा है? गांधी जी पर फालतू के आरोप लगाए बिना जिस आदमी को अन्न का एक दाना भी नहीं बचता, उसे ही अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए आप एक टांग पर खड़े हैं। बापू ने सोच विचार कर ही यह फैसला लिया होगा आचार्य कृपलानी। कैसा बेसिर पैर का विचार है ये। महात्मा है ना वो, जिस पर रीझ गए उसे अपना अंगूठा भी दे देंगे। लेकिन क्या इसीलिए हम चुप होकर बैठ जाएं? अरे महादेव, जरा देखना तो, मुझे तो ये भूरी बकरी कुछ अस्वस्थ सी लग रही है। लीजिए, बापू आ गए। अपना ये सवाल आप उन्हीं से कीजिए आचार्य। अरे, किस सवाल की चर्चा हो रही है यहाँ? आप लोगों की मित्र मंडली क्या बोल रही है? बापू, भले ही कलकत्ता का अधिवेशन रहा हो या लाहौर का या कराची का तमाशा रहा हो, हर जगह ये आदमी सुभाष आपका अपमान करता रहा है। और अब आप उसे अध्यक्ष पद का गुलाब जामुन कैसे चखने दे रहे हैं? अगर तुम इसे मेरा अपमान मानते हो कृपलानी, तो कलकत्ते की उस घटना में तो मेरा परम प्रिय जवाहर भी शामिल था। फिर भी उसने लाहौर का गुलाब जामुन खा लिया, सिर्फ चखा नहीं। परंतु बापू, वो एक फासिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है। वो 10 बार मुसोलिनी से मुलाकात कर चुका है। मत भूलो कृपलानी, मुसोलिनी से तो मैं भी मिल चुका हूँ। पर आप खुद तो फासिस्ट नहीं हैं। सुभाष हिंसा का पुजारी है। अंग्रेजों का कोई दिमाग तो खराब है नहीं कि वो सुभाष को ज्यादातर कैद में रखते हैं। कुछ पक्के सबूत तो जरूर होंगे उनके पास। कृपलानी, तुम्हारे पास सुभाष के विरुद्ध कुछ सबूत हैं या मेरे विरुद्ध? अंग्रेज मुझे भी तो जेल में रखने को आतुर हैं। लेकिन बापू, अध्यक्ष पद के विषय में बाहर लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तुम्हारी इस विषय में जबान बंद हो जाए तो ये उल्टा सीधा बोला जाना भी बंद हो जाएगा, समझे? सरदार, मैं चलता हूँ। ऐसी सुभाष विरोधी बातों से मेरा दम घुटता है। महादेव, महादेव, भूरी बकरी को देखा? आचार्य, आपने बापू को दुखी कर दिया। परंतु मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अच्छा कृपलानी जी, आप क्या सोचते हैं? बापू ने यह दाव किस लिए खेला है? कौन सा दाव? यही सुभाष को हरिपुर कांग्रेस में अध्यक्ष बनाने का। मैं समझा नहीं। पर मैं समझ गया हूं। बापू ने सुभाष का कद तो ऊंचा किया ही है, साथ ही ब्रिटिश प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। विभा, विभा। जी कहिए। सुभाष गांधी जी से भेंट करके वर्धा से लौटा या नहीं? हाँ, आज सुबह ही लौट कर आया है। क्या बात है मेजदा, गांधी जी से मेरी मुलाकात के बारे में इतनी उत्सुकता क्यों?
अरे तू मेरी सलाह पर ही तो वर्धा गया था कि तेरे पहले अध्यक्षीय भाषण पर गांधी जी भी एक नजर डाल लें। तेरे परम मित्र जवाहर की भी तो यही राय थी। अब मैं सिर्फ ये जानने को उत्सुक हूं कि गांधी जी ने कहा क्या। उन्होंने भाषण पढ़ा और खुशी से हंस दिए। यानी आधी लड़ाई तो तू जीत गया है। लेकिन मेजदा, मुझे लगता है कि मेरे भाषण में कुछ और मुद्दों का भी जिक्र होना चाहिए। कौन से मुद्दे? जैसे देशी रियासतों की प्रजा के आंदोलन को समर्थन दिया जाना। हाँ, ये तो ठीक होगा। रूस की तरह सूत्रबद्ध नियोजन की आवश्यकता, इस देश में आधारभूत उद्योग की आवश्यकता। तू इन मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है? क्यों मेजदा, क्या ये उचित नहीं होगा? सवाल उचित अनुचित का नहीं है सुभाष, पर क्या वर्धा में गांधी जी से इन मुद्दों पर तेरी चर्चा हुई थी? नहीं हुई ना? लेकिन मेजदा, अपने देश के भविष्य के लिए मुझे ये मुद्दे जरूरी लगते हैं। इसके अलावा मैं परिवार नियोजन के विषय में भी बोलना चाहता हूँ। अरे जो विवादास्पद मुद्दे हैं उन्हें आपसी सलाह मशवरे से भी तो निपटाया जा सकता है। नहीं मेजदा, पिछली 3-4 रातों तक जागकर मैं इन मुद्दों के बारे में सोचता आया हूँ। जो बात मन को ठीक ना लगे उसका स्वांग भला क्यों रचना? अगर मैंने इन मुद्दों को अपने भाषण में शामिल नहीं किया तो देशवासी यही समझेंगे कि अध्यक्ष पद पाने की लालसा में मैंने सिद्धांतों से समझौता कर लिया। सुभाष का कहना ठीक है। और मेजदा, इसके अलावा मुझे कांग्रेस के अंतर्गत गठित समाजवादी गुट को भी मान्यता देनी है। तू पगला गया है क्या रे? कांग्रेस के समाजवादी गुट के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव सभी युवा मंडली जवाहर का दामन पकड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए जवाहर ने गांधी जी के सामने अपनी प्रतिष्ठा को कभी दांव पर नहीं लगाया है। गांधी जी को भी गुटबंदी पसंद नहीं है। इन अंगारों में अपने आप को मत झुलसा सुभाष, मत झुलसा। तेरे मेजदा ठीक कहते हैं सुभाष। चल उठ, अब अधिवेशन की तैयारी कर। कल ही हम सबको प्रस्थान करना है। ये माँ का आदेश है। क्या माँ भी चल रही है? क्या कोई माँ अपने पुत्र के राज्याभिषेक पर उपस्थित न रहने की धृष्टता कर सकती है? सुभाष बाबू की जय। वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। शांत शांत उपस्थित जनों, शांत। अध्यक्ष पद का यह सम्मान मेरे मित्र सुभाष को मुझसे भी कहीं पहले मिलना चाहिए था, परंतु शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। पर आज जब नियति को यह मंजूर हुआ है तो मैं इस फूलमाला के जरिए नियति को धन्यवाद देता हूं और अपने मित्र का स्वागत करता हूं। जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। उपस्थित जनों, ईश्वर करे कि इस देश को गांधी जी के मार्गदर्शन और मंगल आशीर्वाद का लाभ वर्षों तक मिलता रहे। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। सुभाष बाबू की जय। सुभाष बाबू की जय। भारत माता के दो लाल सुभाष और जवाहरलाल। भारत माता के दो लाल सुभाष और जवाहरलाल। दोस्तों, इस सम्मान के योग्य होने का आत्मविश्वास मुझ में नहीं है। इसे मैं युवा शक्ति का सम्मान मानता हूं। भारत माता के कितने ही श्रेष्ठ नर नारियों ने इस आसन को गौरवान्वित किया है। उनकी याद भर से मेरा मन भर आता है। इसके पश्चात लगभग 3 घंटे तक सुभाष बाबू का भाषण जारी रहा। उनके समाजवादी विचारों से गांधी जी के मन की खिन्नता बढ़ती जा रही थी। सुभाष के भाई शरद यानी मेजदा को भी बेचैनी का अनुभव होने लगा था। आचार्य कृपलानी के चेहरे पर हास्य छाया हुआ था, मानो कह रहे हो, लीजिए गांधी जी, भोगिए अपनी करनी का फल। सभा मंडप से बाहर निकलते समय सुभाष गांधी जी के पास जा खड़े हुए। गांधी जी बोले, सुभाष, तू मेरे इतने पास होकर भी कितना दूर लगता है रे।
आरंभ हो चुका था सुभाष बाबू का कांग्रेस के दक्षिणपंथी विचारधारा वाले नेताओं से अलगाव। साथ ही आचार्य कृपलानी से भी उनकी भिड़ंत हो गई थी। कांग्रेस के महासचिव कृपलानी अपना कार्यालय इलाहाबाद में ही रखने पर दृढ़ थे, जबकि सुभाष बाबू की नजरों में कार्यालय का एक ही स्थान पर बने रहना अनुचित था। तो क्या ये सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दिग्गजों के बीच पड़ती दरार की शुरुआत थी? और इससे भारतीय स्वतंत्रता की जिद्दोजहद क्या रूप लेने वाली थी, ये पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, सांगी रालते, रतनदीप दास, संजय पांडे, योगेंद्र टिक्कू, अश्वनी वालिया, राजेश काम्बोज और राजेश आहूजा। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार। Namaskar. A warm welcome to World News and Indian Perspective on All India Radio. This is Gaurav Sharma, and with me is VC Pramod, bringing glimpses of the major developments of the day from across the globe. Over the next half an hour, we shall bring you the latest from the world of politics, economy, sports, entertainment, and more. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents India's budget for 2022-23, projects a growth of 9.2% for the coming year. India allocates 200 crore rupees as humanitarian aid for Afghanistan. New Delhi to roll out e-passports using embedded chip and futuristic technology. Prime Minister Narendra Modi says, with more investment, infrastructure and employment and development opportunities, the budget will give a financial boost and benefit the common man. New Delhi says Ukraine issue can only be resolved through diplomatic dialogue at the UN Security Council. India and Nepal sign MOU to construct motorable bridge over Mahakali River connecting Dharchula on both sides. India and EU commit for free, open, inclusive and rules-based maritime order in the Indo-Pacific region. United Kingdom marks the first anniversary of the military coup in Myanmar by imposing new sanctions against 3 officials. And in Under-19 Cricket World Cup,
India to take on Australia in the semi-final tomorrow at Antigua. As the number of COVID-19 cases are rising fast in several parts of the country, we appeal to our listeners to be vigilant, get fully vaccinated, and help others, including children between 15 and 18 years, to get vaccinated. As the new Omicron variant of coronavirus is causing concern, please continue to follow these 3 simple steps to stay safe. Wear a face mask, maintain 2 gaz ki duri for social distancing, and focus on hand and face hygiene. For any COVID-related information and guidance, contact the national helpline numbers 011-2397-8046 and 1075. And now, the news in detail. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, the highest among all large economies. Presenting India's budget 2022-23 in the Parliament on Tuesday, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, overall sharp rebound and recovery of the economy from the adverse effects of the pandemic is reflective of the country's strong resilience. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. The finance minister said the nation is marking the Azadi Ka Amrit Mahotsav and has entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. She said the government aims to attain the vision of the Prime Minister, which was outlined in his Independence Day address. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. The finance minister said Budget 2022-23 reflects the firm commitment of the government to boost economic growth by investing in infrastructure development. This is substantiated by an increase in the capital expenditure by 35.4%, that is over 1,96,000 crore rupees over the budgetary estimate of 2021-22. The finance minister said the PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. She said 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. In the railway sector, the minister said the one station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. To give boost to digital banking by post offices, 100% of post offices are to be brought under the core banking system. E-passports using embedded chip and futuristic technology will be issued in 2022-23 to enhance convenience for citizens for overseas travel. E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel.
One Nation, One Registration software will be promoted under NGDRS. It will be a uniform process for registration and anywhere registration of deeds and documents. The auction of required spectrum for the rollout of 5G mobile services will start in 2022. The digital rupee will be introduced using blockchain and other technologies. It will be issued by the Reserve Bank starting 2022-23. India allocates 200 crore rupees as humanitarian aid for Afghanistan in the union budget announced on Tuesday. Afghanistan's ambassador to India in a tweet thanked the government of India for its commitment to the Afghan people. India also committed 100 crore rupees for the Chabahar port in the spirit of its neighbourhood first policy. Prime Minister Narendra Modi has said that this budget will strengthen the economy and create new opportunities for the common man. Speaking on the budget, Mr. Modi said this will give a financial boost and benefit the common man with more investment, infrastructure, and employment and development opportunities. He said this budget is full of new possibilities for infrastructure, investment and growth, and jobs. ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। The Prime Minister said this budget will also open up the field of green jobs. He said for the first time in the country, the Parvatmala scheme is being started for areas such as Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and the Northeast. This scheme will create a modern system of transportation on the mountains. Union Minister Nitin Gadkari said the union budget focuses on growth of infrastructure which will lead to career opportunities for the youth. Industry leaders have also welcomed the budget. President of FICCI, Sanjeev Mehta, has termed the budget as growth-oriented. Talking to reporters, he complimented Finance Minister Nirmala Sitharaman for bringing out a bold budget. We are, as a business, very pleased with that there has been broad consistency in the policy, in the tax rates. We are also pleased with the boldness of the budget, that we are all conscious that it will take some time for private consumption expenditure and the private capital expenditure to pick up. So still there is a very clear glide path of fiscal deficit, which is absolutely the right thing. From 6.9% this year, it is looking like 6.4%. That's what the Honorable Finance Minister is targeting. Now, the good bit has been the boldness with which the budget outlay on capital expenditure has been. Increasing by 35% is absolutely the right thing to be done. And that clearly indicates that this is a growth-oriented budget. ASSOCHAM has welcomed the Finance Minister's announcement to focus on green energy and reducing logistic costs in the union budget. Confederation of Indian Industry President Designate Sanjeev Bajaj called the union budget growth-oriented and said it focuses in the right direction. In today's Hotspot section, we bring you a special discussion program on India's union budget. The participants are Mr. Bibek Debroy, Chairman of the Prime Minister's Economic Advisory Council, and journalists V. Ravi Kumar and Anubha Rohatgi. The discussion begins with the opening remarks by Mr. Debroy. I think the budget should be seen more in terms of the vision it sets out. Just as last year's budget set out a vision, this year's budget also sets out a vision for India to accomplish when India celebrates its 100th Independence Day. It's a template for the next 25 years. One should not look at the budget from the point of view of what it does for me in terms of reducing my slabs or reducing my tax rate, because there must be stability and certainty in tax policy. And I think what this budget does is it talks about inclusive welfare, which is empowering people, and it sets out an environment for growth, which means automatically when that growth happens, there will be jobs, there will be employment. Dr. Debroy, you've been advocating simplification of tax codes and tax rules in your recent pronouncements. Has this budget gone further in that direction? No, look, there are the rates and there is the processes.
Now, so far as indirect taxes is concerned, that's under the purview of the GST Council. So you're talking about direct taxes. Substantive reform of direct taxes. Also, in passing, I should mention that the taxation of agricultural income in any case under the Constitution is under the province of the states. So far as the rest of it is concerned, the big question here in terms of simplifying is removal of exemptions. And I need to quickly point out that quite often the discussion is only in terms of corporate tax rates. But the entire unincorporated segment of enterprise actually pays personal income taxes. So whether it is on personal income taxes or corporate taxes, what is needed is elimination of exemptions. Should we have it? Yes, we should have it. Was this budget the time to do it? Probably not. And the reason I'm saying this is if you removed all exemptions, some segments would probably, not across the board, but some segments would probably see an increase in effective tax rates. Given that the growth recovery is still not very robust, I think expecting it in this budget was unrealistic. But yes, as a goal, it should happen. I'm certain it will happen. So you're sure directionally we will move towards removal of exemption even in the individual sectors? So. What has happened is for some categories there is already an option. Correct. But the option for opting for that route of removal of exemptions has not been very attractive. So I'm sure that once the growth recovery is a bit more certain, by the time we come to the next budget, we will be in a position to talk about the proper direct tax code. We see there's a thread of digitalization running through the entire budget, even agriculture. How do you see this digitalization? This will naturally lead to a virtuous growth cycle? Yes, well, if I look at this budget in the terms of that broad vision, it is of course about capital investments, is about infrastructure, but it is essentially about connectivity. Connectivity of the physical kind as well as connectivity of the digital kind. And we have seen the gains. One only has to look at the dashboards. We have seen the kind of gains that digital connectivity has brought even to the poorer of sections of society. And I should mention, because this is sometimes not always known, that even when he was the Chief Minister of Gujarat, the present Prime Minister advocated the use of digitization and information technology. And yes, you're absolutely right that this budget does have an emphasis on use of the digital, because the digital is a great enabler. It removes the asymmetry of information, however you define it, between the relatively disadvantaged and the more advantaged. And there are any number of sectors where the use of this technology can be a great enabler to ensure empowerment for citizens, to ensure ease of living and ease of doing business also. Dr. Devroy, what in your opinion are the further things that could be done on the demand side? I would say that when people say demand, they have not changed their expectations. Their expectations are still based on the past. And what do I mean by that? They felt that, the budget should reduce the excise rate. And indirect taxes, by the way, are part of GST. The budget should increase the standard deduction, should reduce my rate. This is what people mean by demand. There are two problems with that. One is, if I have a concession for one sector, that is ad hoc, discretionary, and I'm distorting decisions. The more important point is, the multiplier benefits are far more from increasing public expenditure than from reducing taxes. So I think the best answer in terms of increasing demand is to ensure that the growth recovers. So, Mr. Devroy, Gati Shakti, expressways, ropeways, cargo terminals. So, you feel that is also another way of building long-term sustainable development along with the multiplier effect? Absolutely. And the point is, I do not know what the expression middle class means, but if they expect tax concessions, there are people who are paying taxes. Anything that I give to the so-called middle class is money that I cannot spend on Gati Shakti projects. Right. So, if there is a trade-off, and I don't think there should be trade-off because the so-called middle class will also gain from the growth. But if there is a trade-off, my trade-off would be to ensure the Gati Shakti projects, the transport connectivity for every citizen, not just people who pay taxes. Digital currency has now become a reality. How do you see this development, digital rupee? I think this is very important in terms of enabling transactions. But I think the broader debate
is, although the budget has not used that word, rightly so, the broader debate is about this so-called cryptocurrency. Cryptocurrency is not a currency at all. It is a financial asset. The trouble is, it cannot happen unregulated, because what one means by a crypto asset is also unclear. So I think what has been suggested in the form of a digital currency, spliced with the taxing of digital assets, is a very desirable move, moving towards some kind of regulation, not ban. Some countries have actually banned crypto, but not a ban, but some kind of regulation of this segment, which is a thriving segment. And I think eventually we will see that regulation manifesting itself, not necessarily, of course, through the budget. Dr. Debroy, one more thought about the disinvestment. The number that was initially planned, the number we have come up with is much lower than that. How do you see that privatization stroke disinvestment moving forward? I will not quibble about the difference between privatization and disinvestment. Privatization technically means when I'm handing over the entire entity, all of the equity, not just dilution of equity. Air India is an example of that. Correct. There is, of course, the national pipeline. If I look at the figure of 65,000 crores, which is the target, I don't think that is excessively high. In fact, all the budget numbers are fairly cautious. Even that nominal rate of growth of 11.1%, I personally think will get more than that. But the budget has been conservative, and the 65,000 disinvestment figure, I think, is eminently achievable. Dr. Debroy, the economic survey talked about the importance of safety net of welfare measures for the poor and the marginalized. Where does the budget stand on that? No, the budget also mentions it. The finance minister mentioned it. And this is primarily in the form of ensuring physical infrastructure, financial inclusion, social infrastructure. I would quickly mention something else that the budget mentions, and it's extremely important, which is the land records part of it. Because many of the problems, and land is fundamentally a state subject, many of the problems are associated with the unsatisfactory state of land records. So this is how I would implement this welfareism, which is empowering citizens so that they do not any longer need doles. And another issue of involving states in the process of development. 1 lakh crore rupees have been kept for FY23 for Gati Shakti program, and 10,000 crore grant which was given to states in the form of investment assistance, that has been increased to 15,000 crore. So you feel that states coming on board is a very important aspect of Gati Shakti's implementation? Yes, of course. Look, all growth essentially has to be driven by states. Land is completely a state subject. Labor is on the concurrent list, but much of the implementation of labor laws is a state subject. So in terms of what economists call the factor markets, most of it is in the province of the states. We already have a phenomenal decision-making process that involves the union government and the state governments, which the finance minister already mentioned in the context of the GST Council. I think by the same token, we need stronger coordination between the union government and the states. Dr. Debroy, this is a great budget that seeks to build an open, digital and inclusive India with a Amrit Kaal, a 25-year vision. And thank you so much for joining us. Thank you. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on Twitter at AIR News Alerts. India has said that it is closely following the evolving developments relating to Ukraine, including through ongoing high-level security talks between Russia and the United States, as well as under the Normandy format in Paris. In a statement at the United Nations Security Council, India's ambassador to UN, T.S. Tirumurti, said New Delhi's interest is in finding a solution that can provide for immediate de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. He said they have also been in touch with all concerned parties. It is their considered view that the issue can only be resolved through diplomatic dialogue. Earlier, India abstained from a procedural vote in United Nations Security Council on whether or not discussions were required on the threat of a Russian invasion of Ukraine. 10 member states, namely the US, UK, France, UAE, Ghana, Albania, Norway, Brazil, Mexico and Ireland, voted in favor of taking up the Ukraine issue. On the other hand, only 2 member states, Russia and China,
voted against it. 3 member states, India, Gabon, and Kenya, abstained from the vote. Ukrainian President Volodymyr Zelensky signed a decree on Tuesday to boost the country's armed forces by 100,000 troops over 3 years and raise soldiers' pay. He urged lawmakers to stay calm and avoid panic, saying he ordered the increase not because they will soon have a war, but so that soon and in the future there will be peace in Ukraine. Russia has massed more than 100,000 troops near Ukraine's borders while denying plans to invade, an action that the United States and its allies have warned would trigger tough sanctions. The U.S. State Department has ordered families of its government employees in Belarus to leave the country amid fears of a possible Russian invasion of neighboring Ukraine. It also warned U.S. citizens not to travel to Belarus. In a travel advisory, the State Department said, due to an increase in unusual and concerning Russian military activity near the border with Ukraine, U.S. citizens located in or considering travel to Belarus should be aware that the situation is unpredictable and there is heightened tension in the region. The order came hours after Washington and Moscow clashed at the United Nations Security Council over Ukraine. According to the United States, about 5,000 Russian troops are already in Belarus. Prime Minister Narendra Modi had a telephonic conversation with Crown Prince and Prime Minister of Bahrain, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, on Tuesday. Prince Salman conveyed greetings on the occasion of the Republic Day of India. Both leaders reviewed the bilateral relations and expressed satisfaction that the relationship has seen continued progress in diverse sectors including political, trade and investment, energy, health, security, and people-to-people connects. India and Bahrain are celebrating the Golden Jubilee of establishment of diplomatic relations between the two countries in 2021-22. Secretary General at the Ministry of Defence in Oman, Dr. Mohammed bin Nasser bin Ali Al Zabi, called on Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi on Tuesday. They discussed ways to enhance defence cooperation between the two countries. He also briefed Mr. Singh about the 11th India-Oman Joint Military Cooperation Committee meeting, JMCC, on bilateral defence cooperation, which was held in New Delhi. The JMCC meeting was co-chaired by the Defence Secretary, Dr. Ajay Kumar, and the Visiting Secretary during the meeting. The two sides reviewed the progress made in military-to-military engagements, including joint exercises, industry cooperation, and various ongoing infrastructure projects. The Secretary General also called on the 3 service chiefs and met with the CEOs of Indian defence industries. India and Nepal on Tuesday signed a Memorandum of Understanding MOU for the construction of a motorable bridge over the Mahakali River connecting Dharchula in India with Dharchula in Nepal under India's grant assistance. The Indian Embassy in Kathmandu said in a press release that the MOU was signed by Ambassador of India Vinay Mohan Quatra and Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Government of Nepal, Rabindranath Shresht, in presence of Minister of Physical Infrastructure and Transport, Government of Nepal, Renu Kumari Yadav. The release added that the project will enhance cross-border connectivity between the Sudur Paschim province of Nepal and the Uttarakhand state of India across the Mahakali River, where close people-to-people links exist between communities on both sides of the border. The construction of the bridge is planned to commence soon. The export-import activity between Bangladesh and India through the Benapole-Petropole trading point remained suspended as talks between the truckers, labour unions and authorities on the Indian side of the Petropole ended inconclusively on Monday. The local Transport Association, Drivers Union, labour unions at the ICP have gone on an indefinite period strike since Monday, alleging harassment at the border post in checking drivers' licence, vehicle and other documents. The meeting was held on Monday between the representatives of the Transport Association and other concerned with the BSF commandant at the Petropole ICP. India and the European Union held their second maritime security dialogue in a virtual format. The meeting was co-chaired on Tuesday by the Joint Secretary for Disarmament and International Security Affairs at the Ministry of External Affairs and the Director for Security and Defence Policy at the European External Action Service.
Four-time champions India will take on Australia in the semi-final of the ICC Under-19 World Cup 2022 at the Coolidge Cricket Ground in Antigua on Wednesday at 6:30 p.m. Indian time. India's campaign has been hit with COVID-19 after Indian captain Yash Dhul and 5 others tested positive following the first match. Dhul and 4 others returned to action for the quarter-final against Bangladesh, but Nishant Sindhu, who was the stand-in skipper in Dhul's absence, tested positive and missed the quarter-final. United Kingdom marked the first anniversary of the military coup in Myanmar on Tuesday by joining the US and Canada in imposing new sanctions against 3 government officials that they said have been instrumental in suppressing democracy and stifling opposition voices. The new sanctions will be brought against Attorney General Thida Wu, the chair of the Union Election Commission, and the head of the Anti-Corruption Commission, Sputnik Agency reported, citing the UK Foreign Office statement. Before we end the news, a quick look at the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents India's budget for 2022-23, projects a growth of 9.2% for the coming year. India allocates 200 crore rupees as humanitarian aid for Afghanistan. New Delhi to roll out e-passports using embedded chip and futuristic technology. Prime Minister Narendra Modi says, with more investment, infrastructure, and employment and development opportunities, the budget will give a financial boost and benefit the common man. New Delhi says Ukraine issue can only be resolved through diplomatic dialogue at the UN Security Council. India and Nepal sign MOU to construct motorable bridge over Mahakali River connecting Dharchula on both sides. India and EU commit for free, open, inclusive and rules-based maritime order in the Indo-Pacific region. United Kingdom marks the first anniversary of the military coup in Myanmar by imposing new sanctions against 3 officials. And in Under-19 Cricket World Cup, India to take on Australia in the semi-final tomorrow at Antigua. And now, before we end, let's listen to Mahatma Gandhi's favorite bhajan, Vaishnav Jan, by artists from Myanmar. Vaishnav Jan to teni kahiye je peer parahi jani re par tu ke upakar kari thore man abhiman ani re Vaishnav Jan to teni kahiye je peer parahi jani re sakela lokma sohne ban. And with that, we end this bulletin. We'll be back at the same time tomorrow with the next edition of World News. ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र से समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें प्रधानमंत्री ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत एट 75 से भारत एट 100 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे हासिल करने के लिए रोजगार सृजन, पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। बजट में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है।
The outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure with this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. अवसंरचना विकास के लिए पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। National Master Plan, the scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़क जोड़ी जाएगी। 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रारंभ करने के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। इन सबके वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट में 14 विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव किया गया है। आपातकालीन सुविधा ऋण गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत लघु, मझोले और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 2 लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। सहकारी संस्थाओं के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। खेती की हालत सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, सौर पंप और कृषि ऋण का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद सुनिश्चित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 2,37,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे भेजे जाएंगे। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। मौजूदा समय डिजिटल परिसंपत्तियों के लेन देन पर सरकार ने 30% का कर लगाने का प्रस्ताव किया है। बजट में वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने, 5G नेटवर्क के लिए इस वर्ष निविदा जारी करने तथा अगले साल ई-पासपोर्ट जारी करने का भी प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए इस बार आम बजट में पूंजीगत व्यय का दायरा बढ़ाया गया है। आज संसद में बजट पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय या सार्वजनिक निवेश के लिए बढ़े हुए परिव्यय का रोजगार सृजन पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से 14 क्षेत्रों में नई विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं जो रोजगार भी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने दुनिया भर में कई नौकरियां छीन ली। इसी दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने देश में बहुत से लोगों की नौकरियां बचाई। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नौकरी गंवाने वालों की मदद करने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आतिथ्य क्षेत्र को भी इस समय मदद की दरकार है क्योंकि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। निर्मला सीतारामन ने कहा कि एयर इंडिया में विनिवेश सरकार की मंशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO इस साल आ जाने की पूरी संभावना है। सीतारामन ने कहा कि सरकार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। आयकर के बारे में सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस साल और यहां तक कि पिछले साल भी टैक्स बढ़ाकर 1 पैसा भी कमाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि महामारी के समय लोगों पर करों का बोझ नहीं होना चाहिए, भले ही घाटा हो जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे और आम आदमी अधिक निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार और विकास के नए अवसरों से लाभान्वित होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे, निवेश तथा विकास और रोजगार की नई संभावनाओं वाला है। ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में ग्रीन जॉब के क्षेत्र के लिए भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार पर्वतमाला योजना हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना से पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बजट में पीएम गतिशक्ति योजना के लिए किए गए प्रावधान से बंदरगाहों, पानी के जहाजों और जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए भी प्रावधान किया गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह वर्तमान के बजाय भविष्य पर अधिक केंद्रित है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री चिदम्बरम ने कहा कि देश के 99.99% लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी फायदेमंद नहीं है। इसके विपरीत एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने डिजिटल मुद्रा पर सरकार के प्रस्ताव को उचित प्रस्ताव बताया। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए श्री थरूर ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि जहां तक डिजिटल मुद्रा का संबंध है, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 167 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज 50,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। निर्दिष्ट श्रेणियों के एहतियाती टीकाकरण में अब तक 1 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। मणिपुर में पहले चरण में 27 फरवरी को 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण और मणिपुर में पहले चरण के लिए 8 फरवरी तक नामांकन भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Gaurav Sharma. As the number of COVID-19 cases is rising fast in several parts of the country, we appeal to our listeners to be vigilant, get fully vaccinated, and help others, including children between 15 and 18 years, get vaccinated. With the new Omicron variant of coronavirus causing concern, please continue to follow these 3 simple steps to stay safe. Wear a face mask, maintain 2 gaz ki doori for social distancing, and focus on hand and face hygiene. For any COVID-related information and guidance, contact the national helpline numbers 011-2397-8046 and 1075. And now, the news. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, the highest among all large economies. Presenting the Union Budget 2022-23 in the Parliament today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said overall sharp rebound and recovery of the economy from the adverse effects of the pandemic is reflective of the country's strong resilience.
The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. The finance minister said the nation is marking the Azadi Ka Amrit Mahotsav and has entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead-up to India at 100. She said the government aims to attain the vision of the Prime Minister, which was outlined in his Independence Day address. The finance minister said Budget 2022-23 reflects the firm commitment of the government to boost economic growth by investing in infrastructure development. This is substantiated by an increase in the capital expenditure by 35.4%, that is over 1,96,000 crore rupees over the budgetary estimate of 2021-22. Under the budget, the total resources being transferred to the states is 16,11,781 crore rupees. PM Gati Shakti Master Plan for Expressways will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23 and rupees 20,000 crore will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. India's nominal GDP is expected to grow by 11.1% in the financial year 2022-23 over 2021-22. The minister said capacity in planning, design, financing, including innovative ways, and implementation management of the PM Gati Shakti infrastructure projects will be ramped up. National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. 1,500 crore rupees have been allotted under the PM Development Initiative for the North East Region or PM Divine program. The minister said multimodal logistic parks at 4 locations through public-private partnership PPP mode will be implemented in 2022-23. The National Digital Health Ecosystem will be rolled out and the National Tele-Mental Health Program will be launched for quality counselling. To give boost to digital banking by post offices, 100% of post offices are to be brought under the core banking system. The minister said the government is keen on promoting chemical-free natural farming, starting with farmers' lands close to the river Ganga. It also envisages to promote post-harvest value addition, consumption and branding of millet products. E-passports using embedded chip and futuristic technology will be issued in 2022-23 to enhance convenience for citizens for overseas travel. A battery swapping policy will be launched in view of the constraint of space in urban areas for setting up charging stations for electric vehicles. One Nation, One Registration software will be promoted under NGDRS. It will be a uniform process for registration and anywhere registration of deeds and documents. The auction of required spectrum for the rollout of 5G mobile services will start in 2022. The contract for laying optical fiber cable in all villages, including remote areas, under the BharatNet project will be awarded through PPP in 2022-23. In order to reduce imports and promote Atmanirbharta in equipment for the armed forces, 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 2022-23. The digital rupee will be introduced using blockchain and other technologies. It will be issued by the Reserve Bank starting 2022-23. As against a total expenditure of 34.83 lakh crore rupees projected in the budget estimates 2021-22, the revised estimate is 37.7 lakh crore rupees. The revised estimate of capital expenditure is 6.03 lakh crore rupees. In the budget estimates, total expenditure in 2022-23 is estimated at 39.45 lakh crore rupees, while the total receipts other than borrowings are estimated at 22.84 lakh crore rupees.
The revised fiscal deficit in the current year is estimated at 6.9% of the GDP. The fiscal deficit in 2022-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of fiscal consolidation announced by the government last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 2025-26. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on Twitter at AIR News Alerts. स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। Welcome back. You're listening to the news. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that capital expenditure has been increased to generate more jobs and thrust has been given on it in the union budget. Briefing the media in New Delhi after presenting the budget, Ms. Sitharaman said increased outlay for capital expenditure or public investment will have an immediate impact on job creation and production-linked incentives, as new manufacturing units are being provided in 14 sectors, which will also create jobs. She said emphasis has been given on the infrastructure sector so that more jobs are created. The minister said pandemic snatched away so many jobs across the world and the Atmanirbhar Bharat package saved the jobs of a lot of people. She said the government is trying to help those who lost their jobs through various schemes. Ms. Sitharaman said several steps have been taken to increase the income of farmers, like provision of MSP procurement, solar pumps and agri-credit. Prime Minister Narendra Modi has said that this budget will strengthen the economy and create new opportunities for the common man. Speaking on Budget 2022-23, which was presented in Parliament today, Mr. Modi said this will give a financial boost and benefit the common man with more investment, infrastructure, employment and development opportunities. He said this budget is full of new possibilities for infrastructure, investment and growth, and jobs. The opposition has criticised the budget, saying it has nothing for poor, farmers and downtrodden. Congress leader and former Finance Minister P. Chidambaram criticised the union budget, saying that it focuses more on the future rather than the present. Briefing media in New Delhi, Mr. Chidambaram said cryptocurrency is not beneficial to 99.99% of people in the country. Prime Minister Narendra Modi will talk about today's people-friendly and progressive budget at a program tomorrow at 11 a.m. In a tweet, Mr. Modi said, people from all walks of life have welcomed the Atmanirbhar Bharat ka budget. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said that Indian Railways have received an outlay of 1,37 crore rupees capital investment support. This outlay was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman while presenting the budget in the Parliament today. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर झंकार के अंतर्गत मुराद अली द्वारा सारंगी वादन।